हाँ जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। 11 में फ्री हो जाऊंगा। है हाँ। मेरी तो वही पड़ी, मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। Good morning, everyone. It's a pleasure to be connected. Welcome on board on day 4 of AICTE ATAL Faculty Development Program on life skills for blissful life, excellence in imparting skills for hospitality and tourism sector. Well, I am Professor Ashish from Center for Life Skills and Soft Skills, Swaraj Sagan Maharishi Dayanand University, Rohtak, online. And we welcome on board our expert, Mr. Deepak Behel, a seasoned and a distinguished a persona par excellence, who has been the head of human resources with the APJ Surendra Park group of hotels at the Park, Connaught Place, New Delhi. I am delighted to see you all here in this online program, and I'm sure that you would have interesting and an amazing session today. My apologies that I could not log in from my system. There are some technical issues I'm facing in my laptop today, but then I think they would be resolved and logged in with the mobile. I'm sure you'll have some interesting insights to the session in context of this workshop, and so aptly what Deepak ji, a seasoned person, would be taking you to this interesting journey. Let me tell you, friends, that he has been a very senior officer with Government of India and has a blend of government as well as corporate experience. Further,
He has served in various organizations of repute both within India and outside. Interestingly, Deepak ji has also been passionate for writing books and has many publications to his credit. Magazines, newspapers, periodicals covering different aspects and insights from Deepak ji. Well, with these few words, I welcome Mr. Deepak Behel and look forward for valuable insights from him. I'm so happy to see Adit, Alicia, Dr. Dinesh, Dr. Vijay, Dr. Swati, Himanshi, Kamrul, Lavlesh, Meenakshi Pandeji, Mr. Ratna Rajuji, Murshad Ali, Nilesh, Pooja Khurana, Professor P.K. Joshi, Purushottam ji, Ritesh ji, Dr. Savita Sharma, Shweta Lokhande, Shaila Methu, Vijay Kumar, Virendra Kumar Arya. Also, I'm sure that you would be equally excited that 5 days is a long journey and we are almost on the verge of completing it. I enjoyed these 5 days with you in a great way. Rather, I should say 5 weeks, because we have been connected off and on through emails or WhatsApp groups, anxiously and meticulously planning for these 5 days. And today, on this fourth day, we have interesting and amazing speakers who are there with us. To begin with, Mr. Deepak Behel, followed by, we'll have some insights to research today from Professor Mahinder Chand, a seasoned professor from Department of Tourism and Hotel Management, Kurukshetra University, Kurukshetra, and the person behind the only journal of hospitality and tourism from India, which is Scopus indexed, that is International Journal of Hospitality and Tourism Systems. This journey today shall be taken care by thereafter Dr. Anukriti Sharma, who works with University of Kota and is presently the head of the Department of Commerce and Management Studies. She would be giving you insights on how to go ahead with international publications. So that's a winning preposition, and we shall learn today that how we shall go ahead in making our journey of life blissful and how we go ahead in excellence in imparting skills for hospitality and tourism sector. I'm sure that whatever insights you are gaining from here, you would be passing on to your students, your scholars, and to the society in larger interest. So with these few words, welcome Mr. Deepak Behel, and we start on time. Over to you, Deepak sir. Thank you very much, Dr. Ashish Dahiya. So nice of you. Am I audible, please? Yes, sir, you are very much audible. Okay. Are you able to see the PPT? Sir, yes, the PPT is quite visible. Okay, great. So thank you very much, Dr. Dahiya. And thank you very much, the Center for and Life Skills and Soft Skills, and a very special thanks to MD University for conducting this, amazing program. And we all probably will be connected. I'm here to share my views, but I'm here to learn a lot of things. I'm not a teacher. I'm not here to teach. We are here to discuss few of the things, and we'll discuss some points, and then we'll keep on proceeding further. I'll keep on asking a lot of questions. Maybe at the end of the session also I'll ask some questions. You're most welcome to ask what exactly you want to ask. I'll be very happy to reply, and we'll proceed further. Slowly, and once things are in control, we can pick up the speed also. Okay, so let me just first, uh, just a minute. Let me just Okay, let me just upload what exactly I want to show first.
Are you able to see the PPT now? Yes, sir. It is visible now. Okay, okay. I'm just trying to see how to now show this PPT as well as on the screen. Can I show this PPT on screen? That is what exactly I'm trying to search. Sir, it is visible to us. You have to go to screen sharing option in the bottom of the system. Yeah. In the middle center, you'll find screen sharing. And once you click that, yes, and your screen is shared, sir. We are able to see the entire presentation now. Okay. So you are able to see the second slide as well? Yes, sir. Yes, sir. It is moving. We are. Okay, great, great. So Sir, thank you very much. And now we'll first proceed start further. again. Speed again. I just wanted to see how probably I can Month show of this. March is being scheduled. Okay. So proceeding further, today we'll be discussing. Just provide. Welcome everyone on the AICTE ATAL Online Faculty Development Program. This is basically we'll discuss about the life skills for very blissful life. It's a beautiful statement that why we are learning, life skills. We are not learning; we are just refreshing our memories. We are trying to see what else we can learn. As teachers, we all are students first. I'm also a teacher. I also teach, and I feel a great happiness and satisfaction when I share something with others. I also learn a lot, and that makes my life very, very blissful. So proceeding further, what exactly is the topic today is the professional ethics, work skills, and competencies for hospitality and tourism. So we'll be sharing some of the inputs, and then we'll proceed further. So let me start with the professional ethics. When we talk about professional ethics, I'm sure you must have discussed with number of people that honesty is the best policy, and we need to have the objectivity. We need to take care of the law. Obedience of the law is very important. We are accountable for our society. We are accountable for our company. We are accountable to our nation. We need to do due diligence. We need to show mutual respect. The integrity should be intact. Social, security and responsibility is always there. We need to be transparent in the things what exactly are happening around us, and in case if there is something not going in the right direction, we need to blow the whistle. We need to inform the concerned authorities so that they can take action, and they can amend the things which are not going in the right direction. But is it happening in the hospitality and tourism sector or not? That is what exactly we'll discuss today. We'll talk about the honesty factor in hospitality, because a number of times I can keep on quoting a lot of examples from hospitality industry and tourism industry, that we need to be absolutely honest. Say for an example, if you are booking the tickets for somebody, and in case if these are not refundable, we need to be honest enough at the time of booking the tickets and tell the customer that these are not refundable. So the person has to be very careful before announcing these things, because generally we have got this feeling कि अभी business तो आ ही रहा है, अभी थोड़ा चुप रह जाते हैं, अभी थोड़ी सी honesty को पीछे करते हैं, sales बढ़ाते हैं. Sometimes these feelings comes, but these are not the professional ethics in our business. It can be the similar type of things in veg and non-veg items. Sometimes somebody may pick up something which is non-vegetarian from the food menu. The person has consumed something, and then you go and claim, no, no, sir, everything was veg. Don't worry, you have not taken anything non-veg. So honesty can be on any of the levels, and we need to be very clear whether we are honest to ourselves or not. So integrity, of course, plays a very critical role. Sometimes when you're showing the integrity, you can put a lot of things in danger. It can be the brand name of the company you're representing too, but integrity is something which the customers or our I'll say the guest definitely will appreciate the integrity. And once you accept the responsibility and accountability, of course it is highly appreciated in the corporate world. Proceeding further, of course, we'll keep on discussing these things, and we'll keep on discussing some other points as well. But let us talk about the steps of professional ethics. First step is basically the introduction of morals. We need to know what exactly are the moral values we are having, and we need to know what exactly are the values of the company we are working with. We need to understand what is the morale. We need to understand the impact of
our morale on our life, and we need to know that how our morals are going to impact our profession. Moral values are very very important. In case if these values are intact, in case if these values are strong, the growth is assured. We can definitely proceed further, we can definitely grow, we can definitely learn a lot of things, but the moral values are required to be strong enough and intact enough so that we can proceed further. In step 2, we can understand about the introduction of ethics. What exactly are the ethical values? What exactly, because once you will have the moral standards with you, the moral level with you, then only you can have the ethics. You need to know what exactly are the ethics which are there in our day-to-day life in hospitality and tourism, and we need to determine what exactly are our personal ethics, which is right, which is wrong, what we should do, what we are not expected to do. Sometimes there are a lot of debates among the professionals on the ethics, whether we need to be on the ethical grounds or not, because sometimes we see some people making a lot of money in their business uh, with bit unethical ways. So this debate is always very very live, whether we should stick towards ethics or should we move towards profitability. Let me tell you, moving towards profitability, having the ethical values with us is the right path. We cannot leave ethics and earn profit. We need to have the profitability output in any of the business we are doing, but we cannot leave our ethical values. Next, we'll talk about the professional ethics. Apart from the personal ethics, there are some professional ethics that as a person, I'll do this thing, I'll accept this thing, I'll not accept this thing. And as a professional, I'll do something, I'll accept something, and I'll not accept something. This is basically the professional ethics. How does professional ethics fit in my business or in our business? That is what exactly we need to see. Today, we'll talk basically on the concept of hospitality and tourism, that whether our professional ethics are required or not. Let me tell you, all international chains, I have worked with many of the international chains in hospitality, and some good brands I have worked with, including Hilton, including Intercontinental Hotels, including the Oberoi's, and I have seen very high professional ethical standards of these companies. And sometimes I was surprised, I was amused to see the way they were behaving on their ethical standards. In many many cases, let me tell you, in most of the cases these ethical standards were very high. We took a lot of decisions, and when we were taking these decisions as managers, these ethical values were playing a very critical and very prominent role in our decision making. So we'll talk about this in some coming slides which are coming up, and we'll see that how we can stick to our ethics, and how we can talk about how we can make sure that our professional ethics are absolutely fine and absolutely intact. And we'll talk about that, and we'll share a few of the things with you all. Now, next is implementing the professional ethics as a standard. So first, we need to know what exactly are the professional code of conducts we are having in our company, or in the organization we are working with, or in the college we are teaching, or in the institute we are teaching. What exactly are the professional code of conducts? What exactly is expected from all of us? The professional code of conduct maybe can talk about the dressing sense as well. How we are dressing sometimes is not what we are liking. Sometimes we are dressing as per the requirements of the company, or as per the requirements of the institute, or our organization. And that is what exactly is our professional ethic, that we are understanding the requirements of our company, and we are behaving and we are implementing something as per the requirements. Then we'll talk about the going beyond the professional ethics, and talking about something which is not written anywhere. That is, here we talk about instilling the workplace ethics and building a strong plan when we go beyond what exactly is expected from all of us. There are few things which are expected from the organization, and there are few ethical values and morals we bring from our homes, and we implement on our own. Though nobody is watching us, nobody is asking us, nobody is checking us, nobody is ticking us, and nobody is doing any auditing. Still, there are many many values, there are many many ethical standards what we are having,
and what we need to implement. And I have seen a lot of professors. It has happened a number of times that we have visited a lot of places, and if they need to fulfill the commitment, they will fulfill the commitment. If they need to take a session, they'll take a session. And it has happened with me also. As I told you that I'm also a teacher, and I teach organizational behavior and human resources management in IMT. It has happened a number of times that when I'm going to take a session, I got a news that somebody very near and dear has passed away, but I understand that about 60-70 students are sitting and they're waiting for me, and they have traveled for about 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, and they have reached at a particular place to learn few things from me. It becomes my moral responsibility to make sure that I take the session. Sometimes, yes, the sessions can be little shorter. If I need to rush towards the cremation ground, of course we all do understand that we need to fulfill our social obligations, but my value says that, my ethics says that if there are people sitting, there are students, those who are looking for something from me, I need to fulfill my responsibility. I need to share my knowledge and my thoughts, which are very important, so that I am doing justice with the job I am doing. It has happened a number of times that these type of incidents take place, and sometimes we are expected maybe at some other place in place of the commitment we have done. So it is easy for us to pick and choose our ethical standards, and we need to be very firm. We need to be doing what exactly is expected from us, because I believe in the theory of karma, and I am very very sure that you all must be believing in the theory of karma. That is that was the message, that is the message which is given by Lord Krishna in Gita, and he has explained that we are bound with our karmas. We need to do our karma, and this is our karma, and that is what exactly we are doing. So karma theory is also directly linked with our professional ethics, our ethics, and what exactly we are supposed to do. So we'll talk about that. And we'll discuss. So before proceeding further, let me share a very interesting story with you all. When we talk about ethics, and we talk about morals, and we talk about professional ethics, generally a feeling comes that when I am up to this particular level, what is exactly my value? Uh, there are there may be two types of values you may be having: the value of yourself in your eyes, and the value of yourself in the eyes of others. I don't know what exactly is your value in the eyes of others, but it is very important that you need to know your real value in your own eyes. If you see yourself as an ethical person, if you see yourself um, as a person who's having a very strong integrity, then uh, nothing can dodge you. If your principles are intact, if your principles are strong, if your moral values are high, if your honesty is supreme, and if you do the things which are considered to be right as far as ethical values are concerned, nobody can shake you. You need to be having the fairness in your deeds, and you need to be responsible enough in imparting something which is absolutely an ethical knowledge. Because I have seen I have observed rather some of the professors taking some sessions on business development or sales and marketing, and sometimes saying that सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा बहुत झूठ बोलना चलता है और थोड़ा सा गोली देते हैं हम सेल्स बढ़ाने के लिए, तो इट इज फाइन. नो, इट इज नॉट फाइन. We cannot leave our ethical values, and we cannot make sales, and we cannot make short term profits by losing long term focus. So ethical values are very very important, and we need to respect and honor these ethics. It is our choice whether we want to pick up our ethics, or it is our conscience which is allowing us to pick up our ethics. Or the second option can be that in place of talking about the ethics, we can just talk about profit and loss. And as I told you, that profit and loss and ethics are not in two opposite directions. They can be in the same direction. You can have the profits with the ethical behavior, what you are doing, and you can keep on proceeding further with your ethical standards, and you can keep on making the profits with that. So we deviated from where we started. We started that we wanted to know about ourselves, what exactly is your value. So
Let me share a story. Can I share a story with you all? Yeah, we Okay. would love to. Okay, I think some voice got disconnected. Are you able to listen to me? Sir, we are able Yes, to sir. listen to you. Okay, great. So I'll share a very interesting story. This is a story of a son and a father. एक बेटे ने अपने फादर से जाके पूछा कि पापा, what is my value? मेरी वैल्यू क्या है? What is my value in your eyes? It's a beautiful question. In place of answering the direct question, the father gave him a rock. एक बड़ा सा पत्थर दिया और अपने बेटे को बोला कि जाओ पहले इसको जाके मार्केट में बेच के आओ, फिर उसके बाद I'll answer your query. The son was very very confused because उसने स्टोन देखा, एक रॉक है, छोटा सा एक पत्थर है, इस पत्थर को कोई क्यों खरीदेगा? इज इट सेलेबल? आई डोंट थिंक इट इज सेलेबल इन द मार्केट. ऐसे पत्थर तो लोग कहीं से मिल जाएंगे, किसी को कोई जाएगा नदी वदी के किनारे घूमने, शायद वहां से ऐसा पत्थर मिल जाएगा. The stone was beautiful. The small rock was very beautiful. It was transparent. It was having some natural color also. But बच्चे को लगा कि ये बिकने लायक नहीं है. ठीक है, अच्छा है, सुंदर है. It's good to see this small rock, but it is not sellable. That was the feeling and the thinking of the son. लेकिन उसके फादर ने बोला नहीं, मार्केट जाओ और इसको बेच के आओ और देखो ये बिकता है कि नहीं. और फादर ने एक और हिदायत दी. उसने बोला कि जब तुम मार्केट में जाओगे और इसको बेचने की कोशिश करोगे, कोई भी जब इसका प्राइस पूछेगा तो उसका प्राइस बताने की बजाय बस 2 उंगलियां उनको ऐसे दिखा देना. यू जस्ट शो द 2 फिंगर्स and then see what exactly the customer is saying. सो बच्चा बड़े अनमाने से मन से बाजार में गया, एक मार्केट में गया और वहां जाके उसने बोला कि दिस स्टोन इज सेलेबल, कोई खरीदने वाला है, कोई इसको खरीदेगा, मैं इस स्टोन को बेचने को रेडी हूँ, एनीबडी विलिंग टू बाय दिस स्टोन. बच्चे ने उस स्टोन को बेचने की कोशिश की. तो थोड़ी देर में एक लेडी आई, उसने बोला ओ वाओ ब्यूटीफुल रॉक, मैं इसको अपने गार्डन में लगाना चाहूंगी, कितने की है ये? तो बच्चे ने बजाय कोई आंसर देने के जस्ट 2 फिंगर्स दिखाई. लेडी ने बोला ओ $2, बहुत सस्ती है, ठीक है, आई एम रेडी टू बाय, गिव मी दिस. लेकिन फादर ने ये बोला था कि इसको बेचने की कोशिश करो. फादर ने शायद ये नहीं बोला था कि इसको बेचो. और जो ही बच्चे को पता चला कि जिस रॉक की वैल्यू को वो 0 समझ रहा था, उस रॉक की वैल्यू मार्केट में $2 है, तो वो दौड़ा दौड़ा वापस आया और उसने फादर को बताया कि दिस रॉक इज सेलेबल इन द मार्केट एंड इट विल फेच अस $2. फादर ने बोला नहीं, अभी एक काम करो, अभी एक जोहरी के पास जाओ और उसको ये अभी एक म्यूजियम में जाओ और उनको जाके ये रॉक दिखाओ और फिर देखो कि वो क्या बोलते हैं. और फिर अगर वो आपसे प्रश्न पूछें, इसकी कीमत पूछें, डोंट गिव एनी आंसर, जस्ट शो 2 फिंगर्स. सो बच्चा एक म्यूजियम में गया और म्यूजियम में जाके उसने बोला कि मेरे पास ये रॉक है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ. म्यूजियम वाले जो लोग थे उन्होंने ध्यान से देखा, बहुत ही एंटीक रॉक थी, बहुत ही पुरानी रॉक थी, बहुत ही अच्छी रॉक थी और उसकी काफी ज्यादा वैल्यू थी. तो उन्होंने बोला वेरी इंटरेस्टिंग, हम इसे खरीद सकते हैं, रख सकते हैं अपने म्यूजियम में. कितनी कीमत है इसकी? बच्चे ने फिर ऐसे इशारा किया और उन्होंने बोला ओ $2 लाख, वी आर रेडी टू गिव $2 लाख. तो वो बड़ा हैरान हुआ कि $2 लाख बहुत, सॉरी $20,000 बहुत ज्यादा है. $20,000. वो बड़ा हैरान था कि कहाँ इसको कोई $2 में खरीद रहा था, कहाँ इसको कोई $20,000 में खरीद रहा है. वो तुरंत दौड़ा दौड़ा घर आया और उसने अपने फादर को बताया कि आई वॉज वेरी वेरी सॉरी एंड आई नेवर थॉट दैट दिस रॉक इज सेलेबल, बट when I went to the market, somebody was ready to buy it in $2. But when I went to the museum, somebody is ready to buy this rock in $20,000. So I'm quite surprised कि आखिर इस रॉक में ऐसा क्या है कि कोई इसको $20,000 का खरीद रहा है. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जिसने $20,000 की खरीदने को बोला उसने आपको क्या बोला? तो बच्चे ने बताया कि उन्होंने बोला कि रॉक बहुत ही पुरानी है, बहुत ऐतिहासिक है और बहुत वैल्यूएबल है और ये नॉर्मल रॉक नहीं है. इसकी बहुत सारी खासियत हैं, इसमें से नेचुरल लाइट एमिट होती है, नेचुरल कलर है और ये बहुत ही महंगी एक रॉक है, इसलिए वो उसके $20,000 देने को तैयार है. लेकिन फादर अभी भी शायद लेसन उसको थोड़ा और सिखाना चाहते थे. अगेन द फादर सेड अगेन, नाउ दिस टाइम यू गो टू अ ज्वेलर and show him the rock, and in case if the jeweler is asking the price, just show 2 fingers. So बच्चा जो है वो एक ज्वेलर के पास गया और जाके रॉक को दिखाया. तो ज्वेलर ने सबसे पहले बोला कि ये रॉक तुम्हारे पास आई कहाँ से, किसने तुम्हारे को ये रॉक दी? तो बच्चे ने बोला मेरे फादर ने मेरे को दिया और मेरे फादर ने बोला है कि इसको बेच के आओ और मुझे कहा गया है कि मैं आपके पास आऊं और आपको दिखाऊं. ज्वेलर ने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, ध्यान से उस रॉक को देखा और उस रॉक को देखने के बाद
बोले ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हारे को $2 लाख दे सकता हूँ। $2 लाख probably was a very big amount. उसने बोला बट $2 लाख। उसने बोला जिसको तुम पत्थर कह रहे हो, जिसको तुम रॉक कह रहे हो, एक्चुअली ये बहुत ही महंगा 200-250 कैरेट का एक हीरा है, और इस हीरे की टक्कर का कोई हीरा मार्केट में है ही नहीं। मे बी इसी तरह का एक हीरा है कोहिनूर, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, और वो उसी की टक्कर का शायद ये हीरा है, और आपको मालूम भी नहीं कि कितना महंगा स्टोन है, कितना महंगा डायमंड है, और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे इतने का लूंगा, शायद इतना ही प्रॉफिट में मेरे को मिल जाएगा। बच्चा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो रॉक को पहचान नहीं पाया था। उसको मालूम नहीं था कि जो उसके हाथ में है वो एक स्मॉल रॉक नहीं है, बल्कि एक हीरा है, एक पत्थर नहीं है, एक हीरा है। और वो बच्चा वापस आया और उसने अपने फादर को बोला कि आई एम सरप्राइज टू नो दैट this is a diamond, and I was trying to sell, and people were not knowing the value of this diamond. कोई उसको, मुझे लग रहा था कि शायद नहीं बिकेगा, कोई उसको $2 में ले रहा था, कोई 20,000 में ले रहा था, लेकिन आज मुझे इसकी असली कीमत पता चली। फादर ने बोला शायद आज भी तुम्हें इसकी असली कीमत नहीं पता। प्रश्न ये नहीं है कि उसकी कीमत क्या है, प्रश्न ये है कि उसकी कीमत लगा कौन रहा है। What exactly is your value you may not be knowing, but who is making your value, and who is giving you that credit, and who is giving you that feeling that you are really priceless. That is something which is very important. ये भी important है कि आप अपने आप को कहाँ और कैसा प्रेजेंट करते हैं। आप अपने आप को जैसा प्रेजेंट करेंगे, आपकी वैल्यू वैसी लगाई जाएगी, और आप जैसा बिलीव करेंगे खुद के लिए, आपकी वैल्यू वही होगी। दिस इज द लेसन व्हाट वी गिव टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू अस एंड दे आस्क व्हाट एग्जैक्टली इज देयर वैल्यू। क्या उनको एथिकल ग्राउंड्स पे रहना है या नहीं रहना है, उनकी कुछ वैल्यू है भी इस दुनिया में या नहीं है। तो हम हमेशा बोलते हैं वो अप्रतिम है, वो इनवैल्यूएबल है, उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कोई उसको वैल्यूएट नहीं कर सकता। और इतनी ज्यादा वैल्यू जिसकी है, उसके अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स तो ऑफ कोर्स होने ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स ना हो, और आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब तक एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, जब तक आपकी वैल्यू सिस्टम नहीं है, जब तक आपका मोरल हाई नहीं है, जब तक आप अपनी प्रिंसिपल्स को स्ट्रांगली लेके नहीं चलते हैं, तब तक आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप स्वयं को कैसा देख रहे हैं और दुनिया को कैसा देख रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी गिव दिस लेसन टू ऑल आवर students, and we tell them very specifically that their value is very high. They even don't know, probably it was not even known to us when we were studying as students. We never thought what exactly is our value. हमें मालूम नहीं था कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी, कम सैलरी की मिलेगी, ज्यादा सैलरी की मिलेगी, हम नौकरी में जाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, या हम सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएंगे, या हम एचआर में जाएंगे, या हम ऑपरेशंस में जाएंगे, या हम मे बी कहाँ जाएंगे। वी वर नॉट इवन नोइंग, एंड वी वर नॉट इवन नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज आवर वैल्यू। maybe still I am exploring what exactly is my value, and I share this lesson almost with all the students, those who come in contact with us, that they need to look inside, and they need to look themselves from a very different angle. And once they go deep uh, inside, they can definitely come to know what exactly are their value, and how they need to keep their ethical values very strong. Should we proceed further? Somebody was saying something. Yes, sir, please. Okay. Next step we'll take is the skills which are required in hospitality and tourism. कौन से ऐसे skills हैं जो अभी हम, as I told you that there are many skills which are required for us to be successful in our life, but the most important skills which are required for hospitality and tourism, we'll discuss about that. एंड सेशन के लास्ट में मैं आपका भी व्यू जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि और भी कोई स्किल्स हैं जो हमने शायद आज मेंशन नहीं किए या डिस्कस नहीं किए, या इन्हीं स्किल्स में अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहें तो यू विल बी मोस्ट वेलकम, बट वी विल प्रोसीड फर्दर. First skill generally we talk is empathy and emotional intelligence, which is very important. The people, those who are coming to us, the people, those who are booking their tickets from us, the people, those who are we are dealing them, it can be inbound or outbound travel, or when they are coming into hotel. I'm talking about tourism and hospitality, both. When they come to us, we need to know what exactly is their social status, what is their background, what exactly they are looking towards. We are not going to behave in the same manner with the person who has come to us to book the tickets for a medical tourism. हो सकता है उसको अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए इंडिया में आना हो, या हो सकता है उसको यहाँ से कहीं और किसी और कंट्री में जाना हो किसी और इलाज के लिए, किसी और ट्रीटमेंट के लिए, या कोई इनबाउंड आ रहा है. बहुत सारा इनबाउंड बिजनेस हमारे पास आता है
from a lot of countries around us, and many European and other countries. A lot of people travel to our country to get themselves treated. So if we know what exactly is their condition, of course our empathy can be with them. We need to be emotionally intelligent in knowing what exactly they are looking for. अगर कोई दिल्ली में अपना इलाज कराने आ रहा है तो विल नॉट टॉक अबाउट कुतुब मीनार एंड लाल किला एंड जंतर मंतर. अगर कोई इंडिया से इलाज कराने बाहर जा रहा है तो ऑफ कोर्स विल नॉट टॉक अबाउट द गोल्ड कोस्ट एंड विल नॉट टॉक अबाउट द यूनिवर्सल स्टूडियो कि वहाँ क्या देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट द हेल्थ, विल टॉक अबाउट द इमोशंस, विल टॉक अबाउट द फैमिली. We will welcome our guests as per their emotional status at that particular time. Yes, if people are coming to travel here, we need to know what exactly they are looking towards. This is the mistake which I have done also. I used to work for an MNC, American MNC, and few Americans came to India, and probably we took them to show our malls and all, and they were smiling and they were laughing that we have seen the malls. Probably they wanted to visit something which they have not seen. And it can be a flea market, or it can be probably a historical place, or it can be a place of worship. It can be something which is very different. Maybe probably they must have seen churches and all. They wanted to see some temples, they wanted to see a gurdwara, they wanted to go in the flea market, maybe like Janpath, or they wanted to see some traditional places, some places where they can buy something which is handmade. So they wanted to be close to the artists or artisans. That is what exactly their thinking was. So we need to be having the empathy towards their emotional stature at that particular time, and we need to be emotionally intelligent in knowing when they are either coming to our country, or when we are booking them to travel into any other country, what exactly is the reason and why they are doing that booking. It's always a teamwork. कभी ऐसा हुआ नहीं है, होता नहीं है. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है that you have boarded a plane और अचानक announcement हुई हो today this flight will not take place because the pilot has taken a CL? या कभी ऐसा हुआ हो कि आप ट्रेन में जाके बैठ गए हो, बोर्ड हो गए हो, और थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुई हो कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू अनाउंस यू that the driver of the train is facing some stomach problem, and that's why today the train will not go. Maybe देखते हैं उनका पेट ठीक हो जाएगा तो हम ट्रेन को कल लेके चल पड़ेंगे. Beautiful example, sir. Lovely. थैंक यू सर. कभी ऐसा होता नहीं है. इट्स टीम वर्क. अगर मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और. इट्स अ टीम वर्क. The show must go on. In hospitality and tourism, we always say that show must go on. आज एक शेफ छुट्टी पे है तो कोई और बनाएगा खाना, वो छुट्टी पे है तो कोई और बनाएगा. चेक इन अगर एक इंसान नहीं ले सकता तो दूसरा एम्प्लॉय लेगा, दूसरा नहीं ले सकता तो तीसरा लेगा. टिकट्स बुक करनी है, अगर एक एग्जीक्यूटिव नहीं है तो दूसरा करेगा. बट वी ऑलवेज से दैट द शो मस्ट गो ऑन. हमेशा हमारा काम चलना चाहिए. टीम वर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक अगर व्यक्ति नहीं है तो इमीडिएटली दूसरा बंदा आके उसको रिप्लेस करेगा और उस काम को करेगा. थर्ड इज द स्ट्रेस एंड द टाइम मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट की पहले हम बात करते हैं, फिर हम टाइम मैनेजमेंट पे जाएंगे. There were a lot of workshops which were taking place, and people were teaching others how to control stress, how to avoid stress. Let me tell you, avoiding stress can be just 5% possible. 95% तो you cannot avoid it, because stress is like a wind. एक हवा की तरह है. It can come from any sides. It can come from up, down, left, right. किसी छोटी चीज से बड़ी चीज से स्ट्रेस हो सकता है. स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सोचिए आज अगर एसएमएस आए डॉक्टर आशीष दहिया को, कौन बनेगा करोड़पति से कि जी आशीष जी आप अमिताभ जी के सामने बैठेंगे और आपसे प्रश्न किए जाएंगे और आप उसके उत्तर करेंगे, तो क्या स्ट्रेस आएगा आशीष जी को? यही आएगा कि क्या क्वेश्चंस होंगे, कैसे आंसर्स होंगे, कैसे थोड़ी सी तैयारी की जाए. यही अगर कोई क्वेश्चन, यही अगर एसएमएस किसी मैडम के पास जाएगा तो उनको टेंशन आंसर्स की नहीं होगी, पहले होगी कि मेरे को पहनना क्या है. पहले तो एक अच्छी सी ड्रेस निकाली जाए, एक अच्छी साड़ी निकाली जाए, बिकॉज आई नीड टू बी लुकिंग वेरी गुड, एंड देन ऑफ कोर्स आंसर भी करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. Sometimes we are sitting and we get some SMS of any bad news, and we are stressed. So stress can be positive or negative. We cannot every time avoid it. So we need to learn how to manage it. And that's why in place of avoiding the stress, we always talk about stress management. That is what we teach, and that is what we train to all the students. And we tell them
that if it is not possible for you to avoid it, कभी कभी स्ट्रेस अवॉइड भी हो सकता है, आप ऐसे काम करें नहीं जिससे स्ट्रेस आए, ऐसा काम करना ही क्यों है जिससे स्ट्रेस आए, हाँ ऐसे झूठ बोलने क्यों है जिससे स्ट्रेस आए, ऐसे ऐसे एक्शंस लेने क्यों हैं जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट करें, उसको अवॉइड करना है. बट इन केस अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, वी नीड टू लर्न how to manage the stress. That is basically the stress management. Next is that we have got lesser time and we need to do lot of things, and there are different priorities and there are different things, so we need to do the time management. Without time management in hospitality we cannot manage the things. और आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी आपको बोलते होंगे, आपने भी सुना होगा, एक बड़ा अजीब सा वर्ड है जो मैंने कभी हॉस्पिटैलिटी में आने से पहले सुना नहीं था, वो था बसड़. आप किसी से भी पूछिए, ऑपरेशनल जो लोग हैं, ऑपरेशंस में, वो कहेंगे बहुत बसड़ है, बहुत बसड़ है, हम बहुत फंसे हुए हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, गेस्ट खड़े हैं, इनको खाना देना है, इनका चेक इन लेना है, इनका ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने हैं, इनको कॉन्सर्ट सर्विसेज देनी है, ऐसा करना है. सो बहुत ज्यादा आपाधापी में सब रहते हैं, and it is important for all of us to make sure that time management is given due respect, and we all understand the value of time and we are doing everything which is timely. क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट को लेके नहीं चलेंगे तो हॉस्पिटैलिटी में मैनेज करना, टूरिज्म में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी प्रैक्टिस एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी टीच अदर्स, वी प्रीच अदर्स. और मैं अक्सर कहता हूँ कि फर्स्ट यू प्रैक्टिस देन यू प्रीच. पहले आपको खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर आपको प्रीच करना चाहिए, फिर आपको लेसन देना चाहिए. फर्स्ट यू प्रैक्टिस देन यू प्रीच के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी याद आई. शुड आई शेयर अ स्टोरी? हमारे पास टाइम अभी काफी है. Would love to listen that, sir. ओके. आशीष जी, क्या हुआ कि एक माँ अपने बच्चे को लेके एक साधु महात्मा के पास गई और उनसे जाके शिकायत की कि महात्मा जी आप इसको समझाइए, ये बहुत मीठा खाता है और मेरी बात बिल्कुल मानता नहीं है, आप प्लीज इसको समझाइए. तो साधु महात्मा कुछ सोचने लगे और बोला कि अच्छा बेटा, इसको ना अगले हफ्ते लेके आना. वो मदर उस बच्चे को लेके चली गई. अगले हफ्ते उसने फिर मेट्रो की, गाड़ी की, पता नहीं ऑटो किया, धूप में परेशान होती हुई, पसीने बहाती हुई, फिर महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी से आगे बोली, महात्मा जी इसको समझाइए, बहुत मीठा खाता है, आपको याद होगा मैं पिछले हफ्ते आई थी. महात्मा जी ने बोला हाँ हाँ याद आया याद आया. तो उन्होंने बच्चे को बोला, बच्चे अति सर्वर्थ वर्जेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर आप बहुत मीठा खाओगे तो आपकी बॉडी पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके दांतों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, मीठा आपकी बॉडी को खराब करेगा. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हर चीज जो है लिमिट में होनी चाहिए. आप मीठा खाइए कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट में खाइए. अनलिमिटेड खाने से आप बीमार हो जाओगे. बच्चे ने कहा अच्छा जी समझ गया. माँ ने साधु महात्मा की ओर देखा कि जी 5 मिनट का छोटा सा ज्ञान देना था, बच्चे ने आपकी बात माननी थी, आपने पिछले हफ्ते ही क्यों नहीं दे दिया? आपने मेरे को एक हफ्ते बाद बुलाया, मैंने आज भी किराया खर्च कर रहा, मैं आज भी परेशान होके आई, आज भी धूप में आई, आज भी मैं ऑटो के और मेट्रो के पैसे दे के आई, तो आपने ये बात पिछले हफ्ते क्यों नहीं कह दी? तो महात्मा जी ने उस लेडी को बोला कि बहना, मैं इसलिए ये पिछले हफ्ते नहीं कह पाया कि मैं भी मीठे का बहुत शौकीन था, मैं भी बहुत मीठा खाता था, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि फर्स्ट यू प्रैक्टिस देन यू प्रीच. जब मैं खुद पे इंप्लीमेंट करूंगा तभी किसी को भाषण दे पाऊंगा, तो जब तक मैं खुद पे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा मैं किसी और को भाषण कैसे दे सकता था? इसलिए पहले इस हफ्ते मैंने खुद पे कंट्रोल किया, और जब मैंने खुद पे कंट्रोल किया तभी एक हफ्ते बाद मैं उस बच्चे को बोल पाया कि फर्स्ट यू प्रैक्टिस देन, तभी उस बच्चे को बोल पाया कि मीठा कम खाना चाहिए. And this is one of the examples of first you practice then you preach, and this is what exactly is very crucial for all of us. We all are teachers, we all are professors, and we all need to understand that we need to implement a lot of values. We need to imbibe them first, and then only we can preach, and then only we can teach these values to others. और जब आप खुद उस values को लेके चलेंगे, let me tell you, आपके students पे उन चीजों का जबरदस्त असर पड़ेगा. आप ये मान के चलिए कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको अंदर तक देख पाते हैं और ये देख पाते हैं कि आपका सिस्टम्स, आपकी वैल्यूज, आपकी एथिक्स क्या है. और अगर आपके एथिक्स स्ट्रांग हैं, अगर आपकी मोरल वैल्यूज हाई हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली सीखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे. Next is that there are many problems which come in tourism and hospitality sector. Problems हैं तो हम हैं, अगर problems नहीं होती तो शायद हमारी जरूरत ही नहीं होती. So we always say that problems are always welcome because we are there to solve the problems, and that is what exactly is our way of life. Problem solving should become a way of life and not a part-time activity for all of us. This is a skill which we all need to have, and we need to keep on solving the problems, and we need to keep on proceeding further. अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है? बहुत सारी चीजें आती हैं डिसीजन मेकिंग में. बहुत सारे लोग फ्लिप ऑफ कॉइन डिसीजन करते हैं, हाँ या ना, सिक्का उछाल के, हेड आया तो ये करेंगे, टेल आया तो ये करेंगे.
बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो वो सिक्का नहीं उछाल पाते, तो वो रोल ऑफ डाइस करते हैं। डाइस होता है गिट्टा, लूडो जिससे खेली जाती है, वो गिट्टा फेंकते हैं, एक आया तो ये करेंगे, दो आया तो ये करेंगे, तीन आया तो ये करेंगे। कुछ लोग होते हैं बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, दे टेक देयर डिसीजन इन अ वेरी different manner, in a very specialized manner, and that is what exactly is their expert value. वो एक्सपर्ट बनने के बाद ये डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग हैं जो ये डिसीजन ग्रुप में लेते हैं, कुछ लोग ये डिसीजन इमोशनल होके लेते हैं, और कुछ लोग ये डिसीजन सिर्फ दिल से लेते हैं, कुछ ये डिसीजन सिर्फ हार्ट से लेते हैं, कुछ दिलो दिमाग से लेते हैं, दिल से भी दिमाग से भी बैलेंस करके लेते हैं। एंड the decisions which are taken from your heart and mind, both with the equal balance, are known as the ideal decisions. Ideal decisions, जो कि सबसे बढ़िया माने जाते हैं। हालांकि आइडियल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग। जब तक मैं खुद प्रैक्टिस ना कर लूं तब तक मैं आपको प्रीच नहीं कर सकता। फर्स्ट यू प्रैक्टिस देन यू प्रीच, बट आइडियल डिसीजन लेना मैं खुद भी सीख रहा हूं। आई एम ऑल्सो स्टिल trying to make my heart and my mind in a balance so that I can take the ideal decisions. However, we need to keep on guiding our students and we need to motivate them so that they can do the problem solving, they can take the critical decisions and they can proceed further, because decision making jobs में ही ज्यादा इनकम है। ये मैं आपको मजाक में कह रहा हूँ बट रियलिटी यही है। अगर डिसीजन मेकिंग जॉब नहीं है, नॉर्मल लेबोरियस वर्क है, नॉर्मल मोनोटोनस वर्क है, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती मार्केट में। मार्केट में सैलरी उन्हीं चीजों के लिए ज्यादा मिलती है जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और जहाँ डिसीजन लिया जाता है। आई एम श्योर आप सब मेरे साथ इस चीज के लिए एग्री करेंगे कि हम सबको प्रॉब्लम्स रोज सॉल्व करनी पड़ती हैं, रोज डिसीजन लेने पड़ते हैं, और यही हमें अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन। Up to the time we are having a strategy in view, we will not be able to proceed and will not be able to be successful. Like there is a strategy by the government of India, and with the help of MD University, they are doing this faculty development program. Strategy क्या है कि अपने सारे faculty members को इतना डेवलप कर दें कि वो स्टूडेंट्स को इतना डेवलप करें कि सारे के सारे ग्रोथ पाथ पे हों। और gone are the days when we used to say that we will win only when you will lose. No, it is that we all together now we can win. हम इकट्ठे भी तो जीत सकते हैं, हम टीम में भी तो जीत सकते हैं। So strategy should be winning together. Strategy should not be beating some other person and then winning. Strategy should be winning together, and we need to come up with very innovative ideas of this particular strategy. Like having this session online is a very innovative idea. मुझे कल डॉक्टर धैया से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 24 डिफरेंट स्टेट्स से प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एंड टीचर्स जो हैं वो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। तो ये तभी संभव है कि जब हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। अगर शायद ये सेशन किसी एक जगह होता, मे बी या तो एमडी यूनिवर्सिटी में होता या किसी और जगह होता, तो शायद इतनी सारी स्टेट से लोग नहीं आ पाते, इतनी दूर से नहीं आ पाते। मे बी इट्स अ वेरी इनोवेटिव वे to conduct this session, which is helping us in proceeding further. Now, after skills, we'll proceed further towards competencies. कि कौन-कौन सी competencies हैं जो hospitality and tourism sector के लिए बहुत critical हैं, बहुत important हैं। उसके बाद हम general पे भी आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बहुत specific to tourism and hospitality। कभी-कभी feeling होती है कि why we are talking about one particular sector only? Why can't we talk about the general sector? हमें अपनी भी growth देखने का दिल करता है, अपनी कंपनी के भी देखने का दिल करता है। नंबर 2, टुडे वी मे बी इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। हो सकता है हम कल किसी और सेक्टर में भी हो सकता है हमारी सर्विसेज कल किसी और सेक्टर में भी मांगी जाएं और हम वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हों। जबकि जैसा कि अभी हमने देखा है, प्रॉब्ली इन पास्ट मेनी years, especially the students, those who are doing hotel management, they have got very big area and they have got good offers from KPOs also, BPOs also, hotels also, hospitality में बहुत सारे airlines हैं, hospitals हैं, and there are many sectors where the value of hospitality graduates is quite good. टूरिज्म सेक्टर में है, टूरिज्म स्टडीज भी लोग कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी की स्टडीज भी कर रहे हैं, एंड they are being lured in other sectors as well because they gain the competencies which we are teaching in our institutes and in our colleges and schools. So सबसे पहला जो स्किल हम सबको सिखाते हैं हॉस्पिटैलिटी में, दैट इज कस्टमर सर्विस स्किल्स। हम कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो भगवान के समान है। सो अगर वो गॉड के समान है तो उसको सर्विस तो करनी हम सबको अच्छे से आनी चाहिए। वी नीड टू नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स,
expectations of the customer. और जैसे हम बोलते हैं ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान देना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आई ऑलवेज से कि इट्स अ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट. बहुत पहले जमाने में हम बोलते थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन. न्यू एज कहती है कस्टमर डिलाइट. चला गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अभी आप ऐसी सर्विसेज दें हम कि वो डिलाइटेड हो जाए. कस्टमर सर्विस वो होती है जो कि नॉर्मल हमने उनको प्रॉमिस की है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. लेकिन कस्टमर डिलाइट तब होता है जो हमने प्रॉमिस भी नहीं किया और हम देते हैं. इट कैन बी एक्सटेम्पोर सर्विसेज, इट कैन बी some amazing services, it can be the services which are not even being paid by the customer. The customer has not even paid for that, the customer has not even opted for that. Sometimes we are giving these services and beyond the call of duty we go and we offer something which is not exactly in our say written contract or in our terms and conditions कि अगर आप हमारे साथ रूम बुक कराएंगे तो हम आपको ये सर्विसेज देंगे. कभी कभी ये सर्विसेज बियॉन्ड दैट लेवल भी होती हैं, कभी कभी सर्विसेज उससे ज्यादा होती हैं. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट. सो कस्टमर सर्विस स्किल्स के अंदर कस्टमर डिलाइट की हम बात करते हैं. दैट इज व्हाट वी टीच स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट वी share with everybody. Gone are the days of customer satisfaction, we talk about customer delight. Next is interpersonal skills. Here in hospitality and tourism we deal with human beings and all human beings are dealing with human beings, so interpersonal skills are very very important. कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, कितनी रिस्पेक्ट से बात करनी है, कैसे उनको एड्रेस करना है, कैसे संबोधित करना है, क्या डिस्कशन करना है. पीपल कम फ्रॉम वेरी वेरी डिफरेंट कल्चर्स. I have worked in hotels and I have seen people, those who come from very different culture. Sometimes they behave very, very differently, and some of them were very obnoxious also. In many of the cases, we found that people they come from those particular backgrounds where they believe in taking first name. So they will take your first name and they'll talk to you. तो मैंने कभी कभी क्या देखा है कि बहुत सारे लोग, द पीपल दोज हु आर नॉट एक्सपोज टू दिस फर्स्ट नेम कल्चर, उनको बहुत शॉक लगता है. पहले दिन आके कोई उनसे उनका नाम लेके बात कर रहा है और उनसे इस तरह का डिस्कशन कर रहा है. सो दिस इज sometimes very very shocking and very very different. But interpersonal skills, if these are good, you can definitely deal and tackle with them, you can manage with them. Interpersonal skills strong होते हैं तो हम सिखा सकते हैं कि कैसे एक कस्टमर से डील करना है और कैसे टफ कस्टमर से डील करना है. हाउ टू डील विद अ वेरी टफ कस्टमर, how to deal with a very demanding customer, how to deal with a very vocal customer, how to deal with a very shy customer. There are some customers those who are very shy, they will not even expect, they will not even demand what is written in their contract. वो आपसे ये भी शर्मा शर्मी में पूछने नहीं आएंगे कि मैं ब्रेकफास्ट करने नीचे ही आना पड़ेगा या आप मेरे रूम में भिजवा सकते हैं, आई एम गेटिंग लेट, कैन यू सेंड द ब्रेकफास्ट इन माय रूम. these can be the challenges also. So interpersonal skills. Next is multitasking skills. एक काम तो हम कभी करते ही नहीं है और एक काम के लिए हम बने भी नहीं है. मल्टीटास्किंग स्किल्स. लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डरना ना हमने सीखा है, ना हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. और एक काम करना तो है ही नहीं कभी, हमेशा मल्टीटास्किंग करनी है. वी ट्राई टू डू 2 3 4 थिंग्स साइमल्टेनियसली and that is what exactly we learn, we teach and we grow with this particular thing. कभी कभी लोग होता है एक ही काम में लगे हैं, सुबह से शाम से एक ही काम में लगे हैं, so that thing may not give them job satisfaction, that cannot give them achievement, sense of achievement, that cannot give them the happiness. That's why we expect people to do multitasking so that they can grow, they can learn different things and they can grow. Next of course is the communication skills. Communication skill का मतलब अच्छी अंग्रेजी अच्छी हिंदी बोलना ही नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स in a particular manner, that you are able to transform what exactly you are thinking to the person and you are able to understand what the person is trying to communicate to you. It can mean any of the language, it can mean any regional language. Why can't this thing take place in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam? Why can't this thing take place in Odia, Bangla, Manipuri or Assamese? Why can't this thing take place in Rajasthani, Punjabi, Bengali, Gujarati, Marathi, Kashmiri? It can be any of the languages. It is not only English. जनरली हमने एक थोड़ा सा हवा बनाया हुआ है कि कम्युनिकेशन जो है उसको हम कभी कभी गलती से इंग्लिश से जोड़ देते हैं. इंग्लिश इज जस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज. यस, वी डू अंडरस्टैंड इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज and we do understand that a lot of travelers, those who are coming from foreign countries, they understand English, and if we communicate with them in English they feel very happy. but communication English से शुरू होकर English पे खत्म नहीं होता. It is beyond English also. Apart from those international travelers, there are many travelers, those who are from our country also, and we can speak
to them in regional languages, or maybe a common language, it can be Hindi. सो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड जब मल्टी लैंग्वेज की बात आएगी तो मैं एक और आपसे जोक शेयर करूंगा ऑफ कोर्स, बट दिस इज बेसिकली द कम्युनिकेशन स्किल्स. नेक्स्ट इज compliance knowledge. There are many compliances which are required to be done from HR perspective. If you see it, it can be ESI, PF, bonus, gratuity, minimum wage. If you see on front desk, of course उनको फॉर्म डी सबमिट कराने हैं, उनको चेक इन चेकआउट्स लेने हैं, उनको फॉर्म संभाल के रखने हैं. There are many compliances. अभी compliances बढ़ गई हैं, especially in COVID protocol. अगर हम tourism health sector में देखें तो we need to inform our travelers if they need to carry their RT-PCR test report, or they need to carry their fully vaccination certificate. So these type of compliances are there, and we are expected to talk, teach, and understand and know about our compliances. And if this compliance knowledge is there, if we are competent, if we're in our competencies, our compliances are also a part of that, we are going to be absolutely successful. What exactly are the second part of the competencies which we need? Apart from, like we were talking about communication skills, apart from communication skills, एक step और अगर हम ahead ले, एक step और forward ले, so there is another step that is known as any of the foreign languages. If you can speak any of the foreign languages, say for an example, if you can speak either German or Italian or French, or you can speak Japanese, or you can speak Chinese, the people traveling from those countries will feel very happy, and they feel very relaxed once they listen to somebody speaking in their own language. They feel very comfortable, and this is magical. If people are coming, like I have worked with some Japanese firms also, and I saw that when we used to call them as per their culture. Say for an example, there was a consultant. His name was Mr. Yamaguchi. So we used to call him Yamaguchi-san. San is G. The way we say G, Ram जी, Shyam जी, जैसे हम G बोलते हैं हिंदी में, वैसे Japanese में San बोलते हैं, तो हम बोलते थे Yamaguchi San. So the person used to feel very happy, and he used to call me Deepak San. So very interesting for us to understand the culture of others, not only language but foreign culture also. अगर हम उनका culture जानते हैं, उनकी language जानते हैं, उनके culture के बारे में बात करते हैं, उनकी language में बात करते हैं, तो hospitality and tourism में फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता. Next is professionalism. इंडिविजुअलिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म, दो इंटरेस्टिंग फिनोमिना आते हैं. इंडिविजुअलिज्म होता है कि क्या मैं वैसा इंडिविजुअल हूं जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में सक्सेसफुल होगा? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी टीच एंड ट्रेन लॉट ऑफ पीपल. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि मैंने तो उसके मुंह पे जवाब दे दिया, मैंने सीधा उसको बोल दिया, मैंने उसको क्लियर मना कर दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है. शायद ये चीजें हॉस्पिटैलिटी में शायद नहीं चलती हैं, बिकॉज here we are very professionals. Even if we know that this is not practically possible, in place of saying a direct no, we always try to give options. Say for an example, a person came to our hotel and asked, do you serve Chinese food? This is a question. So in place of saying no, हमने कहा in place of only Chinese food, we have got some Chinese items. We can cook some of the Chinese items for you in case if you specially order. But as a complete restaurant, or as a complete Chinese menu, we may not be having. So we are saying no, but in a very different manner, or we are trying to help. कभी कभी कोई आके पूछता है Chinese food है, तो we can say that we have got some Japanese dishes with us, like tofu and all. But we are not having the Chinese dishes. Or maybe in Chinese items we can provide you maybe fried rice, or maybe Manchurian or something like that. So there can be few things, but not the complete menu. So professionalism says that in place of saying a clear-cut no, we always try to give some solution, some answer, or some way out to the customer. Like we were taught when we were working with Intercontinental that there were a lot of simulators, and we used to answer a lot of things and all. So there was a situation when the utility shop was closed, and a guest is standing outside and staring towards the shop. So we went and asked that, sir, are you looking something from this shop? Can we help you out? The person said, yes, I'm looking for battery, normal cell for my camera, but this shop is closed. So we said, don't worry, sir. We'll send somebody from concierge. They'll get batteries. Just please wait in the lobby, and we'll ask. Just let us know which type of batteries you are looking towards. This is the professionalism, that we try to anticipate the needs of the customers. We try to see what exactly they are looking towards, and we try to come up to their level of expectation and provide them
which is what exactly they are looking towards. Otherwise तो answer is कि वो पूछ सकता है this shop is closed, answer is yes sir, लगा हुआ है ताला दिख ही रहा है. ये कब खुलेगी sir, today it will remain closed, आज तो सोमवार है, सोमवार को तो बंद होती है, आज तो दुकानदार आते ही नहीं है. So we can give the clear answers, but these are not the answers. The professionalism say that in place of just giving answers, we need to give the solutions, not the answers only. Next thing, next competency is teamwork and team building that we have discussed in the core values. But again, we can discuss that it is not only the question of working in a team, it is a question of making a team also, team building also. We need to do team building. Once we are building a team, once we are making a strong team, then only this team can help and serve the people in hospitality and tourism. Next is attention to detail skills. जब तक हम डिटेल्स नहीं देखते हैं तब तक तो ट्रैवल में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है. इट हैज हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स कि अराइवल टाइम कुछ लिखा होता है, हम देखते हैं 3 बजे का अराइवल है, हमने 3 बजे दोपहर को गाड़ी भेज दी, बाद में पता चला वो 3 बजे दोपहर का नहीं था, वो तो रात का था. एएम और पीएम में गलती कर जाते हैं, कभी कभी आवर्स में गलती कर जाते हैं. आवर्स लिखे हैं कुछ, हमने सोचा वो तो 28 तारीख की बुकिंग थी, हमने 27 को ड्राइवर भेज दिया, या 28 की पिकअप था, हम 28 को भेजना था, लेकिन ये तो 27 को ही गेस्ट आ गया. बिकॉज अगर मान लीजिए उसका अराइवल 12:30 पे है, 12:30 एएम पे है, तो 27 तारीख को जब 12:30 होंगे तो वो तो 28 हो जाएगी ना, 12 बजने के बाद 28 हो जाएगी. तो उसने लिखा था 28 को पिकअप करना है, हम 28 का वेट करते रहे, लेकिन गेस्ट तो एक दिन पहले आ गया. कोई गेस्ट एक दिन पहले नहीं आता है. हॉस्पिटैलिटी में हम सब लोगों को यही बताते हैं, कोई गेस्ट एक दिन पहले नहीं आता. किसी ने अपनी बुकिंग प्रीपोन नहीं की, किसी ने अपनी बुकिंग पोस्टपोन नहीं की है. वी नीड टू बी हैविंग द डिटेल्स and we need to be clear what exactly we are reading and what exactly. कभी कभी गेस्ट ने बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं that probably the guest is looking to take a floor on the higher floors, or maybe a no smoking room, or maybe he has written that he's absolutely a vegetarian, don't want any non-veg food to be served. So these attentions are required to be given. ट्रेवलिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं या आई एम अस्थमेटिक, मेरे को ये मेडिसिन लेके जानी है, या मेरे में पेस मेकर लगा हुआ है, आई कैन नॉट गो थ्रू दी DFMDs, that is door frame metal detectors. So हमें कैसे डील करना है, कैसे चेक इन करना है, कैसे चेकआउट लेना है, क्या क्या करना है. There are a lot of attention towards lot of attention which is required to be given towards the details what the customer is sharing with us, our guests are sharing with us, and that is a skill and that is a competency what we teach and to all our students, and to make them aware that they need to go deep into details in knowing all the details. Then problem solving skills, we have already discussed that problem solving skills should become a way of life and not only a part time activity. Okay, so एक questions आया था यहाँ foreign language का. I just wanted to share a joke. Can I share a joke? Everyone, you are able Yeah, to? please sir, we would be Okay. keen to listen to it. Okay. So अभी क्या होता है आशीष जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे YouTube में कोई वीडियो देख लिया, कुछ देख लिया, कभी कभी ऐसा मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि ये जीवन का तो कुछ अता पता है ही नहीं, कब इस जीवन में इस शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़ के जाना पड़े प्रभु के पास, परमात्मा के पास, परमात्मा से मिलन हो जाए. ऐसी फीलिंग एक दिन आई, तो मैं एक पंडित जी के पास गया और मैंने पंडित जी को जाके बोला कि पंडित जी मेरे को संस्कृत सिखा दीजिए. तो पंडित जी ने बोला संस्कृत सिखा दें, क्यों? मैंने बोला जी जीवन का कुछ भरोसा तो है ही नहीं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए. राम बुलावा भेजिया तो फिर लगा दिया कबीरा रोए, तो उस टाइम रोने से अच्छा है कि मैं बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, संस्कृत आएगी तो मैं ऊपर जाऊंगा, स्वर्ग में सारे सुसंस्कृत लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, संस्कृत में उनसे बात करूंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा, तो बड़ा अच्छा रहेगा. तो पंडित जी ने बोला जी मैं सिखा तो दूंगा संस्कृत, लेकिन एक बात बताओ, आपको ये कैसे गारंटी पता चल गई कि आप स्वर्ग में ही जाओगे, आप नर्क में भी जा सकते हो? मैंने कहा जी नर्क में जाने की कोई ट्रबल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने पंजाबी ते आंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मैं गल्ला मार लांगा, अगर मैं नर्क च गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैंने, बिकॉज आई कैन स्पीक देयर लैंग्वेज. सो हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, वेरी गुड. That's क्या होता lovely, है, sir. थैंक यू, इन प्लेटफॉर्म्स पे रिएक्शंस पता नहीं चलते हैं कि आप जोक समझे हैं या नहीं समझे हैं, और कभी कभी वो जो रिएक्शंस है ना वो टाइप करने पड़ते हैं, और कभी कभी लिखना पड़ता है हा, बट आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. और अगर कोई पंजाबी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बीइंग अ पंजाबी आई हैव क्रैक्ड अ जोक ऑन माई सेल्फ, बट आई एम सॉरी इफ somebody is hurt. ओके, मेरे ख्याल से कोई हर्ट होगा नहीं, पंजाबी इतना दिल पे लेते नहीं है. ओके, वैसे मेरे को हरियाणवी के भी बड़े सारे जोक्स आते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर धैया से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं हरियाणा का तो कोई जोक सुनाता ही नहीं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन व्हाट वी ऑफर
to our hospitality and tourism students, and we tell them कि उनको क्या inculcate करना है, उनको कैसे inculcate करना है. I had written a book, Winning is Everything, which got the Best Business Book of the Year award in Sharjah. और उस अवार्ड विनिंग बुक में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, सक्सेस का फॉर्मूला, जो कि था काश फॉर्मूला, which is KASH. Now what is काश is K stands for knowledge. सबसे पहले हमें जो इम्पार्ट करना है अपने स्टूडेंट्स को, जो सबसे क्रिटिकल चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ज्ञान, वो है नॉलेज. Next is what we need to teach them is a learning and positive attitude, growing attitude, helping attitude. बहुत तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं, यहाँ हम 2-3 इंपॉर्टेंट तरह के एटीट्यूड की बात कर रहे हैं. A stands for attitude. Third is S, that is skill. Skill stands for the skills which they are supposed to learn. It can be technical skills, behavioral skills, बहुत सारे skills हो सकते हैं. हम एक एक स्किल की बात करेंगे जब हम skill पे आएंगे. और चौथी जो चीज है H, that is habits. We need to inculcate positive and productive habits. हम कहते हैं first you need to make an habit and then the habit makes you. पहले आप एक habit को बनाते हैं और फिर habit आपको बनाती है. तो अभी हम पहले स्टेप पे जाते हैं, that is K, that is knowledge. नॉलेज किस तरह की हो सकती है? इट कैन बी थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम उनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं जी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत क्या है. लेट मी टेल यू, थ्योरेटिकल नॉलेज इज द बेस, इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ सक्सेस. जब तक थ्योरी क्लियर नहीं है, आप प्रैक्टिकल पे जा ही नहीं सकते हैं. थ्योरी क्लियर होगी तभी आप प्रैक्टिकल पे जाएंगे. थ्योरेटिकल नॉलेज पे ही आप आगे बढ़ पाएंगे. तो थ्योरेटिकल नॉलेज इज वेरी वेरी क्रिटिकल. बहुत सारे लोग थ्योरेटिकल नॉलेज को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी की प्रैक्टिकल नॉलेज को देते हैं, बट थ्योरेटिकल नॉलेज इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज टेक्निकल नॉलेज. हर फील्ड की होती है. एचआर की अलग होती है, टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग की अलग होती है, टूरिज्म की हो सकती है, बुकिंग, किसी को बुकिंग करनी है तो उसकी अलग हो सकती है, लोगों को ओपरा आना चाहिए, लोगों को माइक्रोज आना चाहिए. ये सब टेक्निकल नॉलेज होती है जो कि आपको हेल्प करती है आपकी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए. कंप्यूटर नॉलेज भी टेक्निकल नॉलेज में आती है. सो टेक्निकल नॉलेज इज द सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज वी ट्राई टू इम्पार्ट टू आवर स्टूडेंट्स एंड इट हेल्प्स देम आउट. थर्ड इज द प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम अभी बात कर रहे थे. थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है. प्रैक्टिकल नॉलेज का अपना एक अहम किरदार है, अहम रोल है जो प्रैक्टिकल नॉलेज प्ले करती है. और कभी कभी थियोरेटिकल नॉलेज ओवरबोर्ड होने पर भी अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो हम वो चीजें अचीव नहीं कर सकते. It is not practically possible for me to give you 100 books on swimming and you read the books and you can learn how to swim. Or if you read maybe 1,000 books on skating and you can learn how to skate. Or if you read maybe 1 lakh books on cycling and if you think that you can learn cycling only after reading books, it is not possible. You need to do practicals. आपको गिरना पड़ेगा 2-4 बार साइकिल से. आपको शुरू में क्रंची चलानी पड़ेगी बचपन में, जैसे हमने सीखा, पहले क्रंची चलाओ, फिर उस पे आओ और फिर सीट पे आओ. बहुत साल बाद हम सीट पे आए. तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए गिरना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, गलतियां भी समझ आती हैं, बट प्रैक्टिकली करना पड़ता है. That is basically practical knowledge, and with a lot of practice you can become a champion of the practical knowledge. The last but not the least type of knowledge is the behavioral knowledge. How you need to behave with as professors and teachers, how we are expected to behave with our students. As students, how they are expected to behave with us. As students, how they are expected to behave when they go and work as industrial trainees in the hotels. As employees, how they are expected to behave. As human beings, how we are expected to behave with others. बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनसे डील करते हैं, उन गेस्ट से डील करते हैं जो बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत डिमांडिंग हैं, बहुत वोकल हैं. लेकिन कोई बात नहीं, our behavioral knowledge teaches us how to deal and manage and tackle with them and how to make them happy. ऐसा बहुत बार होता है. हमने बहुत सारे स्किलफुल ऐसे लोगों को देखा है कि जो कि एक गेस्ट जो कि बहुत नाराज था, उससे बात करते करते अंदर जाते हैं और जब तक वो रूम से बाहर आते हैं, गेस्ट जोर जोर से हंस रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म पूरा का पूरा कर दिया जाता है. ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, नॉलेज जो होती है ना, बहुत सारे लोगों में ज्ञान होता है तो उनको बहुत फायदा मिलता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता ना कभी कभी तो बहुत खतरा हो जाता है. इस चीज को समझने के लिए हम एक जोक शेयर कर सकता हूँ नॉलेज के लिए, आशीष जी. Yeah, sir, please. ओके, सो एक बेचारा बंदा गांव में था. उसकी वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी होने वाली थी और अचानक डिलीवरी की डेट आ गई और जो इंसान था वो दौड़ा दौड़ा गया डॉक्टर को बुलाने और डॉक्टर को लेके आया. डॉक्टर भी अपनी फटाफट आया अपना बैग उठा के और
उस बंदे को बोला ठीक है जी आप बाहर चले जाओ, आप थोड़ा पानी गर्म कीजिए, उसने पर्दा वर्दा कर दिया। आप गाँव में ऐसे ही होता है कि कई बार दाई नहीं मिली, कुछ नहीं था, तो जो डॉक्टर अवेलेबल था वो बेचारा उस सर्विसेज के लिए आ गया। तो थोड़ी देर में डॉक्टर अंदर कुछ खटर पटर होती रही, वो इंसान बाहर था, उसको लगा कि भाई मैं पिता बनने वाला हूँ और अभी एक अच्छी खबर आने वाली है। इतने में अचानक डॉक्टर ने बाहर झांक के उसको बोला कि भैया तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर। अब वो इंसान बड़ा घबराया, बड़ा परेशान हुआ, स्क्रू ड्राइवर उसने कहा जी है, दो। उसने फटाफट एक स्क्रू ड्राइवर दे दिया डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद फिर झांक के बाहर देखा पर्दे से, बोला वो आ रही है, आ रही तुम्हारे पास, आ रही। वो इंसान और घबरा गया कि डॉक्टर है, कसाई है, क्या है। फिर भी अब क्योंकि डॉक्टर ने कुछ मांगा था, उसने आरी दे दी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने फिर दरवाजा खोल के पूछा तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है। इस बार तो इस इंसान से रह ही नहीं गया, उसकी नॉलेज तो जवाब दे गई। बोलता डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो कि कसाई हो, आप क्या करने क्या आए हो, आप कर क्या रहे हो। कह रहा चुप रहो यार, यहाँ मेरी पेटी नहीं खुल रही और तुम्हारे को अपनी डिलीवरी की बात की पड़ी है, अपनी पेटी खोलूंगा तो इलाज शुरू करूंगा ना। तो वो हिसाब है कि कभी कभी नॉलेज नहीं होती है तो हम किसी दूसरे टेंजेंट पे चले जाते हैं, किसी दूसरे लेवल पे चले जाते हैं और सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या घटनाएं घट रही हैं और क्या घटनाएं हो रही हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, दैट इज बेसिकली एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड, जैसे मैंने बताया, इट कैन बी विनिंग एटीट्यूड, इट कैन बी लर्निंग एटीट्यूड, इट कैन बी पॉजिटिव एटीट्यूड, इट कैन बी हेल्पिंग एटीट्यूड। और उस एटीट्यूड के तहत हमारे को हाई एम करना है। प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका एम, लेकिन एम हाई होना चाहिए। जब तक एम हाई नहीं होगा, जब तक हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाएंगे कि दे नीड टू एम हाई, तब तक वो अचीव नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे एम तो कोई भी अचीव कर लेगा, फिर लाइफ की फिर अचीवमेंट क्या है। वी नीड टू एम वेरी वेरी हाई, though it should be practical, but once we aim very high we'll be able to achieve lot of things. Our approach should be result oriented approach and not only a bookish approach. Result आएगा, उसके उत्तर आएंगे, उसकी ग्रोथ दिखेगी तो सब लोग उसको पसंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। if our attitude is not result oriented, हमारी सोच से कोई रिजल्ट तो आता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, फिर हम कुछ भी सोचते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज हेल्पिंग एटीट्यूड। जब तक हम सबकी मदद नहीं करेंगे, लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। हालांकि लोग हमारी मदद करें इसके लिए हम मददगार बने, दैट इज आल्सो रॉन्ग। वी नीड टू बी हैविंग अ हेल्पिंग एटीट्यूड बिकॉज़ व्हेन यू हेल्प अदर्स यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। दैट इज बेसिकली द हेल्पिंग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड देन विनिंग एटीट्यूड, विन विन, कि आप भी जीते, मैं भी जीतूं, हम सब दोनों जीतें और जीत के आगे बढ़े। और पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि अभी पंजाब का जोक सुनाया तो अभी मैं हरियाणा पे आ जाता हूँ। हरियाणा में एक हमारे ताऊजी थे। वो ताऊजी काफी बड़ी उम्र हो गई और साइकिल चलाना सीख नहीं पाए, और बाकी बच्चे पोते पोतिया भी साइकिल चलाते थे, बच्चे भी चलाते थे। तो ताऊजी को लगा मुझे भी साइकिल सीखनी चाहिए। ताऊजी ने साइकिल उठाई और उसकी प्रैक्टिस करने लगे, और प्रैक्टिस करते करते जाके एक ताई के टक्कर दे मारी। ताई बहुत नाराज हुई, बोली रे ताऊ, थारी इतनी बड़ा बड़ी मूछा होली, थार से साइकिल ना रोकी गई। तो ताऊजी ने तुरंत जवाब दिया, रे ताई मूछा में ब्रेक के लाग रही सैके। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और किसी भी एज में सीख सकते हैं। एज डज नॉट मैटर, लेट मी टेल यू। और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, विन विन एटीट्यूड रहेगा, तो आप भी जीतेंगे, आपके स्टूडेंट्स भी जीतेंगे, आप कस्टमर्स की भी खुश रख पाएंगे, आप गेस्ट को भी खुश रख पाएंगे, अचीवमेंट्स भी होंगी। और जब टुगेदर विनिंग होती है, टीम में विनिंग होती है, तो पीपल कैन प्रोसीड फर्दर मच अहेड। Next, third skill which is there is basically third step is the skills. बहुत सारे के skills होते हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जिनमें पहला हो सकता है good communication skills। हम communicate कैसे करते हैं, जो हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट से लिस्ट बनवा सकते हैं कि अपने टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनाइए। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक की है, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट होती है। वो खुद उन चीज़ों को लिखते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि तीन ही चीजें ऐसी हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। वो तीन चीजें हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इतना टाइम वेस्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट में कि पूछिए मत। वो एंटरटेनमेंट टीवी से भी हो सकता है, वो मोबाइल से भी हो सकता है, वो कोई सीरियल वेब सीरीज हो सकती है, कहीं वो शादी पार्टी में जाते हैं तो 4 दिन 5 दिन वहां लग जाते हैं, कोई तो टेस्ट मैच देखने 5 दिन का बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स, कोई पूरा पूरा दिन बैठ जाते हैं एक मैच देखते हुए, लास्ट को शाम को परेशान हो जाते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद अस व्हेन इंडिया पाकिस्तान मैच वाज देयर, अ लॉट ऑफ हाइप वाज क्रिएटेड। पूरा दिन हमने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया उसमें। वो अलग चीज है कि विकेट ही हाथ में नहीं आई, बड़ा दुख रहा, लेकिन बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं हम कभी कभी। और इन टाइम जो वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, हमारे को देखना चाहिए कि
आपके केस में ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है? क्या रिलेटिव्स फ्रेंड्स आपका टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, या मोबाइल कर रहा है, या टीवी कर रहा है, या गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या शादियां पार्टियों में आप टाइम लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? That is what exactly we need to learn, that we understand where exactly we are wasting our time so that we can convert into a productive time management tool. हम उसको प्रोडक्टिव बना सके. हमने टीम वर्क और टीम बिल्डिंग की बात कर ली है, और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की भी हमने बात की है, दैट वी नीड टू टेक द डिसीजंस वेरी इफेक्टिवली. एंड डिसीजन इफेक्टिव तब लिए जाते हैं जब आपको एक्सपीरियंस होता है. और एक्सपीरियंस कब होता है? जब आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, और बहुत सारे गलत होते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं. और डिसीजंस कब गलत होते हैं? जब आप डिसीजन लेते हैं. तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है. आप डिसीजन लेना सीखिए, सिखाइए अपने स्टूडेंट्स को. उनको बताइए कि वो जब डिसीजन लेना सीखेंगे, शुरू में कुछ गलत डिसीजन लेंगे, कुछ सही लेंगे. जो सही डिसीजन लेंगे उनको कॉन्फिडेंस आएगा, जो गलत डिसीजन लेंगे उनको एक सबक मिलेगा. दे लर्न अ लेसन एंड देन दे प्रोसीड फर्दर, एंड दे कैन become very very smart once they understand how to. Initially they'll take some wrong decisions, they'll learn some lessons, and then they'll start taking right decisions, and they'll be able to take very effective decisions which are very very good in the long term. Effective communication skills में है कि एक बंदा एक पुजारी के पास गया और उससे पूछा कि जी वो पूजा करते हुए मैं स्मोकिंग. पुजारी बहुत नाराज हुआ, क्या बात करते हो, क्या बकवास करते हो, पूजा कर रहे हो तो पूजा में ध्यान लगाओ, पूजा की ओर पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए. उस टाइम तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकता है कि तुम स्मोकिंग करो, तुम तो बिल्कुल ही पथभ्रष्ट हो गए हो. काफी डांट पड़ी उसको पुजारी से. उसने कहा ठीक है जी. फिर दूसरा एक बंदा आके उसने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी मैं बहुत सारे काम करता हूँ, कभी कभी टेंशन में भी खड़ा होता हूँ, दाएं बाएं होता हूँ, कभी कभी स्मोकिंग भी कर रहा हूँ. जब स्मोकिंग कर रहा होता हूँ तो सिमरन कर सकता हूँ? कहते हैं हाँ हाँ, सिमरन तो कभी भी किया जा सकता है, पूजा कभी भी की जा सकती है. भगवान की पूजा के लिए क्या वो है, आप किसी भी काम करते हुए भगवान को याद कर सकते हैं. सो दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हाट एग्जैक्टली यू पुट इन फोर्थ डिपेंड्स ऑन द आंसर यू आर गोइंग टू गेट. पहली बार में उसको डांट पड़ी, लेकिन दूसरी बार में पुजारी जी ने बोल ही दिया कि हाँ, कोई भी काम करते हुए आप सिमरन तो कर ही सकते हैं, भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं. So with good communication skills, you can get your work done, and you can teach this thing to all your students, that with very effective communication skills, they can achieve lot of things. इसमें स्किल्स में एक छोटी सी स्टोरी याद आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग. एक इंडियन था न्यूयॉर्क में. वो न्यूयॉर्क के एक बैंक में गया, और बैंक में जाके बोला कि जी मुझे $5,000 का लोन चाहिए. तो उन्होंने बोला सॉरी सर, हम आपको जानते नहीं है, आपका बैंक अकाउंट भी इस बैंक में नहीं है, हमें पता नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल क्या है वैल्यू, तो आपको $5,000 किस चीज पे दे? हम मे बी वी कैन मॉर्गेज समथिंग, हम कोलेटरल कुछ रख लेते हैं आपका, और उसके एवज में आपको लोन दे देते हैं. तो उसने बोला जी क्या रख सकते हो, घड़ी ये वो. अच्छा एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी रख लीजिए. उसने अपनी फरारी की चाबी जो है वो बैंक वालों को दे दी. बैंक वालों ने देखा फरारी, बैंक वालों ने फटाफट फरारी को पार्क किया, उसके पेपर्स लिए उससे, बोला हाँ ठीक है, तो महंगी गाड़ी है और इसके एवज में हम आपको $5,000 का लोन दे सकते हैं. उन्होंने $5,000 का लोन दे दिया. वो इंसान चला गया. एक हफ्ते बाद लौट के आया, तो उसने बोला जी ये आपके $5,000 का जो लोन लिया था, ये $5,000, और ये उसके ऊपर जो $50 आपके इंटरेस्ट बनता है, उसने दे दिया. बैंक वाले बड़े खुश हुए, सर थैंक यू वेरी मच, आपने लोन भी सही टाइम पे चुका दिया और उसका इंटरेस्ट भी दे दिया. लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे, जब हमने आपको लोन दिया, तो हमने आपकी पूरी प्रोफाइलिंग चेक की, हमने लिंक्डइन पे देखा, बाकी जगह देखा, और आपकी प्रोफाइलिंग चेक करने के बाद पता चला दैट यू आर अ मल्टी मिलियनियर, आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सिर्फ $5,000 की लोन की जरूरत क्यों पड़ी? हम इस चीज के लिए बड़े कंफ्यूज थे. तो उसने बोला भाई अपने अपने स्किल की बात है. एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे जा रहा था इंडिया में एक शादी में, और मेरे को लगा कि अगर मैं न्यूयॉर्क में अपनी गाड़ी कहीं पार्क करूंगा तो एक दिन के कम से कम भी $100 मुझसे लेंगे, और एक हफ्ते के मेरे को $700 देने पड़ेंगे. तो $700 पार्किंग देने की बजाय मैं आपके पास आया, और आपने मुझे लोन दिया, और उसके एवज में केवल आपने मुझसे $50 लिए. इससे सस्ती पार्किंग, इससे सेफ पार्किंग मुझे और न्यूयॉर्क में कहाँ मिल सकती थी. ये हैं हमारे इंडियंस जो बहुत स्किलफुल हैं और दुनिया में नाम कमा रहे हैं. और अभी आपने देखा गर्ग साहब भी आ गए ट्विटर में, और इंडियंस जो है वो सारी एमएनसीज के सीईओ बनते जा रहे हैं. मुझे इस चीज की तो बड़ी खुशी है कि सीईओ बन रहे हैं. एक ही चीज का दुख है कि हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं. वो हमें भी बुलाएं, हमें भी कुछ ऑफर करें तो हमें और मजा आए. बट जहाँ खुशी है वहां थोड़ा सा दुख भी है. खुशी भारतीय उनके भारतीय होने पे है, और दुख उनका हमें ना देखने पे है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज एच, दैट इज हैबिट्स. हैबिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे हमने बात की कि बीइंग हेल्पफुल इज अ हैबिट. यू नीड टू इनकलकेट दिस हैबिट. वंस यू इनकलकेट दिस हैबिट विल मेक यू नीड टू बी वेरी इंक्विजिटिव एंड लर्निंग. ये हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप इंक्विजिटिव बने,
आप क्वेश्चन पूछें, आप प्रश्न पूछें, आप अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। और जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता। यू नीड टू बी इंक्विजिटिव, यू नीड टू बी हैविंग द लर्निंग एटीट्यूड। और कभी कभी आपको डिमांड करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, कभी कभी आपको मांग के भी ज्ञान लेना पड़ता है। और एक इंग्लिश का फ्रेज है, समटाइम्स द क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क। कभी कभी आपको मांगना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा आपको इकट्ठा करना पड़ता है ज्ञान। कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा आप बैठे रहे और कोई आप पर ज्ञान बरसाने आ जाए। स्टूडेंट्स को भी उठ के क्लास में आना पड़ता है, उठ के ऑनलाइन सेशंस को अटेंड करना पड़ता है, तभी वो ज्ञान ले सकते हैं। और जब तक वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। सो बीइंग इंक्विजिटिव और बीइंग हैविंग द लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग हैबिट इज अ वेरी गुड हैबिट. Being positive and contributive is a habit. You need to be thinking positive. You need to think positive from all directions. कभी कभी क्या होता है कि हम नेगेटिविटी के फेर में चले जाते हैं, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ बह जाते हैं। एक हैबिट बनानी है कि हर चीज में पॉजिटिव सोचना है, जो भी होगा उसमें पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी होगा पॉजिटिव सोचना है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी में पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं? तो एक एग्जांपल, आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। एक कंपनी ने अपने बेस्ट सेल्स परफॉर्मर्स को अवार्ड देने की सेरेमनी की, और अवार्ड जब वो दे रहे थे तो बेस्ट परफॉर्मेंस 2-3 लोगों को अवार्ड मिला। तो जिस परफॉर्मर को अवार्ड मिलता था वो उसको बोलते थे कि भाई आपको अवार्ड मिला है एज बेस्ट परफॉर्मर का, आपने सबसे ज्यादा सेल्स की है, आप माइक पे कुछ कहें। तो पहले बंदे को मिला तो उसने बोला थैंक यू वेरी मच माय बॉस, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू कंपनी, थैंक यू ट्रेनिंग। दूसरे को मिला, उसने कहा थैंक यू माय स्टार्स, थैंक यू गॉड, ये वो सब बोले। तीसरे को जब अवार्ड मिला बेस्ट सेल्समैन का, तो उसने आके बोला था थैंक यू सर, आई 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 एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द अवार्ड। वो बड़ा स्टेमर कर रहा था, सब लोग बड़े हैरान हुए, जो इतनी स्टेमरिंग कर रहा है, इतना बेचारा हकला रहा है, उसको बेस्ट सेल्स का अवार्ड कैसे मिला? तो जो प्रेजेंटर था उसने उससे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया, उससे रहा नहीं गया। उसने बोला प्लीज डोंट माइंड, बट आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये अवार्ड कैसे मिला, आप यहाँ कैसे पहुंचे? कहता है सर बड़ा इजी था। मैं जब बुक्स बेचने जाता था तो उनको बोलता था कि ये बुक आप खरीदोगे या मैं पढ़ूं? तो बोलते थे भाई बुक का रेट ही बता दे। तो मैंने बहुत सारी बुक्स बेच पाया और मैं बेस्ट सेल्समैन बन गया। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप हर हाल में पॉजिटिव सोच सकते हैं, हर हाल में पॉजिटिव कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो हर हाल में पॉजिटिव सोचने वाले को ही हम चैंपियन बोलते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। ओके, you need to be thankful. We need to teach our students that they all need to be thankful. They need to be thankful for their stars, for God, for parents, for society, for everything. They need to be thankful that they are born in India and they are not born in Syria जहाँ पे war ridden country है. They need to be happy and thankful that they are born in India and they are not born in a country like Turkey जो कि इतने मेस से गुजर रही है कि वहाँ पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक टर्न डाउन हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। They are not born in the countries, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ खाने के लिए नहीं है, जहाँ दुनिया भर के पेंडेमिक आ जाते हैं, जहाँ दुनिया भर के चैलेंजेस आ जाते हैं। They need to be thankful that they are born in India where their talent can be recognized. They can, if they want to become entrepreneurs, they can become. If they want to get a good job, they can get a good job. They need to be thankful for everything. They need to be thankful for the education they are getting. They need to be thankful for the institute in which they are studying. They need to be thankful for all the professors and teachers and lecturers, those who are imparting the knowledge. And one day when they'll become very successful, they'll understand the meaning and the value of that. आज भी मुझे मेरे कोई गुरु दिखते हैं, मैं उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद लेता हूँ। कोई भी गुरु हो सकते हैं, वो गुरु ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, या गुरु ऐसे हो सकते हैं जिनसे मैं कुछ भी सीख पाया। So we all need to be thankful and we all need to be grateful towards what exactly we are getting, and that is the attitude what we need to explain, and we need to inculcate the habit of being thankful. For everything we need to say thank you, we are very happy. That is the habit we all need to inculcate, and we need to teach and train our students in inculcating such habits. We need to be taking care of our health. अगर हम अपनी हेल्थ को टेक केयर नहीं करते हैं, 6 दिन कम से कम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इट मींस वी आर डूइंग अ क्राइम ऑन आवरसेल्व्स, क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑन आवर इंस्टीट्यूट की वो एक अनहेल्दी इंसान को लेके चल रहे हैं। वी नीड टू बी हेल्दी, वी नीड टू बी हेल्दी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। 4 तरह की हेल्थ होती है, एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ आवर
Students, we need to take care of the health of our customers, guests, everything. And as we discussed that there are 4 types of health: the physical, mental, spiritual and social. 4 तरह की हेल्थ का हमें खास ध्यान रखना है. उसके लिए क्या एक्शन लेने हैं? We need to accept the people in hospitality. What exactly we are expected to do? Hospitality में क्या है? हम जाते ही बहुत सारे लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको उनको सिखाने की कोशिश करते हैं. बट वी नीड टू एक्सेप्ट देम एज दे आर. जैसे लोग हैं उनको उसी तरह से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. उनको शुरू में बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उसके लिए आई कैन शेयर अ जोक इफ यू परमिट प्लीज. कैन आई शेयर अ जोक प्लीज? Please, sir, we would love to Okay. listen. ओके. एक हस्बैंड वाइफ थे. दोनों पहले दोस्त रहे और दोनों ने शादी की. डिसाइड किया कि शादी कर रहे हैं. मेरे इस जोक का कोई संबंध अभी रिसेंटली हुई कोई भी शादी से नहीं है. खैर, 2 दोस्तों ने शादी की, बहुत अच्छी शादी हुई. शादी से पहले उन्होंने बैठ के कुछ नियम बनाए. उन्होंने बोला कि पहला नियम ये है कि हम एक दूसरे पे भड़केंगे नहीं. दूसरा नियम है हम एक दूसरे को जैसे हम हैं वैसा एक्सेप्ट करेंगे. तीसरा नियम है हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे. चौथा ये है हम कभी भी पास्ट को बीच में नहीं लेके आएंगे. और 5वां ये है कि हम ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं. इस तरह के 4-5 रूल्स बनाए गए. मुझे उम्मीद है आपने भी कुछ ना इस तरह के कुछ रूल्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बाकी लोगों के साथ या कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ रूल्स बनाए होंगे. खैर, उन्होंने रूल्स बनाए और शादी के कुछ दिन बाद उस कपल ने एक नया घर खरीदा. जब वो घर शिफ्ट कर रहे थे तो जो हस्बैंड है वो सारा भारी भारी सामान उठा उठा के ट्रक में रख रहा था. तो जो ही उस हस्बैंड ने एक बॉक्स उठाया, जो कि छोटा बॉक्स था, उस पे ताला लगा हुआ था. जो ही उसने वो उठाया बॉक्स, वाइफ ने झपट के छीन लिया कि नहीं ये मैं उठाऊंगी. हस्बैंड बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि आखिर ये बॉक्स क्या है, क्या है इसमें, गहने हैं क्या है, इस पे ताला लगा हुआ है और ये वाइफ जो है मेरे को बॉक्स नहीं उठाने दिया और खुद उठाया. फिर जब वो डीलोड कर रहा था सामान, नए घर में पहुंचने के बाद सारा सामान उठा उठा के रख रहा था, तो जो ही डब्बे की बारी आई वाइफ ने फिर उसके हाथ से छीन लिया. नहीं ये मैं उठा के रखूंगी. तो हस्बैंड को काफी बुरा लगा लेकिन वो चुप रहा. हालांकि उन्होंने जो रूल्स बनाए थे, शाम को जब वो खाना खाने बैठे कैंडल लाइट डिनर में, तो हस्बैंड ने बोला कि आज मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी. हमने कहा था हम ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, हमें कोई चीज बुरी लगेगी तो हम दूसरे से डिस्कस करेंगे. कि हमारा एक ग्राउंड रूल ये है कि हम कुछ छुपाएंगे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बॉक्स तुमने मुझसे छुपाया, इस पे ताला लगा हुआ है, मुझे दिखाया नहीं इसके अंदर क्या है और मुझे उसको उठाने भी नहीं दिया. तो वाइफ ने अपनी गलती समझ ली, मान लिया. उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, हमने वादा किया था, मैं भूल गई थी कि हमने वादा किया ओपन कम्युनिकेशन का, एंड नॉट टू हाइड एनीथिंग. सो आई एम सॉरी. ये रही इसकी चाबी, तुम चाहो तो उसको खोल के देख सकते हो. हस्बैंड ने उसके ताले को खोल के देखा, उसमें राजमा के कुछ दाने पड़े थे और एक 100 रुपए का नोट पड़ा था. तो उसने बोला कि राजमा के कुछ दाने, 100 रुपए का नोट, ये कोई इतनी प्रीशियस चीज तो नहीं है जिसको ताले में संदूक में संभाल के रखा जाए, तो ये क्यों है? तो उसकी वाइफ ने बोला कि देखो हमने वादा किया हम एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं. तो मैं आपको बता दूं कि शादी से पहले मेरे जितने भी चक्कर चले, उन सब की याद के लिए मैंने हर एक राजमा के दाने पे अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख के इसमें रख दिया. ये सुनते ही जो है हस्बैंड को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने लगा था. इतने सारे राजमा के दाने, ये वो, लेकिन बेचारा क्योंकि प्रॉमिस कर चुका है कि वो पास्ट को नहीं लेके आएंगे, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, होता है, इट हैपेंस इन दैट एज. लेकिन ये 100 रुपए का नोट, तो उसकी वाइफ ने बोला क्या करूं, बहुत सारे हो गए थे, मैंने 100 किलो बेच दिए और ये उसी की कमाई है जो मैंने यहाँ रख दी. तो यू नो वी नीड टू बी एक्सेप्टिंग द पीपल एज दे आर. कभी कभी हमें उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कभी कभी सच बताऊं तो हमको बदल भी नहीं सकते. So that is very interesting phenomena in hospitality and tourism, is that people can be of different types and you cannot change them as per your will and wish every time. We need to get up and work smart. हम बैठे बैठे केवल आदेश देने से, केवल कहने से, केवल डांटने से, केवल झल्लाने से, केवल चिल्लाने से, केवल एक्सपेक्ट करने से काम नहीं होते हैं. उठ के काम करने से होते हैं. हाँ, उठ के काम करने से होते हैं, खुद हाथ चलाने से होते हैं. कभी कभी आपको अपनी टीम के साथ काम करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा और उनके साथ खड़े रह के अचीवमेंट्स करनी पड़ेंगी. Of course we have understood in past few slides that we need to learn the stress management, because stress होगा, काम बहुत सारा होगा और हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना है और ये देखना है कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं. हमने ये भी सीख लिया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए. कोई ऐसा काम क्यों करें और क्यों करना जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आए. अगर किसी का नेगेटिव रिजल्ट आएगा ऐसा काम भी क्यों करेंगे, और किसी का पॉजिटिव नहीं आएगा ऐसा भी क्यों करेंगे. सो वी नीड टू डू समथिंग व्हिच हैज गॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटपुट. वही हमें काम करना है और वही कराना है. Whatever leadership we have learned in our life, we need to exercise the leadership techniques. हम लीडरशिप सीखते हैं जब तक हम उनको अपनाएंगे नहीं, जब तक उसको धारण नहीं करेंगे, आत्मसार नहीं करेंगे, तब तक हम लीडर कैसे बनेंगे. We need to lead our students.
so that they can become leaders. A leader is not a true leader if he has only produced subordinates. A true leader is a leader who has produced leaders. और जब मैं बात बोल रहा हूं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं और बहुत बहुत खुशी से बोल रहा हूं और बहुत गर्व से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं. मेरे बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो हमारे ट्रेनीज थे. ट्रेनीज एचआर में ट्रेनिंग करने आए थे, वो आज एचआर मैनेजर्स हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उनको बहुत ब्रांडेड चेन्स में एचआर मैनेजर्स के तौर पे देखता हूँ. और 3 मेरे ऐसे असिस्टेंट मैनेजर्स रहे हैं पास्ट में जो कि मेरे साथ असिस्टेंट मैनेजर थे जब मैं डायरेक्टर एचआर था. आज वो तीनों के तीनों डायरेक्टर एचआर हैं, बहुत अच्छी चेन्स में काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं. एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि जो हमने फर्स्ट यू प्रैक्टिस देन यू प्रीच, जो हमने दूसरों को पढ़ाया, जो हमने दूसरों को ज्ञान दिया लीडरशिप का, वो हमने इम्प्लीमेंट किया अपनी जिंदगी में. और हम उन सब लोगों को आगे ले जा सके, बढ़ा सके, जो जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया हमको सिखा सके. एंड आई एम श्योर आपको भी ऐसी अच्छी फीलिंग्स आती होंगी एज प्रोफेसर्स, एज लेक्चरर्स, जब आप देखते होंगे कि आपके सिखाए पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे बैठे हैं. आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ फीलिंग्स व्हाट आई एम हैविंग विद मी. We need to keep on motivating others, but first is that we need to keep ourselves self motivated. जब तक हम self motivated नहीं है हम दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते. हम दिवाली पे दूसरे दिए जला सकते हैं तभी जब हमारा खुद का दिया जला हो. खुद का दिया जला है तो आप बहुत सारे दिए जला सकते हैं. खुद का दिया बुझा है, आप खुद डिमोटिवेटेड हैं तो आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे? फर्स्ट वी नीड टू मोटिवेट आवरसेल्व्स एंड देन वी नीड टू keep on motivating others. We need to have the eye for the detail. That is what we need to learn in practice, and then only we can teach to others, our students, कि कैसे उनके पास हर चीज की डिटेल्स होनी चाहिए so that वो कहीं मार ना खाएं. जो भी काम हमें दिया जाएगा उसको बहुत संभाल के करना है, बहुत अच्छे ढंग से करना है. हम कर्म को जो है बहुत ज्यादा, जैसे हमने बोला, कर्म की थ्योरी में हम बिलीव करते हैं और भगवान कृष्ण ने गीता में हमें कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म करना हमारा काम है, फल की इच्छा करना हमारा काम नहीं है. हमें जो काम दिया जाता है हम उस पर ध्यान देंगे, उसको करेंगे, अच्छे दिल से करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पूरे दिलो दिमाग से करेंगे, ध्यान से करेंगे, सो दैट हम सक्सेसफुल हो सकें, बाकियों को ये सिखा सकें. लेकिन फल की इच्छा नहीं करे तो अच्छा. और मैं तो आजकल वैसे ही बहुत नाराज हूँ भगवान से कि इतना सारा कर्म कर लिया, न जाने कब फल मिलेगा. तो कभी कभी बीच में नाराजगी चलती रहती है. तो हम जैसे कभी कभी अपने पेरेंट्स से नाराज हो सकते हैं तो कभी भगवान से भी नाराज हो सकते हैं, चलती रहती है नाराजगी. दो मुझे लगता है मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ और हमेशा भगवान ने मेरे को एक प्रिविलेज चाइल्ड माना है और बहुत कुछ दिया है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ. लेकिन आजकल वो थोड़ा सा ना कुछ बिजी है, आजकल मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा आराम से बैठे हैं. बट आई एम ट्राइंग टू हैंडल एंड मैनेज माई वर्क वेरी वेरी केयरफुली एंड आई एम डूइंग माई कर्मा वेरी सिंसियरली एंड आई नो दैट डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट कर्मा वेरी सून. We need to think globally, but we need to act locally. ग्लोबल मार्केट है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की मार्केट लोकल कभी हो ही नहीं सकती है. ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल थिंकिंग होनी चाहिए, ग्लोबल सोच होनी चाहिए, लेकिन एक्शन जो है वो लोकल होने चाहिए, हमारे यहाँ से ओरिजिनेट होने चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ के बहुत कुछ पा सकें. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सेंस ऑफ ह्यूमर. हम हंसते हंसते जो काम कर सकते हैं वो परेशान होकर दुखी होकर नहीं कर सकते. हंसते हंसते खुद भी मजाक कर सकते हैं, हंसते हंसते दूसरों के साथ भी जोक शेयर करते हैं, दूसरों के साथ भी कुछ ना कुछ अच्छे पल शेयर करते हुए वी कैन अचीव मेनी मेनी थिंग्स. एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज दैट वी नीड टू एक्सरसाइज द सेंस ऑफ ह्यूमर. वी नीड टू लेट अदर्स स्कोर अ गोल. हमें किसी और को भी गोल स्कोर करने देना चाहिए. हर अचीवमेंट हमारे लिए नहीं है, हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए उनकी अचीवमेंट के लिए, बिकॉज इफ दे आर हैप्पी वील आल्सो बी हैप्पी. सिर्फ हमारी खुशी से ही हमें खुशी नहीं मिलती है, दूसरों की जीत से, उनके आगे बढ़ने से भी हमें खुशी मिलती है. और जैसे हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. हम कहते हैं हे प्रभु सभी के दुख हरो, सभी की प्रॉब्लम्स को दूर करो, सभी को स्वस्थ रखो, सभी को आगे बढ़ाओ. जब सब खुश हैं तभी तो हम खुश रह सकते हैं. मैं कैसे खुश रह सकता हूँ अगर मेरे साथी खुश नहीं है? मैं कैसे खुश रह सकता हूँ अगर मेरे बाकी कुलीग्स जो हैं उनको कोई व्यथा है, उनको कोई परेशानी है, उनको कोई दुख है, उनको कोई क्षोभ है? कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम भी खुश हो और हमारे आसपास सभी लोग जो भी हमारे साथ हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल डीन हो सकते हैं, वो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, वो हमारे गेस्ट हो सकते हैं, वो हमारी फैमिली हो सकती है, सभी हो सकते हैं. वी नीड टू make sure that they are happy and they are successful and they are growing. We need to utilize our EQ, that is emotional quotient, over IQ. इंटेलिजेंट क्वेश्चन से भी ज्यादा हमें यूज करना है EQ, क्योंकि EQ हमें हेल्प करता है रिलेशनशिप मैनेज करने में, आइडियाज मैनेज करने में, नॉलेज और थॉट्स को मैनेज करने में. सो वी नीड टू बी एक्सरसाइजिंग आवर EQ, इमोशनल क्वोशंट,
and that's why we have said in the past that we need to be emotionally intelligent in hospitality and tourism in dealing with other people. I think that was the first step what we read in the slides today. Few magic mantras in our life, जनरल मैजिक मंत्रास हैं हम. मैं मानता हूं कि एज टीचर्स प्रोफेसर्स आप सभी इन सभी चीजों के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये एक रेडी रेकनर है आप सभी के लिए. इट इज जस्ट a fresh thought once again. It's a thought once again for you also, that you can also refresh your memory and you can share these things with your students and they can also learn and grow. First is, मेरा क्वेश्चन है, डू ह्यूमन बीइंग्स अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट? क्या होते हैं उनका? अप्रिसिएशन होता है ह्यूमन बीइंग्स का या डेप्रिसिएशन होता है? एनीबॉडी टू आंसर? व्हाट डू यू थिंक? हम सब We would ह्यूमन like to have response from the participants. Savita ji, Smriti ji, Suhana ji, Vijay ji, Virendra ji, Komal ji. Let's see. जी गुरुजन, क्या कहेंगे आप सभी कि ह्यूमन बीइंग्स अप्रिशिएट होते हैं या डेप्रिशिएट होते हैं? Sir, there are messages coming into the chat box. अच्छा, मैंने चैट बॉक्स एक्चुअली खोला नहीं हुआ, वेरी सॉरी. And Adit says depreciate. Anant Verma ji says appreciate. KV Gunavarti says appreciate. Saurabh Tiwari says appreciate. वाह, सभी ने अप्रिशिएट लिखा है और मैं भी अप्रिशिएट करता हूं आपके इस आंसर को. वेरी राइट. इफ वी कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग देन वी अप्रिशिएट. इफ वी स्टॉप लर्निंग वी डेप्रिशिएट. दैट इज द आंसर. इफ वी कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, जैसे कि अभी हम एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कुछ लर्न कर रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे किसी सेशन में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मैंने आज क्या नया सीखा और क्या मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं. तो हम सभी ये सोचते हैं, आज भी मैं क्वेश्चन आंसर राउंड का भी वेट कर रहा हूं, समय का ध्यान रखते हुए. क्वेश्चन आंसर राउंड में आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपकी बात सुनने का मौका मिलेगा, आपके आंसर्स पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे, जो आज हमने देखा, सुना, कहा, पढ़ा, उस पे विचार करेंगे. एंड देन विल सी इफ वी अप्रिशिएट और इफ वी डेप्रिशिएट. इफ वी कीप ऑन लर्निंग देन वी अप्रिशिएट. अगर हम लर्निंग छोड़ दें तो वी डेप्रिशिएट. अगर हम स्टूडेंट रहते हैं जीवन में तो हम अप्रिशिएट होते हैं. जिस दिन हम सोच लें हमने सब कुछ आ गया, हमने सब कुछ सीख लिया, तब हम डेप्रिशिएट होते हैं. ब्यूटीफुल, थैंक यू. राइट आंसर्स, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए. नेक्स्ट इज, जो आपको ग्लास दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? Let's see the answers from the participants. I'm opening the chat box. आशीष जी थोड़ी मदद कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने Sir, DM Sharma ji says half full. Smriti says half full. Adit says half full. KV Gunavati ji says half full. Dr. Lakwinder says half full. Meenakshi Pandey says half full. Jasneen Khatun says half full. Ruchi says he filled half with water and half with air. Dr. Monica says half full. Jatin says half full. वाह वाह, मैं मानता हूं डॉक्टर रुचि का आंसर सबसे इंटरेस्टिंग आंसर है और सबसे राइट आंसर है कि दिस ग्लास इज फुल. इट इज हाफ फुल विद वाटर एंड हाफ फुल विद एयर, बट इट इज फुल. बिल्कुल सही आंसर है. अगर आप ध्यान से इस आंसर को इवेल्युएट करें तो आपको लगेगा बहुत ही बेहतरीन आंसर है. हम सभी ने बोला हाफ फुल है, लेकिन कायदे से कहा तो फुल है. आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है, लेकिन भरा तो पूरा है. ब्यूटीफुल आंसर. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुचि फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल मंत्रा इन लाइफ. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. एक नेक्स्ट मंत्रा है, फर्स्ट यू मेक अ हैबिट एंड देन द हैबिट मेक्स यू, जो कि अभी हमने देखा है. और ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जिनको आपने इनकलकेट किया होगा, जिनको आपने इम्बाइब किया होगा, डाला होगा, और अब वो आदत आपको बना रही है. पहले आप एक आदत बनाते हैं, फिर आदत आपको बनाती है. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू टीच एंड ट्रेन ऑल आवर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने डेस्टिनी, अपने भाग्य पर हम भरोसा करते हैं कि नहीं करते. तो डेस्टिनी के लिए समझने के लिए हम देखते हैं that first we need to sow good thoughts to reap good actions. Once we reap good actions, we can sow good actions to reap good habits. Once we sow good habits, we can reap good character, and once we sow good character, we can reap good destiny. तो गुड डेस्टिनी को रीप करने के लिए हमारे को अपनी थॉट्स से स्टार्ट करना पड़ता है, अपने एक्शंस पे ध्यान देना पड़ता है, अपनी आदतों पे, हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ता है. वो हैबिट हमारा कैरेक्टर बनाती हैं, हमारा व्यक्तित्व बनाती हैं, और हमारे व्यक्तित्व जो है वो हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य को डिटरमाइन करता है, उसको बनाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं क्या मैं अपने भाग्य पर भरोसा करूं कि नहीं करूं. तो उनका यही उत्तर होता है कि आप अपने सोच और अपने एक्शंस, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए,
अपनी आदतों पे ध्यान दीजिए, अपने कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। जैसे हम बोलते हैं वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होते हैं वही वसुंधरा को भोगते हैं, वही धरती को भोगते हैं। हाँ, और उन्हीं का साथ देता है भाग्य। भाग्य जो है वो कभी भी वीर का साथ ही देता है, कभी भी कावर्ड का साथ नहीं देता, कभी भी भागने वाले का, भगोड़े का, डिजर्टर का साथ नहीं देता। भाग्य जो है हमेशा वीर के साथ होता है, वीर का ही साथ देता है। ओके, मैजिक मंत्रास में आगे बढ़ते हैं। डोंट वेट द आयरन टू बी हॉट टू स्टार्ट स्ट्राइकिंग। लोग बोलते हैं ना कि जी वेट फॉर द आयरन टू बी हॉट, रेड हॉट फॉर स्ट्राइकिंग। मैं बोलता हूँ स्टार्ट स्ट्राइकिंग टू मेक इट हॉट। आप कब से अपना काम शुरू करेंगे? ऐसा बहुत हुआ कि आई वांटेड टू राइट अ बुक, सालों तक सोचता रहा कब लिखेंगे, कब होगा, कब होगा, कब होगा। लेकिन जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं, जब आप सोच लेते हैं, तो ऑफ कोर्स आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आप ऐसा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जो सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बुक के लिए मेरे को एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा, और कभी नहीं सोचा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, फिर लोगों ने बोला जी देखो इंटरनेशनली तो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में इंडियन ऑथर्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब ये मैं उनसे बात कर रहा था, बाई चांस कॉल वेटिंग आ रहा था, तो मुझे पता चला कि मेरे को नेशनल अवार्ड के लिए भी चुना गया। जब मैं नेशनल अवार्ड लेके घर आया, तो हमारी कॉलोनी में बात पता चली कि भाई हमारे यहाँ एक ऑथर रहते हैं, सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, एक नेशनल मिला है। तो हमारी कॉलोनी ने भी मेरे को सम्मानित किया और मेरे को एक शॉल दिया। जब मेरी कॉलोनी ने मेरे को सम्मानित किया, एसोसिएशन ने, तो वो शॉल लेके जब मैं घर गया, तब मेरी बीवी ने शॉल देखा, और तब उनको पता चला कि मैंने एक किताब लिखी है जो कि काफी शायद अच्छी किताब है, जिसको सम्मान मिल रहे हैं। तब मुझे मेरी बीवी से थोड़ा सा सम्मान मिला। मेरी बीवी को लगा कि अगर कॉलोनी शॉल दे सकती है तो कुछ ना कुछ तो मैंने अच्छा लिखा ही होगा। तब मुझे घर में सम्मान मिला। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट don't wait for the iron to be red hot. You need to keep on striking the iron to make it hot so that you can proceed further. और ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, an arrow can only be shot by pulling it backwards. जब आपको भाग्य पीछे खींचता है, पीछे धकेलता है, तो ये घबराइए मत, पॉजिटिव थॉट लेके चलिए कि भाग्य आज आपको पीछे इसलिए लेके जा रहा है कि आगे बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्टाइल की तरह लॉन्च किया जाएगा और आप काफी आगे पैराबोलिक मोशन में बहुत आगे जाएंगे आप। नेक्स्ट इज बिलीव इन योर वर्ड्स सपोर्टेड बाय एक्शंस। आप अपने वर्ड्स में बिलीव करिए, आप जो शब्द बोलते हैं, जो कहते हैं, उसमें विश्वास रखिए, अपने एक्शंस में विश्वास रखिए, और बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। एग्जांपल देता हूं, एक चर्च के सामने एक बार खुल गया। एक चर्च के सामने एक बार खुल गया, तो चर्च वाले जो है लोग बहुत नाराज हुए कि यहाँ लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ बार क्यों खुल गया है। तो चर्च के सब लोगों ने जो है वो मिल के प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बार को हटाओ, जला दो इसको। अचानक एक दिन बार में आग लग गई। आग लग गई तो बार के मालिक को पता चला कि चर्च में प्रार्थना की गई थी कि हे भगवान ये चर्च ही जल जाए, और ये जल गया। तो उन्होंने चर्च के अगेंस्ट जो है वो केस ठोक दिया अदालत में जाके, जी ये चर्च की वजह से हमारा बार जला है, चर्च को चर्च को बोलो हर्जाना दे। अब चर्च के जो लोग थे वहां पे वो फंस गए, उनको कहा गया जी आपकी वजह से हुआ है। उनका नहीं जी नहीं, हम क्यों हर्जाना देंगे, हमारी वजह से नहीं हुआ। उसने बोला क्यों, आपने प्रार्थना की थी, आप अपनी प्रार्थना में बिलीव नहीं करते क्या, आप अपने वर्ड्स पे बिलीव नहीं करते? अगर आपने वर्ड्स पे बिलीव करते हो तो हर्जाना दो, या बोलो कि हम अपने वर्ड्स पे बिलीव नहीं करते। तो बड़ी फॉप सिचुएशन थी जिसमें चर्च के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने वर्ड्स पे बिलीव करें, अपनी प्रार्थना में बिलीव करें, और अगर बिलीव करें तो इसका मतलब चर्च उनके कहने से जला, और उनके कहने से जला तो हर्जाना उनको देना पड़ेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम बोलते हैं दैट यू नीड टू बिलीव इन योर वर्ड्स सो दैट and you need to do lot of action so that you can achieve a lot. You need to believe in team. आप कभी भी अकेले बहुत कुछ नहीं पा सकते, आप अकेले बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते, आपको टीम में बिलीव करना पड़ता है। और टीम की फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सब मिलके इकट्ठे लोग काम करें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ टीम। आपको अकेले बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, टीम के साथ ही किया जा सकता है। वो टीम आपके स्टूडेंट्स की हो सकती है, वो टीम लेक्चरर्स प्रोफेसर्स की हो सकती है, वो टीम आपकी कंपनी में बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, उन सबकी हो सकती है। टीम के थ्रू आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ वेल। जब तक आप खुद को मैनेज नहीं करेंगे, आप दूसरों को कैसे मैनेज अच्छा कर सकते हैं? काफी सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि एक भिखारी था जो हमारे होटल में खाना खाने आ गया और उसने बुफे खा लिया पूरा। ठीक ठाक कपड़े पहन के आया था तो एंट्री भी मिल गई, और जब बुफे खा लिया तो होटल वालों ने बोला निकालो 2500 रुपए, बुफे खाया आपने। उसने बोला जी मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है। तो होटल वाले बहुत नाराज हुए, मैनेजर, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। पुलिस ने बोला हाँ भाई कैसे घुसा तू होटल के अंदर जब पैसे ही नहीं थे? उसने बोला सर गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। 100 रुपए पुलिस को दिए और छूट गया। देखा लोगों को मैनेज करना कितना अच्छा आता है। तो उसको 100 रुपए का ही बुफे पड़ गया।
आप ऐसा ना करिएगा. आप में से अगर किसी को भी इस तरफ आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज वेलकम एंड ज्वाइन मी फॉर अ very sumptuous buffet in the park, New Delhi. I'll be happy to host you in our hotel. Keep your SQ, that is spiritual quotient, intake very very high. जब तक आप spiritually अपने अपने आप को strong नहीं करते हैं तब तक आप बहुत ज़्यादा strong नहीं रह पाएंगे. Even you need to, जैसे हमने बात की कि 4 तरह की health है, physical health, mental health, spiritual health and social health. तो यहाँ पे हम spiritual health की बात कर रहे हैं. अक्सर काफी लोगों को बोलते हुए देखा गया है कि हे भगवान मैं क्या करूं, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई. तो हम बोलते हैं नेवर से ओ गॉड हाउ बिग इज माय प्रॉब्लम, रेदर से ओ प्रॉब्लम हाउ बिग इज माय गॉड. कि मुश्किल देख मेरा खुदा कितना बड़ा है, तुझसे बहुत बड़ा है. ह्यूमन बींग्स जो है ना, दे लिव देयर लाइफ एज इफ दे विल नेवर डाई बट दे डाई एज इफ दे नेवर लिव्ड. तो हम ऐसा काम करके जाएं, कबीरा जब हम जन्म्यो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए. ये एक ऐसा कबीर जी का दोहा है जो बड़ा करीब रहा है. मेरे को हमेशा लगता है कि जाने से पहले कुछ तो ऐसा काम करके जाएं, कुछ तो ऐसी किताबें लिख के जाएं, कुछ तो ऐसा छोड़ के जाएं कि कोई याद करे. अदरवाइज फॉर नॉर्मल पीपल सुबह होती है, शाम होती है, उम्र उनकी यूं ही तमाम होती है. सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, कुछ टीवी शीवी देखते हैं, सो जाते हैं. फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं. जीवन भर ऐसे ही निकल गया. तो फिर क्या अचीव किया? कुछ ना कुछ तो अचीव करना है. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू टीच. और अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था, आई थिंक कुछ महीने पहले की बात है, डॉक्टर भैया बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते हैं, बहुत वॉलंटियर रहते हैं, बहुत ही एजाइल रहते हैं, और उनकी मोटिवेशन को देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है. कुछ टाइम पहले जब उनसे बात हुई, जब उन्होंने यहाँ पे होटल में विजिट किया, तब उन्होंने बताया कि वो एक बुक पर काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी कुजीन्स के बारे में लिख रहे हैं, बहुत सारे मसालों के बारे में लिख रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट फूड्स के बारे में लिख रहे हैं. कितनी इंटरेस्टिंग चीज है. एंड इट इज सो अमेजिंग टू नो अबाउट दीज थिंग्स. आपने नोट किया है कि हम अपना फर्स्ट हाफ जो है लाइफ का, वो पूरी जिंदगी आधा जो है वो कमाने में लगाते हैं, कमा लेते हैं बहुत सारा पैसा, और लाइफ और हेल्थ को एकदम पीछे धकेल देते हैं. और जब हेल्थ एकदम पीछे चली जाती है तो जो पैसा हमने कमाया है उस हेल्थ को रीगेन करने के लिए लाइफ के सेकंड पार्ट में खर्च कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना. अगर आप देखिए नॉर्मल किसी एवरेज कॉर्पोरेट हंचों को, तो वो क्या करते हैं कि 30-40 साल तक, 50 साल तक नौकरी करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और फिर इतने बीमार हो जाते हैं कि हेल्थ को रीगेन करने के लिए जो पैसा कमाया है वो अपनी हेल्थ पे दोबारा लगा के रखते हैं. उनकी ऐसी लाइफ खत्म हो जाती है. तो अपनी अचीवमेंट्स को मत भूलिए, अपने उन कामों को मत भूलिए, एक्शंस को मत भूलिए, अपनी हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को, अपने शौक को मत भूलिए, और उनको हमेशा इंटैक्ट रखिए. और बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपके शौक क्या हैं. बड़े वेरिड शौक हैं, बड़े डिफरेंट शौक हैं, बट एक शौक ऐसा है जिसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम भी शुरू किया था. दैट इज माई फोटोग्राफी. So I roam around a lot. I visit a lot of places. I take a lot of photographs, and I put some of the photographs on the Instagram so that I can share with the people what exactly I have learned. Great. So we'll stop here. समय का ध्यान रखते हुए लगभग 11:15 होने वाले हैं. We'll stop here because we need to keep some time for question answer round. If there is any question, you can ask. Before that, I just want to show you a slide of the two books which have been released in recent past. The name of my first book is The Secrets of Success. उसी का हिंदी वर्जन है सफलता का रहस्य. आप हिंदी में पढ़ना चाहें, अंग्रेजी में पढ़ना चाहें, मोस्ट वेलकम. Once you read the books, you can share your feedback on deepakbahal.com. Sorry, deepakbahal.in, which is my website. इससे पहले जो मेरी 2 बुक्स आई थी मार्केट में, जो अभी भी अवेलेबल हैं, वो हैं विनिंग इज एवरीथिंग, जो कि बेस्ट बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड की विनर है, और उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है सफलता की और 10 आसान कदम. So if you pick up any of these books, if you read any of these books, you are most welcome to share your feedback with me, and I'll be very happy to publish your feedback in the upcoming books. So thank you very much. Or now I am absolutely open to any of the questions. Now I can open the chat box. I can see the chat box. उस टाइम मेरा PPT चल रहा था, मैं chat box नहीं देख पा रहा था. So अब मैंने अपना chat box खोल लिया है. Any questions from your side? That has been a fantastic session, sir. We would like Thank you, to sir. have questions from audience. Should you have any questions coming to your mind? Rajat Gupta ji mentions it was really a life-changing session, sir, and I must admit nothing is better than this. What could have happened today? Amit Thank you. Atriji says learned a lot from this session. And Uh, Anita ji asked that, sir, are these books available on Amazon? yes. Yes. Yes.
Yes. These are available on Flipkart, Amazon, everywhere. These are available. India में हैं, US में हैं, Australia में हैं, UK region में हैं. All regions these books are available. Thank you very much. और बहुत अच्छी feedback. Thank you very much रजत जी, रजत गुप्ता सर. Thank you very much. बहुत अच्छा feedback है. अमित अत्री जी ने बहुत अच्छा feedback दिया. Thank you very much. Dr. Monica, thank you. नीलेश जी कह रहे हैं about this Park Hotels management training program, how to motivate students. Yeah, we are going to start the management training program. I think 2-3 महीने में शुरू होगा, हम आपको बताएंगे. 2 साल का प्रोग्राम होता है जो कि बॉम्बे में ट्रेनिंग होती है और उसके बाद एनी ऑफ द पार्क होटल्स में उनको प्लेस किया जाता है. नीलेश जी, डेफिनेटली आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू. रजत जी कह रहे हैं said that आमिर खान वॉइस टेक्सचर इज ऑल. ओरे बिल्कुल ठीक. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मैं भी मानता हूँ. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि आमिर खान की वॉइस मुझसे मिलती है. मेरी आमिर खान से नहीं मिलती है, उनकी मुझसे मिलती है. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया. थैंक यू. रियली एंगेजिंग. थैंक यू. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. थैंक यू. वंडरफुल सेशन. थैंक यू. हाँ, डेफिनेटली अनीता जी, आई विल शेयर माय पीपीटी विद डॉक्टर आशीष दहिया जी. आशीष दहिया जी कैन शेयर द पीपीटी विद ऑल ऑफ यू एंड आई विल डू दैट. Great. Thank you, sir. It has been a fantabulous session, and I would like to request all the participants to switch on their cameras. I could see Anant Verma ji, Dr. Divya, Meenakshi Pandey ji, Rajat Gupta ji on screen so that we can have photos with an iconic personality, Deepak Bahel saab. And let me click those photos quickly and put them into the WhatsApp group curated for that. And let's see how many smiling faces do we get on screen now. One, I have clicked. Just give me a moment to put it into your WhatsApp groups. Okay, let me click another. Smile. Fantastic. So now I would like to request Dr. Divya for her words of gratitude. Dr. Divya is Additional Director, Center for Life Skills and Soft Skills with me. And together we make a team, and luckily the team is very composed and we are able to do wonders so far. So over to Dr. Divya for her words, please. Dr. Sab, you are not audible. Well, by the time Dr. Divya joins, let me share that, respected sir, we take this opportunity to express gratitude for joining us as a distinguished speaker in the AICTE ATAL online faculty development program on life skills for blissful life, excellence in imparting skills for hospitality and tourism sector. And sir, I'm delighted to share that the participants hailing across states of India were greatly enthused by your session. Your valuable insights into life skills have no doubt helped the learners in their journey of life skills for blissful life. We hope that you'll continue your benign support in our future endeavors as well. And we am I audible now? Yes, you are absolutely audible now, I'm ma'am. so sorry, I was not audible at that time. I think that I had a problem with the device. In fact, Professor Ashish, I would thank you first for giving me this opportunity to thank Mr. Deepak Behel. Sir, I have been listening to your entire talk since morning, though I joined 5 minutes late because of some assignments that I had in my hand. But then the way you have been expressing the entire presentation, I felt as if we are listening to some guru, Dharam guru. You know, the way you have enlightened us, it is very difficult to imagine you sitting at such a strategic position and being so cool and calm and, you know, understanding every nitty-gritty of life. The way you have explained with your small little examples from everyday life, छोटी-छोटी stories से जो आपने बताया है वो वाकई में मार्वलस था सर. और आपको सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि वी प्रोफेसर्स नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग न केवल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बल्कि आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर आशीष दहिया कि सर को जो है हम लोग अपनी स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम में भी जो है जरूर बुलाएं, क्योंकि जिस तरह से सर ने मोटिवेट किया मुझे तो आज लग रहा था लेट मी स्टार्ट अफ्रेश, एक और करियर दोबारा से बनाते हैं. So and you are so full of positivity and energy sir. हर चीज में आपके ना, in fact you would be surprised to know कि मैं आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द हाउस टुडे, घर से ही ऑपरेट कर रही हूँ मैं. तो मेरे हस्बैंड भी आपकी टॉक को सुन रहे थे
And he was also like participating के भाई कमाल है दिस प्रोफेसर आशीष ने बहुत अच्छी ये एफडीपी ऑर्गेनाइज की है और इतने लर्नेड लोग जो हैं इसमें आ रहे हैं और लोगों को एड्रेस कर रहे हैं. इट वॉज मार्वलस और हम दोनों ने ही आपकी टॉक को इनफैक्ट एंजॉय किया है एंड आई विश कि इसी तरह से जो है सभी पार्टिसिपेंट्स ने बिकॉज वी हैव लॉट मेनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 24 states across the country. Great. So I believe that they all have listened to you and they all must be, because I could see the reactions also that were coming in between the messages in the chat box. Everything was so superb. And so we really look forward. अभी आप ये देखिए कि सभी अभी भी ताली बजा रहे हैं आपके लिए. Thank you very much. और मुझे लगता है कि दिस सेलिब्रेशंस यू नो दे आर मेंट फॉर यू. आप जो है वाकई में यू डिजर्व ऑल दिस प्रेज सर. और इतना किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया है. हर एक छोटी छोटी, आई वाज लुकिंग एट द स्लाइड्स, दे वर सो सिंपल एंड सो मीनिंगफुल. और इतना आपने उसमें हर छोटी बड़ी बात को जिंदगी में जो हम उतारते हैं, छोटी छोटी चीजों को जिनको हम ध्यान रखते हैं, उनसे लाइफ कितनी चेंज हो सकती है, एक नजरिया कैसे बदल सकता है, कैसे हम नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्पेशली आपका जो ये एग्जांपल था कि हाउ बिग इज माय गॉड, यू नो, ओ डियर प्रॉब्लम, हाउ बिग इज माय गॉड, ये तो कमाल था सर. एंड इनफैक्ट एवरीथिंग दैट यू स्पोक टुडे वाज आउट ऑफ द बॉक्स. और इस तरह से अगर हम लाइफ को सोचें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें वही जो आपने बीच में कही थी कि नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, हम दोनों जगह अपनी संस्कृत और पंजाबी और हरियाणवी लगा देंगे. एंड दैट वाज सो वंडरफुल. और मैं चाहूंगी कि इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ हम बार बार हमें मिलें. So thank you so much sir for sparing time out of your busy schedule. और आप बहुत busy रहते भी होंगे वहाँ पे. So it is so very nice of you to have spared time for all of us. And I would like to thank the participants also who have been listening to you, who have been reacting in between, giving answers to your questions. Everything has been marvelous. And in the end, I would definitely like to thank the media also who has been supporting us all throughout and publishing news of this FDP throughout. And of course, Professor Ashish Daya for organizing such a valuable FDP for all of us. Thank you so much, everybody. Thanks a lot. Thank you, sir. And please do join us whenever we request you, sir. Please do spare time for us. Thanks a lot, Mr. Deepak Bahl. Thank you so much. Sure. Thank you very much, Dr. Divya. Thank you very much, Dr. Dhaya. Thank you very much, everybody, all participants. And it was very interesting to interact with you all. Thank you very much. We'll meet soon. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. It was a pleasure to have you on board. So, ladies and gentlemen, you were listening to an iconic personality, Mr. Deepak Bahl, a very seasoned director of human resources and a thorough professional and a good human by heart. So, after getting valuable insights from persona from corporate, let us look forward for listening words of wisdom from a person who is known for his contributions to the world of research, hospitality, and tourism. So I'm talking about none other than Professor Mahendra Chand. Yes, a seasoned professor from Department of Tourism and Hotel Management, Kurukshetra University, Kurukshetra. A gentleman who has been known for his contributions in the world of hospitality and tourism. And when I say his contributions in the world of hospitality and tourism, that means that there must have been something incredibly to his credit. Yes, he is the person behind India's only journal of hospitality and tourism, which is Scopus indexed. So he has been the founder editor of International Journal of Hospitality and Tourism Systems. And it's a matter of pride to share that this journal is now almost 15 years old, started its journey from 2008, and the early volume of 2022 is right online. And it is his commitment and dedication that this journal is the only Scopus Index journal in the list close to 125 journals of hospitality and tourism across the globe that from India, Professor Mahendra could make it happen to be in the list of Scopus indexed publications. So how amazing. And I feel lucky and blessed that Sir has been my mentor. I completed my PhD under mentorship of Sir. He has been the Directorate of Distance Education at Kurukshetra University, Kurukshetra, has been with various positions
at administrative level at Kurukshetra University, Kurukshetra. A widely traveled person and has been a true nation builder by contributing towards education, hospitality, and tourism. With these few words, I welcome respected Professor Mahendra Chand sir to share his words of wisdom and ignite the minds. Sir, I am happy to share that the participants in this AICT ATAL program are from 24 different states and union territories of India and are keen to listen to you. So, a hearty welcome and namaste to you, sir. And over to you for your session, please. Professor Dr. Ashish here, thank you very much for inviting me to just interact with our colleagues. I'm not here to discuss anything, any new thing, but I want to learn many things from my junior colleagues. So they are the budding research scholars contributing towards the tourism and hospitality industry. And I hope that uh, I will get many things, many ideas, systems, approaches from these fellow colleagues. Thank you very much. Just I would like to share my screen. Is it possible? Did you share your screen? We are Okay, not. I'm trying. Visible or not? Not sir, not yet. Not visible. Yes, sir. It's coming now. No, It's visible. Sir, It is now, sir. visible It now. is now It's, visible. it's visible now. It's visible now, sir. Okay, okay. Thank you very much. So the formally the topic assigned to me by Professor Ashish Daya. So this is topic is related with the research skills, trends, and practices in Indian context, right? So, friends, I think that you're all the faculty members engaging in both teaching and research for the last many years, right? So, some points which are in my mind, I would like to share you so that we will get the new ideas to proceed further to contribute towards the our this tourism and hospitality academia. Specifically, today I would like to just first at the outset, I would like to share you most of the times we people in India believe in jugaad and chalega. So our philosophy is like this. And on the other hand, we are also adopting the old saying like that, simple living, high thinking. When we are focusing on the jugaad and chalega, so where is the high thinking? So we are the being the teachers. So our basic purpose is that to produce quality. Basically, I'm focusing on the quality research so that our subject, tourism and hospitality, is very young subject. We can say the youth. So our basically responsibility to contribute towards this subject is more. Even we are the people, those who are the senior positions for the last many years, but maybe more than 2.5 decades contributing towards this. So we are supposed to provide you the platform for the growth and for the improvement as well as to contribute towards the this young field, right?
So let us start with the certain topics, certain ideas related with these issues. So our first thing is that is everybody layman knows that when we talk about the tourism industry, so during the last recent decades, we can say the academic community in tourism and hospitality has recognized the importance of this research. Such ongoing recognitions related with this our tourism and hospitality industry, more supported by the different type of articles, papers published by the different scholars. Even our academic faculties, they are conducting various types of research in order to contribute towards the knowledge advancement, self-evaluation. Some people, they are like me, they are thinking that it is a self-satisfaction as well as to contribute towards the our field. So some people, they are contributing towards the career progress. Job requirements are there. Sometimes those people who are working in the private universities, they are supposed to contribute one or two papers in the scopus research. So different things are there. They are contributing toward this. Interestingly, tourism and hospitality uh, academies, yeah, faculty members, they are spending more time on research when they are moving towards the high positions. When we are at the low position, like the assistant professor, associate professors, our basic purpose is to more focus on the teaching, engaging the students in teaching. When we are moving towards the higher position, so our basic purpose is to contribute towards the research. What if we see the actual practices in our academia? So most of our senior faculty members, they are engaged in administrative position rather than conducting the research. So that we are unable to provide you good platform to grow further, right? So in fact, good performance in research is also vital for the institutions. Most of the institutions, they are just getting the funding, they are getting the ranking, they are getting the different type of grades through the high quality of research. Like आपकी NAC है या different other agencies है, so these things are there, right? So basically, the research outputs generated by the academy can also enhance the public image. Basically, our universities and educational institutions, they are supposed to contribute to the society, right? So they are becoming the knowledgeable center, the new center for the contribution toward the society. Hence, it is not all universities, academic institutions, highly, most of these things, they are emphasizing or more concentrating on the academic research. So just moving towards further, due to the last decades, we can further assess that most of the research contributed by the different peoples, growing methodological concepts, conceptual in the specifically our area in order to broaden this scope in the contemporary research. We know that everybody, those who are, whether they are working in the industry, we are working in other areas, everybody is natural researchers. Indeed, research skills are our ability. When we talk about our skills, research skills, our ability to find an answer to a question. Even in, if you say the education institution, if you say the army institution, if you say the police line, if you say in all any other areas. So everybody is doing the research, they require the research, different angles, because everybody is just trying to find out the solution of a problem. So in case of the research skills, so our basic purpose is to find out the solution of the different type of the problems, right? Getting the information, reviewing the information, analyzing, then interpretation of the information in such a manner that that solution will help the society as well as the communities for the growth, right? So these issues motivated me to think over, think about this topic. So we selected this topic on the basis of these skills. What type of skills are there? What type of skills required? So just I'm trying to identify these skills from the various types of researches conducted by this, because we are supposed to conduct the research. So I'm trying to
just capturing what the different scholars have contribute toward this and what type of skills they have used to contribute the research, right? So let us start. Basically, our today's uh, agenda is specifically related with our topics which are concerned with this, like the trends, practices of tourism and hospitality skills, research skills, contribution of schools of hospitality thoughts toward the research skill development, challenges in tourism and hospitality research, emerging topics needed to be researched. So we can identify the various topics emerging which are related. Maybe the wider list is there, but we can find the few topics which are more relevant in present context. Then how to combine the theory and practices, because we have to derive out of these, we have to derive the different type of competencies or skills, even due to the natural calamities like the COVID-19, different type of skills emerged, right? Otherwise, we were not supposed to teach, interact with the people through online. But due to this, we have developed this type of skill also. कुछ लोग ऐसे रह गए जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उन्होंने कम डेवलप की ये स्किल, तो बाकी बहुत सारे लोगों ने काफी कुछ डेवलप कर लिया है, राइट? So let us start with this. This is our agenda specifically. So I would like to just address the few areas which are more prominent before discussing the trends and research. Actually, when we talk about the tourism research, notwithstanding, there has been comprehensive, multi-journal, bibliometric analysis of tourism and hospital research. However, there have been number of research publications through review or literature you can collect, research paper you have collect, right? And different type of conferences you can collect this type of things. But much of the early work, when we see focus on the different aspects of tourism and hospitality, specifically proposing and reviving the concept of tourism and hospitality, right? Through the debate of theoretically as well as the practically. Some aspect, philosophical aspect, they have also identified that these. Indeed, some authors have been highly critical towards the schools of hospitality thoughts. Basically, the schools of hospitality thoughts kya hai? These are the different type of journals, because every journal has its own scope and nature. So on the basis of nature, on the basis of different research scholars, they have divided into that. These journals are like this. Some areas are included, we will discuss later on. These are the schools of, basically these divided into on the basis of the various types of journals published in India as well as the abroad. India, very few journals are there, but at the international level, globally level. So on the basis of that, the schools have been divided. On the other hand, some schools, some people or scholars, they have more concentrating that we are developing theoretically aspects to explore new things which are more relevant in the present context, right? However, if we see the majority of these researchers moving to test earlier theoretically as well as the practically. Tourism and hospitality industry mostly presented or portrayed as a new subject of research and activities in universities. But despite its relative youth nature, is already generated substantial amount of knowledge. During the recent decade, numerous articles,
research papers, book conferences recorded under the subject head of tourism and hospitality. What most of the knowledge generated or produced in these ways are different researchers, methods, techniques, right? What might be called as additive knowledge. Now, what is additive knowledge? Knowledge that seeks to add as well as adapt theories, models, approaches, systems, insight, or understanding about the phenomena of tourism and hospitality industry. Such an inquiry is perhaps more relevant, more necessary, essential in the present context, which is witnessing an explosion of information, largely unable to rapidly development digital communication system. Even the media, for example, a Google search for the term tourism and hospitality generates millions of hits. If we are searching this type of things, then you will get the millions of hits, right? These includes all sort of representation of the tourism, hospitality, including websites, images, blogs, then videos, discussions. The question of web-based information immediately raises numerous questions that needs to be clarified. But on the basis of this, just I'm touching only two questions, which are more important. The first question is about the scope and framing, and this relates to what is meant to the concept of tourism and hospitality, how we frame these concepts, and hence what are the boundaries of the concepts, what are the consequences of such framing, and what lies inside and outside of our field of inquiry. The second question that is very important for clarification is about the meaning of knowledge itself. This concerns with what is knowledge, what is it to know something, and how do we distinguish between truth, assertions, lies, and propaganda. So these are the two type of major questions which are specifically related with the different type of research conducted during the past. In order to understand this paradox, we need to discuss the trends, patterns, the practices of tourism industry research in India. Right? Let us start with this. This is our things that just we are going to discuss with this, that trends and patterns or practices tourism and hospitality research. Specifically, this is divided. This part is divided into four categories. If we see the past research conducted by the different scholars, right? So this is divided into four parts. The first part is theoretical and methodological approaches in tourism and hospitality research, right? The second part is derived from the subject and contextual themes in tourism and hospitality research. Third part is research trends is divided into the perspectives, oblique approaches to tourism and hospitality research. Then fourth part is provided is on the basis of location, geographical area, the pattern, the trend of tourism and hospitality research. The overall, the whole things, whole past researchers, because we are trying to identify the certain level of the skills which they employed and whether this type of skills can be developed and how to develop that type of skills, right? Sometimes the people they were saying that हम भी पहले सोचते थे कि जो हमारे से पहले लोग रिसर्च कर गए हैं आगे हमारे टाइम में शायद रिसर्च नहीं बचेगी, पर ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. New things are emerging day by day. So every time you have a different type of topic. Let us start one by one.
So when we talk about the first phase of this, particularly in methodological approaches in tourism and hospitality research, basically these are derived from the various studies, past studies, right? Because we have to frame the platform for that. The first thing is the case study. Now, in understand what type of skills we require to produce a case study, right? So what is the basic core aspect of this, like the descriptive and explanatory analysis? Specifically, this type of analysis, this type of skills are required to conduct the case studies. Basically, I'm not going to discuss with you that this type of case study is, this is the format of this case study and how this is conducted. What I'm just going to identify what type of skills are required, right? So when we were the students at the when we were the student of master degree, so our teachers, they were used us to teach us through the case studies. So before that case study, we need conceptual descriptive clarity about the concept, about that particular case. So we can explore that case. So this type of analysis, descriptive skills we require. Then the second type of studies we conducted, empirical study. Basically, empirical study is supposed to contribute to theory development, to direct observation, testing, analyzing qualitative as well as quantitative aspects. It means that when we talk about the theoretically skills, observation, testing, qualitative and quantitative, if in order to conduct the empirical study, this type of skills are required. And I think that for this purpose, conceptual clarity is very much, right? It means that when we are uh, learning, developing the learning skills to enhance this type of things. Then next is critical review. When we are conducting the review of literature, so our basic purpose is to drive something which are very pertinent to the present studies. So in order to enhance the importance, in order to enhance the need for the present study, so critical review, again, this constructive view, this sometimes the people are saying the critical, many times we are saying the critical thing. What it is a constructive view, that what has been done by the previous author and what steps they have overlooked, more emphasized, more demonstrated, right? If there's some points which are has not been emphasized or overlooked, so that will help you develop this type of the critical skills related with this, right? Next, developing a theoretical model. Right now, we are using the different type of research methodology like the SAM. So different type of models, alternative models, conceptual model we are developing. So development of this, specifically developing these models will assist the industry. In most of the physical sciences, the models developed by the researchers, they are directly used for the industry. Same way, if we are developing the model, so it is the different type of skills which needs to develop the models, so that this model, even we know that these in social sciences, what of the model we are suggesting, so these models are dynamic, they're not static, they are developed or suggested with the intention that they will assist the business that rather than create the hindrances, right? Next are this the comparative study.
This is the comparing cross-cultural, cross-nation. So what other industries adopt, but different other industries are adopting. Suppose if we are going to compare the tourism industry with the other service industry. So what the other industries are doing. Even we know that the what are the models, what are the theories, what are the approaches, or even the research methodology we are using the tourism and hospital industry that is rooted from the manufacturing industry, right? What the context are applying that changed. Nature of our research is changed because over the year industries nature as well as scope changed. So movement of the industry from manufacturing to the service industry and service industry to the tourism and hospitality industry. So our things are, so we are going to compare these, what other, because tourism industry and the hospitality industry is closely associated with the growth and development of other industries. Therefore, we need to, and because we are dependent, we are not in a, we cannot operate in an isolation. So we are dependent. So different type of skills we required. The people are coming. Sometime आगे आएगी हमारे पास जो different subject economics से आएगी, industry से आएगी, commerce से आएगी, management, marketing से different type of skills जो required है हमारे पास, right? So, right, most of the journal they are focusing on the comparative study, comparative nature, cross cultural natures, right? So cross country nature, right? So different aspects of that. In the last year, we conducted a study related to the management, accounting, and tourism and hospitality industry. So we compared India and Canada. So we got very interesting findings from the Canadian aspects, right? So automatic people they are adopting the comparative studies, the comparative skills, how we are going to compare. We need to understand both the things, right? Next part is the review of literature. I think everybody is very clear about this. This is the critical constructive way that is driving, because further search is the review of literature is the foundation of that, because we are driving even the research methodology from the review of literature, even the variable we want to test further, राइट अब एक चीज और हमारे आएगी आज की डेट में, कोई आप चीजें नई चीजें स्टडी करते हैं, राइट? सो बेसिकली फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग द आइडिया. So further on the basis of that we can proceed for this. So this is the benchmark for us that sometime when we are going to suggest our findings or interpreting the results, we also compare that with the past studies, right? Then theoretically framework, building, developing, adopting the framework that can be used to address the different type of issues. We have the different type of issues. Sometimes पुलिस में कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले भी, आर्मी वाले भी, पुलिस वाले जब कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं केस को, तो ये हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, थ्योरेटिकली मॉडल डेवलप करते हैं. Then on the basis of that they started the work. So same way, so we can framework, different issues are there. So theoretically हम उसको framework develop करते हैं, then after that we move that. So theoretically now see things, the different type of skills that we have. It means all things are based on the learning, continuous learning process. और आज की डेट में हम गूगल बाबा पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं. We are not based on natural learning aspects, right? Then theoretical model development of methodological techniques, tools to enhance the analysis, certain issues in tourism research. Theoretically concept development to reconceptualize of tourism hospitality research through the application of theory. Here we have the option to apply the concept used by the different subjects. How different subjects are using the tourism concept. Some concepts which are borrowed from different subjects, because each subject has its own type of skills, competency, and that is used in tourism. So when we are comparing, like the economics you have, the commerce you have, the management you have, the history you have, right? So different subjects are there. Sometimes food nutrition is there,
there, food technology is there. Different subjects are there. Some are right now people are talking the food tourism, right? So these type of things we need to develop. Then the historical perspective analysis. This is the basically related to the past events, occurrence of the various types of past events. Sometimes this is the view related with the historical events, historical research, and the past researches which are recommending the further research. So that is giving you different type of direction towards this. Next, this part is related with the subjects. What are the subjects? In the first aspect, we did different type of the theoretical model, methodological approaches. Now here the subject, the different type of subject emerged, and they require the different type of approaches, right? The first, suppose we talk about the tourism, the concept, the tourist development models, approaches, the relationship with other subject. Then people, they are saying the sustainable tourism practices, general practices we have, then the theories we have, the different type of trends are there. Right now, the people, they are saying that after post COVID, how we can develop the sustainable tourism. The people, they are suggesting the sustainable tourism management, right? So maybe different aspects are there. Then the nature-based tourism, right? So this is the wildlife tourism, adventure tourism, etc. So different aspects are there. Then certain World Heritage Sites, national parks, marine parks. Right now, the people, they are talking about the dark tourism, right? So different type of aspects are emerging. The Iceland destination, small Iceland, then ecotourism, right? Then we are focusing on the developed and developing countries. So how they are doing this. Then the travel intermediaries, travel agency, tour operator, tour package, itinerary planning, different aspects are there. So these are the emerging, the people, they are conducting the various types of this, the different research methodologies they are using. Then rural tourism, hotel sectors, the food, resorts, housekeeping, front office, different type of things, even F&B control, F&B management, then sports, recreation aspects are there, climate changes are there, heritage, archaeological sites, heritage sites, world heritage sites. So these are the different subjects emerging, and they require different. Then cultural tourism, the tourist typology is there. 3 or 4 days back, I just read maybe 1 or 2 newspapers related with that, or the maybe the some magazines related to tourism. They are saying that the typology of the tourists, conscious travelers, emerged. So the different types of things they are emerging, right? Then transportation. Then next, third aspect is related with that perspective approaches to tourism and hospitality research. So this is specifically related with the how the different management approaches are there, the planning, management strategy, right? Behavioral approaches, behavioral sciences, tourist, resident, business behavior changes, motivation, perception part is there. The people there are right now conducting the various studies on the perception, the tourist, resident, community, stakeholders, right? Even the students, perception, different other areas are there. Then tourism research theory methods, methodological approaches, including different type of derived from the ontologies, from the different other subjects related with the approaches to study the sustainable tourism, right? Indicator and measurements, right? Sometimes measuring the impacts, tools and approaches to sustainability, assessment, indicators, limits to growth, GIS. Then moving towards the policy, the people from public administration or the management, they are just focusing on the government, how the government is thinking, the government and the
the politics, the governance, then the stakeholder collaboration, network theories, partnership theories, communities participation, then impact studies, different type of impacts we have. The people there, some focusing on the impacts, right? Then the visitor management, the interpretation of visitor management, the visitor education, marketing, HR, right? And different other subjects are there, economics, accounting and finance, because right now they are focusing on the different taxes and practices, and even the environmental accounting is also there due to the different changes in business environment. Then this is the part of this certain equation where this country majority of the research conducted. So we are just listing of the top. Which area the people they are coming, like United Kingdom, Australia, USA, China, Canada, New Zealand, Spain, India, South Africa, and Netherlands. These are the few countries which are directly focusing on this. In the past content analysis, the people they are stating that these countries are more focusing on this, right? Then different authors from this Northwest Europe, North America, South and Eastern Europe, sub African regions, Northeast Asia, Northern and Central Asia, Southeast Asia, North Africa, and the Middle East, South America. Geographically, if these are the authors, they are contributing towards this. Now, if you are contributing the good research, so automatically they are listed. Next, our topic heading is the contribution schools of hospital thoughts in research skill development. I've already discussed that in schools, basically these are derived from the nature, the scope, the trends, the pattern of various tourism and hospitality related journals, right? Producing different type of research papers. Because every journal has its own trend, own nature. They are demanding different type of paper, right? So since the inception of that journal, they are focusing on the same line, having scope, nature, and they are producing this type of things. If you are writing a particular article to this journal, a particular journal, so you're supposed to follow the guideline of that particular journal. Here, regressive review process, as well as the content development process, right? So over the years, on the basis of that, we have, हो सकता है कि आपके इसमें ना हो available these things, but based on the different types of journals produced by the different countries, right? Just I'm not going to analyze the basic things of these about the journal. I'm not going to suggest you that this journal under this school this journal है. But basically, what type of skills they are focusing, what type of article they are required. मैंने बहुत पहले 2000 के करीब एक आर्टिकल भेजा था अमेरिका में, तो मेरे कोलीग थे, उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल को वहां नहीं छापेंगे, दे नीड दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने भेजा उनको, तो उसके बाद रिव्यू किया गया, फिर दोबारा मैंने उनको 3-4 बार रिव्यू करके उनको भेजा, तो दे accepted it because the people designed as per their requirements, right? Themes, theme, developmenting things are different, right? Hospital science school. Now see this. This the first school is that is science. This is the basically what type of skills they are focusing. जैसे आपके पास different hospitality, food technology journals हैं, right? So corner school की journals हैं, बहुत जैसे school, the approach is purely based on the facts, right? So this type of theory, they are basically natural and physical sciences using the model and theory. The main focus of these
things, they are focusing on developing the generic research skills. So we supposed to develop this type of skills. I think already the different type of skills, you have the different type of topic, different authors related with the describing the meaning of these type of skills. So our basic purpose is that how, what type of skills are required, right? Then next, hospitality management school. Basically, the purpose of these, they are based on their academic contribution is towards the empirical and quantitative research. So they are focusing on all the function. Management is specifically related with a different functional area. So they are required with functional area like our hospitality, front office, housekeeping, then F&B control, and purchasing, different type of other areas, right? So these for this type of journal, if you are writing the article, so you need the functional. It means the functions are interrelated. The organization, they are interrelated. So in case of the organization structure, just like the pizza type of things, because each and every aspect is interrelated, interdependent, right? So the functional skills are required in this. Then hospitality studies schools, basically based on the behavioral part, the qualitative aspects, the most of journal like annals of tourism, right? Annals of research. So most of the journals, they are basically the behavioral aspect are there. साइकोलॉजिकल जर्नल बहुत अच्छी है, एचआर की जर्नल बहुत अच्छी है, जो बेसिकली उन्हीं चीजों से रिलेटेड करती है, राइट? सो देयर सोशल स्किल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अभी कुछ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हॉस्पिटल कंटेम्परेरी हॉस्पिटलिटी रिसर्च जो मैनेजमेंट की जर्नल है, उसके पीछे एक इशू आया था जो उसमें social network analysis specific issue, specifically related with the networking. वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे भी आएगा, थोड़ा स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द नेटवर्किंग स्किल्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स, जो आज की डेट में नैक भी डिमांड कर रही है. यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दे आर आल्सो डिमांडिंग बहुत सारी चीजें कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, राइट? देन हॉस्पिटलिटी सिस्टम स्कूल्स, राइट? दिस इज द स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द engineering part, developing analytical skill, technical skills. Basically, the school has a strong theoretical underpinning as well as the potential to make a significant contribution to the understanding the complexity of that, like HR है, marketing है, finance है, ठीक है, दूसरे areas है, ठीक है, related with the set of this. The focus on basically focusing on the technical or analytical type of skills, right? This is a new type of school. This is related with the collaborative part of this. So right now, because the university, like through the MOU, we are going to develop, we are even contributing. हम लोग हिंदुस्तान पे कुछ रिसर्च शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी मेरी, आइडियोसिंक्रेटिक डील पे या टूर ऑपरेशन पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, या कुछ और जो पढ़ी हुई, कोई यूके से, कोई ग्रीस से, कोई अमेरिका से, 3-4 ऑथर हम होते हैं जो उसमें काम करते हैं. तो सेम वे वी आर डेवलपिंग फ्रॉम द इंडियन पार्ट, देन ग्रीस, देन यूएसए, देन यूके, and we are going to compare the different studies, different countries on the basis of that parameters. So I'm responsible to collect the information from Indian context. They are collecting the information from their own this country, and after that we are writing different specs from suppose I'm from Indian side, so I'm writing from the Indian sides and they are writing from the UK side, and then we are going to compare the things. Right? Sometimes the people, they are saying that हमारे पास resources नहीं है. ठीक है, starting में हमारे पास resources नहीं थी, पर फिर भी क्या होता है, collaborate करने में we are going to pool the resources. When the resources are pooling, automatically we are going to contribute to good research, right? So this is the recent contribution towards this, right? Basically, this
focusing on the collaborative skills, innovative, strategic networking, social network analysis, जो आज की डेट में आगे ज्यादा कंट्रीब्यूट हो गया. जैसे जो मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स कर रहे हैं. So this is related with that. The turning point toward this, right? Next part. Now the challenges in tourism and hospitality research skills, right? So actually it is very difficult to put all the challenges to one basket because there's a numerous challenges. Every subject, every area, core area of tourism and hospitality has its own challenges. And on the other hand, how the research is, what type of research the researcher is going to conduct, right? However, we have the general points related with it. Suppose somebody is conducting the research on HR practices. Somebody is conducting the F&B practices. Some going conduct the research on bar practices, restaurant practices, or maybe the front office practices, or maybe different other aspects of related with the tourism sites. So different things are there, different type of challenges are there, and these challenges assist us, help us to develop different type of competency, different type of skills. मैं कल बच्चों से डिस्कस कर रहा था क्लास में, तो मैंने उनको कहा कि ट्रैवलर से पढ़ा रहा था पेपर, तो मैंने बच्चों को कहा कि इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी, उसका कुछ उनका फंक्शन की बात कर रहा था, तो इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी रही अब तक आज की डेट में, क्योंकि right? So naturally बात है कि different type of due to the different type of environment, we cannot change the external environment. We can change the internal environment. We must have the ability to accept the changes and change accordingly. That external environment is, on the other hand, external environment is forcing you to change. The market is forcing you to change. You have to change accordingly. So we are going to just listing the few challenges which are our research scholar is facing this. The size and scope of the research, right? Practically, the size and scope determine are this. Sometimes people are saying that it is the ATIC studies. Sometimes the people are saying that it's AMIC studies. Automatically, you're confining. When we are studying the various types of articles in the journals, like chronic, इसमें different type of journals में पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे micro level की studies हुई है, हो सकती है, possible है. There is no denying that you cannot conduct a study on micro level. So different type of things are there. It depends upon your vision, your objective, your directions. All right. So it depends on size, maybe narrow, maybe wider. Sometimes the people, they are conducting a study on the basis of the, sometimes like the case studies, only one unit you are studying, right? So that is possible. Then second is complexity of collaboration. Right now, it is very difficult. Even during the past, it was very difficult to collaborate with others. Even educational institutions, they are unable to collaborate with other educational institutions. Even we teachers, we researchers, unable to collaborate with others. Right? So in most of the sciences, the collaborative things are there. ठीक है, इवन स्टूडेंट और गाइड के साथ भी कोलैबोरेशन नहीं होता है, दो रिसर्च स्कॉलर के बीच में भी कोलैबोरेशन नहीं होता है, बिकॉज कोलैबोरेशन कहाँ होता है कि स्पेसिफिकली वी हैव टू आइडेंटिफाई
कि भाई किसकी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी क्या स्ट्रेंथ है। अदरवाइज क्या होता है कि हम पता क्या बोलते हैं, भाई लिख देना, मेरा नाम लिख देना, चलेगा, जुगाड़ है, राइट, मेरा नाम भी लिख लेना भाई, ठीक है चल जाएगा, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन बोथ collaborating means that we are strengthening our knowledge horizontally as well as vertically, pulling the resources. So if the person is assisting, मुझे किसी ने कहा एक बार कोलैबोरेट करने के लिए, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मुझे कहा कि देखो ये रिसर्च मैथोडोलॉजी में क्या जी आप सैम लगाते हैं मोस्टली, सो लेट्स कोलैबोरेट विद, आपसे हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मैंने कहा भैया आप क्या सिखाओगे मुझे? उसने कहा जी मुझे तो फर्स्ट ऑर्डर बाईवेरिएट आते हैं, मल्टीवेरिएट भी नहीं आते हैं। तो मैंने कहा then this collaboration is feasible or not? When both the parties are getting something, so that is the collaboration. If one is getting and one is not getting, losing, so collaboration की नींव कब तक रहेगी? नहीं रहेगा, ठीक है, getting my point? So basically this is things, right? Then the growth of regulatory requirements. Basically this is the regulatory requirements कहाँ चलती है, ये मैंने थोड़ा सा यूजीसी से लिया। यूनिवर्सिटीज जैसे हम लोगों की नैक होती है, तो बार बार आपके ऊपर ये प्रेशर आता है कि रिसर्च पेपर होने चाहिए, तो कई बार होता है कि हम प्रेशर से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। हालांकि फॉरेन कंट्री में every time your contract is renewed on the basis of research contribution, but they are giving time for the research. Here we are supposed to teach as well as to conduct the research. So sometime आगे ग्रांट की बात भी आएंगी कि ग्रांट भी नहीं होती हमारे पास, फाइनेंशियल कई कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई बार डाटा कलेक्ट करना है तो एकेडमिक लीव भी नहीं मिल पाती है, ठीक है। इवन कई बार अब जैसे मैं कई बार बात करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी ने हजारों टाइप के प्रोजेक्ट दे रखे हैं, और आज की डेट में सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने के बावजूद वो वहाँ एक अलमीरा में पड़े हुए, उनका कोई यूज नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो दैट इज द थिंग्स, right? So basically the every time requirement that is putting the pressures on this. Then importance of industry sponsorship and entrepreneurial research. अब आज की डेट में इंडस्ट्री, क्योंकि वो एक नैक ने कॉलम बना रखा हुआ कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर भी होनी चाहिए, ठीक है, कंसल्टेंसी भी होनी चाहिए। सो द इंडस्ट्री, whether the industry sponsoring, in बहुत सारे कंट्रीज में इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है, हमारे कुछ जगह तक करते हैं इंडस्ट्री स्पॉन्सर, बट we have to understand that at what level our industry is growing, whether they are the small scale, whether they are medium scales, whether they are the large scales, whether they are capable of helping you or sponsoring the project. अब यूजीसी जिसको स्पॉन्सर करती है, वो यूजीसी के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, 2-2 साल हमने काम किया होता है, उसके बाद पेपर भी, रिसर्च पेपर भी निकाले होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट भी दिया होता है, उसके बाद इवैल्यूएशन भी होता है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर भी दिया जाता है, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट का क्या काम होता है? नथिंग इज यूज इन द टूरिज्म पॉलिसी। मेरी बात है, बहुत सारे लोगों ने काम किया उसमें, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किए, तो वो सारा बहुत ज्यादा चीजें हैं। देन next challenge is that is this everybody is recognizing, and that's the information technology, IT मेन चीज वही है आज की डेट में। आज की डेट में जैसे प्लगरिज्म नहीं होता था पहले, प्लगरिज्म बहुत कम था, प्लगरिज्म बहुत ज्यादा है, पर आईटी में ऐसे से टूल भी आ गए कि आप जो लिख रहे हो उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। अब नाउ सी थिंग्स, मैंने आपको कहा ना जुगाड़ चलता है, वो दिक्कत फिर आ जाती है। What you need friendly to the information technology. टेक्नोलॉजी से खेलने की जरूरत नहीं है, यू आर सपोज टू यूज द टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी इज फॉर योर हेल्प, टू असिस्ट यू, rather than
क्रिएटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप इसका मिसयूज करोगे इस टूल का तो यही प्रॉब्लम रहेगी, राइट। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हम कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसर्च। आज की डेट में जो रिसर्च का बाउंड्रीज, वी हैव क्रॉस द बाउंड्री and research is not only confining to this Indian level, confined to India, beyond that, beyond international, तभी तो साइटेशन आपके आएंगे, तभी तो आई इंडेक्स होगा, इम्पैक्ट फैक्टर इंप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये भी आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिसर्च पेपर छपना बहुत मुश्किल है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर, राइट। या तो कोलैबोरेशन पे चलेगा, ठीक है, सब कोलैबोरेशंस आते हैं, इफ देयर इज नो कोलैबोरेशन, पर स्पेसिफिकली क्या कि इन क्रॉस ही कंट्री सर्च चल रही है तो उस तभी का फायदा, अदरवाइज नहीं है। रिसर्च में ग्लोबलाइजेशन हो गया, जब एकेडमिक में ग्लोबलाइजेशन हो गया, रिसर्च में ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली ठीक है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स बियॉन्ड दिस, एंड व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द ग्लोबल टाइप ऑफ रिसर्च, नाउ सी थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स विल emerge, your topic will emerge। जब हम पीएचडी टॉपिक करवाते हैं तो उसमें 5-6 मेरे हिसाब से कम 8-10 आर्टिकल निकल जाने चाहिए। जब हम उसको क्वेश्चन को डेवलप करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम 2 आर्टिकल निकाल के उसे बंद कर देते हैं उसको, और जब डाटा कलेक्ट करते 2-2.5 साल लग जाते हैं, हम सारा कुछ कर डाटा कलेक्ट कर निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर निकल सकते हैं उसमें। पर व्हेन वी आर डिफाइनिंग डिसाइडिंग द टॉपिक, सो हम उसको बहुत नीचे ले आते हैं, नेशनल लेवल तक ही रखते हैं। वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए उसका जो रिसर्च पेपर निकले इंटरनेशनल लेवल पे चल जाए, पर वी आर कन्फाइनिंग कि नहीं भाई फटाफट निकालना, इतना तक ही करना, बस ठीक है, ज्यादा नहीं करना। हालांकि वो इंटरनेशनल लेवल तक चले जाते हैं, आपके टॉपिक रिसर्च टॉपिक चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम टूरिज्म रिसर्च की बात करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे ट्राइब की जो पहला पीएचडी थीसिस था, हालांकि हिंदुस्तान में बहुत पहले प्रोफेसर टीबी सिंह का पहला थीसिस था, उससे पहले दूसरे सब्जेक्टों के लोगों के थीसिस थे, तो तब मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज में यूज करते हैं तो ट्राइब से ही यूज करते हैं, इनका पीएचडी का थीसिस से बाद ये कांसेप्ट इसने निकाली है, राइट। सो स्पेसिफिकली क्या है, ग्लोबल उसी को भी मानते हैं वो समटाइम, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉलिसी इश्यूज एंड पॉलिटिकल डिबेट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट, क्योंकि हमारे जो कुछ, अगर आप कुछ पॉलिसी इश्यूज होते हैं हमारे पास, जब गवर्नमेंट की टूरिज्म पॉलिसी पर रिसर्च करना चाहते हैं आप लोग, कुछ और पॉलिसी पे करना चाहते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन पे डिबेट करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर का डिबेट की बात करना चाहते हैं, कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, गवर्नेंस की, एथिकल्स की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर, राइट। बट sometime the policy issues, they are within the purview of the administrator, and sometimes challenges हमें आ जाती है, ठीक है। देन ये हो गया ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन उसमें इंटीग्रिटी एंड प्रेवलेंट रिसर्च, मिसकंडक्टेड, ये बहुत ज्यादा प्लगरिज्म वाली बात जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा है, ठीक है, होना भी जरूरी है, ये भी है कि सम टाइम एक आगे और भी ट्रेंड हमारे पास है जिसमें रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं आप लोग, राइट। सो जो प्लगरिज्म है या दिस मिसकंडक्ट रिसर्च में समटाइम्स बहुत ज्यादा लोग हैं जो दूसरों के पेपर निकाल लेते हैं या कुछ और हो जाता है चेंज करके। मैंने आपको कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट को ही चेंज कर देते हैं और अपने नाम से निकालते हैं, वो भी चीजें हैं जो चलता है, जुगाड़ वाली बात तो है ही है, ठीक है, ठीक है। ऑथरशिप, ट्रेंड्स इन सर्च एंड इम्प्लीकेशन फॉर द ऑथरशिप, राइट। सो आज की डेट में बहुत ज्यादा क्या है कि जो मल्टी ऑथरशिप चल रहा है, मल्टी ऑथरशिप क्या होती है, जैसे मैंने देखा बहुत ज्यादा हमारी जो प्राइज मिलते हैं, नोबेल प्राइज मिलते हैं, कितने ऑथर होते हैं, या इवन बहुत अच्छे पेपर, थ्योरेटिकली पेपर, कंसेप्चुअली पेपर, डिफरेंट की कंपैरिजन, क्रॉस कल्चर के पेपर लिखे हुए, तो बहुत ज्यादा क्रॉस कल्चर पेपर में क्या होता है कि डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, नेचुरली, अदरवाइज आपका नहीं हो सकता, बिकॉज उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। इफ द पर्सन इज फ्रॉम इंडिया,
लिख रहे हैं। हालांकि ठीक है, इंडियन लोग बाहर गए हुए, बाहर से लिख रहे हैं, वो अभी भी बाहर के लोग भी इंडिया में लिख रहे हैं। बाहर चले गए तो डिस्पाइट दैट दे आर राइटिंग इंडिया के ऊपर ही लिख रहे हैं, देन दे आर प्रोड्यूसिंग द पेपर्स। पर एक चीज मैंने देखी है, शायद आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैं चाइनीज रिसर्च में, द चाइनीज पीपल दे आर मोर कोऑपरेटिव, दे आर अट्रैक्टिंग देयर जूनियर्स, दे आर मोटिवेटिंग देयर जूनियर्स। किसी भी कंट्री में कितने चाइनीज बैठे हुए तो उनके साथ चाइना का अपना, चाइना का लोग जो लोग होगा वहां से ले आएंगे, उनको मोटिवेट करते हैं। पर कभी कभी इंडिया में देखा मैंने कि इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, कोलैबोरेट करने में, रिसर्च में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। और सम टाइम हम लोग बी पीपल ऑल्सो, जो हम इंडिया के हैं, सो सम टाइम बी पीपल ऑल्सो, कि हम भी सोचते हैं कि जब हम कोई कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो इंडियन जो बाहर फॉरेन कंट्री में, उसको नहीं बुलाना, हमें किसी और को बुलाना। जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं इंडिया में, सो हम भी सोचते हैं कि जो इंडिया का बाहर है फॉरेन कंट्री में, नहीं ये नहीं बुलाना, कोई और बुलाना, चाहे वो बिल्कुल बेकार ही हो, वो बुलाना, हमने इंडियन भी बुलाना। नाउ सी थिंक दिस टाइप ऑफ ट्रेंड्स, अगर ये थोड़ा चेंजेस हो जाए तो शायद बहुत अच्छे रिसर्च सब वी कैन प्रोड्यूस लाइक दिस। ये मेंटलिटी चेंज करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट आर थिंग्स इज दैट इन द emerging topics needed to be researched। ये आपके हिसाब से बहुत ज्यादा हो सकते हैं, हालांकि मैंने ये इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा थोड़ा सा, बिकॉज लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर दैट यू कैन कंडक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, राइट। इनको मैं थोड़ा सा 2-3 टॉपिक मैंने आगे रखे हुए, मैं उनको थोड़ा डिस्कस करूंगा। ये कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है, चलेंगे टॉपिक पर। मैं एक दो टॉपिक ये, these are the different topic। ये जो ऊपर है पहला टॉपिक है, थोड़ा सा ऐसे किया मैंने, यूज किया था, ये आफ्टर कोविड से रिलेटेड टॉपिक, तो थोड़ा अलग टॉपिक टाइप का है। टूरिज्म आफ्टर कोरोना वायरस, राइट, वे फॉरवर्ड फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया, और किस भी कंट्री कर सकते हैं आप, राइट। डिफरेंट टॉपिक ऑनवर्ड्स, न्यू चेंजेस आ गए। तो इसका जैसे हम पीछे डबल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोलता है इतने हैं, बेसिकली एम क्या है टूरिज्म का, जो एक सब्जेक्ट का क्या है, दिस पर्टिकुलर रिसर्च विल फोकस ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 और अब लोगों के लिए इस तरफ मूव करके, ठीक है, आउटब्रेक ऑन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री इन इंडिया और एनी अदर कंट्रीज, राइट। दूसरा टॉपिक ये था इम्पैक्ट ऑफ लो बजट एयरलाइन सर्विस ऑन बूस्टिंग इंटरनेशनल टूरिज्म इन इंडिया, a case study, right? So basically a topic, I'm not going to discuss more on these issues. What we want to emerging things are there, right? So this research is basically based on this research will be conducted based on the quantitative data which will be collected from a sample of एयरलाइन जो है जो इंडिया के ट्रैवलर्स के लिए जो बस एयरलाइंस होती है, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने ले लिए। नेक्स्ट है कि हाउ जापानीज टूरिस्ट परसीव बुद्धिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टडी, कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव स्टडी भी हो सकता है, एम्पिरिकल रिसर्च भी हो सकता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। सो दिस इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ, राइट, कि हमें दिस टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लेने, हो सकता है दूसरे एंगल से ले सकते, परसेप्शन ऑफ जापानीज टूरिस्ट टुवर्ड्स द बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन, मे बी परसेप्शंस को सेटिस्फैक्शन लेवल से कंपेयर कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर, तो देन द कंपैरेटिव स्टडी विल बी देयर। इट मे बी क्वालिटेटिव, इट मे बी क्वांटिटेटिव, इट मे बी एम्पिरिकल, इट मे बी कंबाइंड, right? Sometimes we are conducting the different type of research, the same thing is there, right? Then assessing the impact of grassroots level education in promoting sustainable tourism in India, a review of the literature, just the people are going, आज की डेट पे बहुत जर्नल में बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज आ रहे हैं, बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज आ रही है, बहुत ज्यादा कुछ जर्नल जो है वो बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज दे रहे हैं, ठीक है, अपना डिफरेंट टाइप है।
So this research study will be based on the qualitative research methods. ये quantitative भी हो सकता है, empirical भी हो सकता है, based on your objectives. And on the basis of that, you need this type of skills. Right? Next, यहाँ मैंने कुछ थोड़े से example HR के भी ले रखे हुए. How to combine theory and practices. Right? This is the combining theory and practice. Sometimes there's a lot of difference. Some people, they are saying this different, lot of difference. एक बार मैं इसी चीज थोड़ा सा आपको हल्का सा बता देता हूँ. एक बार थॉमस कुक में गया तो उसके सीईओ से बॉम्बे में टूर लेके गया था मैं, बहुत पहले की बात है. तो स्टूडेंट भी गए, तो मैं थॉमस कुक से उनसे सीईओ से टाइम लिया था मिलने के लिए. स्टूडेंट भी गए, मैं गया उससे बात. तो मेरे पास थोड़ा आई वाज जस्ट गोइंग टू इंटरेक्ट होने का, मेरे पास 15-20 मिनट है इंटरेक्ट करने के लिए आपसे. तो चाहे कॉफी, कप ऑफ कॉफी के लिए आपको आप आ जाओ. कॉफी पीनी थी मैंने, तो मेरे को रिश्तेदार तो थे नहीं वो, तो ज्यादा फ्रेंड में बहुत ज्यादा फ्रेंड होते तो फैमिली की बातें होती, तो थोड़ा मैंने सोचा क्या बात करूं उनसे. जस्ट थोड़ा सा फैमिली के बारे में पूछा ऐसे ही. उसके बाद मैंने पूछा कि जस्ट वी वर टेकिंग कॉफी एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट. तो मैंने उनको कहा पे ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या क्या प्रोसीजर है आपकी, क्या फ्लो, कैसे काम हो रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है. तो मैंने लिखता गया. तो मेरे पास डायरी थी, मैं उसमें लिखता गया जैसे से बात करते हैं कि चाहे उसी पे बात करते हैं. उसके बाद मैंने उनको कहा कि इनफैक्ट यू आर यूजिंग द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. उसका नो, वी आर नॉट यूजिंग एमबीओ. इनका व्हाट एवर यू आर टेलिंग, on the basis of that I am saying that you are using this approach. So you are doing all these things. अरे हम तो ये करते हैं, तो मैंने this now see things. मैंने कहा आप पैटर्न ट्रैकर की बुक पढ़ लेना और एमबीओ देख लेना उसमें से, तो you will find. So there is a some time theoretically and practically. ठीक है, हम जो चेंजेस भी होते हैं थोड़ा बहुत, जब थ्योरेटिकली मॉडल होते हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करते हैं, हम थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं. ठीक है, सेम वे हाउ टू कंबाइन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो ये बेसिकली आर थिंग्स इज दैट आज की डेट में हम बहुत ज्यादा एकेडमिक कोलैबोरेशन है या collaboration between the non-academicians and academic field. अब मान लो सब, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, this type of collaboration when we are going. जैसे थोड़ी देर पहले बैल साहब ने आपको लेक्चर दिया, उसके बाद डॉक्टर राजीव ने लेक्चर दिया आपको, या कुछ और इंडस्ट्री के लोग आए हैं. नाउ सी थिंग्स, इफ वी आर गोइंग टू कंबाइन द non-academician and academicians, तो क्या होगा? Practical aspect they are bringing, theoretical aspect you are bringing. क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा. So that's why the people, the government, or maybe our new policies, they are saying that business university research partnership, right? So we can develop this type of things. बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि लोग जो टीचर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में चल जाते हैं छुट्टियों के टाइम में, या रिसर्च कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में चल जाते हैं. पर इंडस्ट्री, दोज पीपल हु आर डूइंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड यू आर थ्योरेटिकली यू आर सॉलिड, so you can combining both things and then automatically you will produce a good results. All right, अब इस पार्टनरशिप से क्या होगा आपके? Such partnership and collaboration can stimulate theory development. अब टेस्टिंग, अब आपके साथ क्या था, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जो सिचुएशंस है. सम टाइम क्या होता है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में मेरे हिसाब से some subjects are there. So teacher, when we are teaching in the university, so we are supposed to bring today the topic, the issues which have happened yesterday in the industry. What will happen with the student then? We are supposed, हम क्या करते हैं, सिलेबस बताते रहते हैं, बस वही चलता है. अदरवाइज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है टुमारो, जैसे आईआईटी की बात करते हैं, आईएम की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, आमतौर पे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. So उसके लिए क्या होता है, sometimes the academicians, they are also on the panel of industry advisor board. Same way, industrial people, they are also on the panel of board of studies, academic board of studies. अब थोड़ा सा यूजीसी ने थोड़ा और बढ़ा दिया है कि इंडस्ट्री के लोग भी इसमें आएंगे. तो
तो थोड़ा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पॉसिबल बहुत ज्यादा होगा। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द एचआर, सम एचआर थिंग्स। हो सकता है डॉक्टर राजीव जी ने आपको बहुत कुछ बताया होगा इसके बारे में, एचआर के बारे में। बाय टेकिंग द मैक्रो व्यू ऑफ एचआरएम, स्पेशली स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ एचआरएम, क्योंकि डॉक्टर राजीव की स्टडी एचआरएम में ही है, ठीक है। बोथ एचआरएम researchers and the professional have the potential to underscore the importance of HRM by highlighting its importance इसमें ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में। मैं HRM इसलिए लिया है, मोस्टली क्या होता है कि इन इंडस्ट्री when annual report is presented by the MD, right, he's supposed to announce one thing that is very important. That is, he's saying that whatever this organization achieved, this is due to my people. This is due to my people. Now see things. कभी आप जब इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आती है, कुछ और आता है, तब क्या किसी ने कहा कि दिस इज ड्यू टू माय फैकल्टी, ड्यू टू माय मेंबर्स? So sometime the recognition, the reward, the appreciation जरूरी है। अब मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर वो पेपर अच्छा बढ़िया पेपर पब्लिश करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज, कई यूनिवर्सिटी में गया तो देखा उनको पेमेंट देते हैं, तो खर्चा थोड़ा बहुत खर्चा जाने आने का भी या उसमें जो होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, हमें खर्चे की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उस पोजीशन पे हैं, हमारे पास सैलरी ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या मिलना चाहिए? रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन लेटर किसको मिलना चाहिए? जो नीचे वाले हैं, जिनको आगे प्रमोशन लेनी है। अब हमने प्रमोशन तो लेनी नहीं है, राइट? सो रिवार्ड, एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशंस, राइट? सो ये अगर ऐसी चीजें हम स्टार्ट कर दें, ये भी इसमें भी तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। देन द फील्ड ऑफ एचआरएम इज नाउ इन द पोजीशन deal more effectively with the research at different levels, individual level, group level, division level, organization level and so forth. क्योंकि मैं इसलिए दिया कि हर जगह, because बाकी resources they are not productive, only the human sources are productive. So human sources can convert these things. You, the teachers are there, they can convert, they can change the raw into the finished things. इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मैंने इनको दी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी उसी का पार्ट है, एचआर का थोड़ा पार्ट है कि कुछ जो रिसर्चर्स एग्जामिन जो इंपॉर्टेंस एचआर का यूज करके सिटीजन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, बिजनेस यूनिट लेवल ऑफ एनालिसिस, मोस्ट ऑफ रिसर्च असेस द वेरिएबल टू आस्किंग द इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेड टू प्रोवाइड द रेलेवेंट वैल्यूज, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ दिस, जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, आइडियोसिंक्रेटिक डील बिफोर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर ड्यूरिंग स्टेइंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर leaving the organizations. So what is the impact of that? Because only can change. ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा हिंदुस्तान में, क्योंकि वी आर द सिल्वर मेडलिस्ट, शायद हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिसर्च को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, जिनमें नहीं जा रहे, ठीक है, राइट। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस, एचआर ही रिलेटेड है। देन अब ये थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिस चेकलिस्ट और सब जो वीक पेपर जो आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो आप यू आर पीपल आर प्रोड्यूसिंग, जस्ट आई एम रीडिंग दिस पॉइंट्स, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद दिस। जैसे रिसर्च इंटीग्रिटी की बात हम करते हैं कि क्या हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रेज करते हैं, स्टैंडर्ड उसे क्या है, मेंटेन क्या करते हैं, ठीक है, सारा कुछ, द डाटा हैंडलिंग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, वेदर वी आर द हॉनेस्ट इन डाटा हैंडलिंग, वेदर वी आर able to understand the different type of collection, data collection techniques, what type of problems we are facing, the standard, the policy, the regulation, the disciplines and all the things, right? Then authorship and communication, वो मैंने आपको कहा कि कौन सा फर्स्ट ऑथर होगा, कौन सा सेकंड ऑथर होगा,
ठीक है। कुछ टाइम ऐसा भी आया, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, कुछ टाइम ऐसा भी आया जब वो पॉइंट थे यूजीसी ने, अब भी पॉइंट है शायद, मे भी पॉइंट है, तो जो पीएचडी स्कॉलर थे बच्चे, तो वो भी लगे पढ़ने, काली मेरे ना सर के साथ शेयर हो रहे पॉइंट, आप लोग टीचर है सारे ही, तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पेपर के पॉइंट शेयर हो गए सर के पास, सर के साथ भी शेयर हो गए। नाउ सी थिंग्स, द हाइट ऑफ थिंकिंग दैट जो पीएचडी में से टॉपिक निकला, सच निकली है, तो वो टीचर ने तो हेल्प किया है, तभी तो निकला, ठीक है। पर डिस्पाइट दैट द स्टूडेंट इज सेइंग दैट कि जी मैं जब भरा अपना तो मेरे नंबर इसलिए कम हो गए, 5-6 नंबर शेयर हो गए उनके साथ, सो लाइक दिस, ठीक है। तो वो पब्लिकेशन का ये भी है कि कौन फर्स्ट ऑथर होगा, कौन सेकंड ऑथर होगा, कौन कंट्रीब्यूटिंग ऑथर होगा, कोई ऐसी, जैसे मैंने आपको कहा कंट्रीब्यूटिंग, हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर मैं लिखूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा उसको लिखना, तो आई विल बी द फर्स्ट ऑथर, अगर दूसरा करेगा तो ही विल और शी विल बी द फर्स्ट ऑथर, तो ऑटोमेटिकली अगर मेरी कंट्री पे आएगा तो फर्स्ट ऑथर मैं होगा, तो उसकी कंट्री में होगा तो फर्स्ट ऑथर होगा, नेचुरली बात है, ठीक है। सो देन द मेंटरिंग एंड सुपरविजन, किस, अब ये जो हम जो सीनियर लोग होते हैं, बेसिकली उनका काम यही होना चाहिए, जो हम, अब जैसे हम लोग काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो हमारे साथ एक यूके के हैं, तो बहुत सीनियर है, तो हम उनको बोलते हैं सर आपने नहीं कुछ नहीं करना, हम तैयार कर रहे हैं, आधा हम दोनों लिख रहे हैं, हमने अपना डिवाइड करके, वी हैव डिवाइडेड द पार्ट, ये पार्ट ये करेगा, ये पार्ट ये करेगा, आफ्टर दैट द फाइनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है, दैट विल बी चेक बाय यू। आपने बहुत काम किया, मैंने कहा अब हम, हमारा जो काम आपने चेक करना है उसका, ठीक है। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन। देन पीयर रिव्यू बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि हम लोग जर्नल चला रहे हैं, तो जर्नल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा ऑथर जो है वो नहीं देते, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, जो हमने रिव्यू रखे होते हैं, बहुत नीट रिव्यू देते हैं, सब बहुत डिफिकल्टी होती है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा है। और इवन द कमेंट्स दिए जाते हैं, मेरे पास भी कई बार ऑथर बोलते हैं कि सर मेरा पेपर इतना दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए, कभी कभी साल के बाद छपता है, तो प्रॉब्लम, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ये है ही है, ठीक है। और बट वी आर सपोज टू फॉलो इट, this is a regressive thing that we have to follow. If we have to maintain the standard of high quality, so the journals has to follow this type of things, and we must understand that this is the typical process, and this is the specifically the rejection process. Don't say, मैंने किसी को किसी स्पेशलिस्ट में पेपर भेजा था, थोड़ा टेक्निकल, बहुत सैम लगाया मैंने, तो उन्होंने कहा जी सॉरी बोले आप इसको पेपर को हम नहीं ले पाएंगे इसको, क्योंकि आपका पेपर बहुत टेक्निकल है, और हम थोड़ा सा थोड़ी डेवलप करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल डेवलप करना चाहते हैं, तो थ्योरेटिकली मॉडल चाहिए हमें, हमें ये नहीं चाहिए, तो पहले इसमें तो ठीक है। देन रिलेटेड विद द रिसर्च के जो मेथड्स है, कंप्लायंसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी द वैल्यू ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन, यूजफुलनेस। अब एक जब पेपर मैंने जब किया, मैंने बताया आपको, मैं कहीं लिखा, तो उसमें उसमें मैंने सोशल वैल्यूज भी दी, सोसाइटी की नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने जेंडर बेस ले लिया, मेल और फीमेल ले लिया, तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस, सो दैट द सोशल वैल्यू, अब जो पेपर का हमने लिखा, तो उसमें एक और कंटेंट बन गया उसका एब्स्ट्रैक्ट में, कि दिस इज द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, राइट। सो बेसिकली दैट्स द मोटिवेशन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, तो एक इंप्रूवमेंट भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, द फाइनल स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं लोग। We see that now see this economy, the emerging economies like India, they're offering the rich, even the different type of opportunities for the future research tech, different type of this. Even the COVID के बाद भी different type आ गई, हालांकि कई प्रॉब्लम भी आई है, देखो everything is there. What the emerging economies, whatever the emerging economy, developing economy, some of these may be amendable to the existing theoretically as well as the methodological aspects, and others may through up the fresh concept and things. कुछ को हम amendment कर रहे हैं, कुछ को ऐसा कर रहे हैं, and then what the something is the new. That is sometimes we are saying that the future research agenda. They are giving us the concept and things. So on the basis of that, we are moving towards the this. I would argue that in living closer to the discomfort,
of uncertainty and looking towards for solution, hospitality researchers could begin to reposition themselves in relation to the wider social science community, because हम social science के related है तो हमें reposition अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि otherwise it's a very difficult this. ठीक है, they would do well to locate their work in the nexus of debate between constructive and critical realities. Two things are there: the constructive skills, then the critical skills, right? ऑलमोस्ट ऑल, जब मैंने ये अपने जर्नल की बात की, आप कुछ काफी जर्नल स्कूल ऑफ थॉट्स बताया है, वो इंडिया के नहीं है, वो फॉरेन कंट्री के हैं, राइट? सो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दीज स्कूल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स, बहुत कम, हमारे हिंदुस्तान के बहुत कम आर्टिकल है। कोई बात नहीं, ऐसा मेरे भी नहीं आ पाए, मेरे भी मैनेजमेंट की जर्नल में चलेगी, कोई पर्सनल रिव्यू में चलेगी, एम्प्लॉयज रिव्यू में रिलेशन में चलेगी, कोई मैनेजमेंट की जर्नल में चलेगी, तो कई बार क्या होता है कि नहीं होता है। ऑलमोस्ट ऑल द डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ द टूरिज्म इन हॉस्पिटल रिसर्च हैज बीन बेस्ड इन यूके एंड वेस्ट। मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बुक हमने लिखी, तो वी हैव जस्ट पॉइंटेड आउट दैट इंडिया का पहला ये स्टार्ट हुआ था। कौन करेगा, कौन वर्ल्ड लेवल पे जाएगा? वी पीपल, वी आर प्रमोटिंग द इंडिया एज की हमने यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैंने कुंभ का भी जिक्र किया उसमें। तो स्पेसिफिकली क्या है, अगर हम नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन प्रमोट करेगा? सो थ्रू आवर रिसर्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस, वी आर सेइंग दैट हम बहुत पहले ये काम करते थे पर उसमें नहीं आ पाया। सो ऑलमोस्ट ऑल द डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ द टूर, जब डिबेट चलता है इनके ऊपर, तो डिबेट टूरिज्म एंड हॉस्पिटल रिसर्च हैज बीन बेस्ड ऑन यूके एंड यूएसए, क्योंकि हम फॉरेन किताबें पढ़ते हैं, उन्हीं किताबों से हम बोलते हैं कि ये वहां का है, हमने हिंदुस्तान के नहीं पढ़े, हमने अर्थशास्त्र देखा या कुछ और चीजें हमने नहीं देखी। सो प्रॉब्लम इज देयर with limited contribution from other developing nations. This is not saying that other countries' scholars are entirely uninterested. What they have tended not to engage in the debate through publication. अब देखो यही है कि हम इन्वॉल्व ही हुए जानबूझ के, क्योंकि हो सकता मे बी दिस टाइप ऑफ स्किल्स, दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी जो लैक कर रही थी हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास कंसेप्ट ठीक होगी, सब कुछ ठीक हुआ, सो वी कैन support these things, right? Thus, despite this debate, the schools of hospital thoughts have contributed towards the tourism and hospitality research globally. Thank you very much. Hello. 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 Namaskar, sir. Thank you. It has been indeed an amazing session. We are so thankful to you for enthusing the minds with ideas of research, how they can excel, how they can grow ahead. Those who have enjoyed this session, type W into the chat box that yes, this created wow into your today's experience. I look forward for seeking W's from you all into the chat boxes.
Shraboni ji, fantastic. Getting so many W's into the chat box indeed adds value. I'm so happy to see so many W's into the chat box. Anant Verma ji, Himansh ji, Georgian Thomas, Ardaman Bhinder ji, Chat Bhaskar, Saurabh Tiwari, Nilesh, Ratan Kataria. Lovely, lovely. Thank you so very much, sir. Gratitude is a small word to express to you for sparing your valuable time and helping our learners of this AICTE program to know about different aspects of research and how they can sharpen their research skills. We do look forward for seeking your blessings, guidance, and learning the lessons for research in times to come. On behalf of Center for Life Skills and Soft Skills and AICT ATAL Faculty Development Program entire team of this workshop, I express my gratitude to you and thank you for being there with us, for giving these valuable insights. So friends, we had Professor Mahinder Chand, who shared greater insights to you about research in hospitality and tourism. Here we take a break for lunch break and we will assemble at sharp 1:55 so that we start with the session at 2 o'clock. Thank you so very much for being with us on board. Looking forward for meeting you all at 1:55. Take care. Bye-bye. Stay safe. Ram Ram from Haryana. Thank you very much. Gratitude, sir.
Namaskar and welcome on board. I'm so delighted to see Dr. Anukriti Sharma. My apologies for putting you all on hold. There had been some technical glitch with my system today morning. So, tried with the computer center, but couldn't help it. Anyways, so well, friends, I think after having meaningful insights, one from Mr. Deepak Behel, a man from corporate world, knowing about what are the prevailing practices in human resources and how we can excel there. Now, we moved ahead in the journey that we learned something that what all is there into research skills for hospitality and tourism from a scholarly professor from Kurukshetra University, Professor Mahendra Chand. And here is the time we all have been waiting for, listening to an iconic persona, a charismatic personality, the one who has contributed immensely in area of tourism, hospitality, and management. I'm talking about Dr. Anukriti Sharma. You name a press, it be Apple Press or Emerald, name any international publisher, you will find a name figuring there in the list of leading authors, editors, and taking the flag of India high in the world of hospitality and tourism across the globe. Who else could have been a better person than her to lead us, to let us know about that how can one excel, how can one go ahead in sharpening the research skills and contribute at international platforms. I'm extremely grateful to Dr. Anukriti that despite having a very busy schedule, having some international commitments as well, she continued to be in tune with us at this AICTE ATAL Faculty Development Program through Center for Life Skills and Soft Skills, MD University, Rohtak. We are indeed grateful and thankful to you, ma'am. I'm sure that the insights which Dr. Anukriti would be sharing with you will indeed add value to your life, and you'll feel that yes, you met a person on this virtual platform which made a difference to your life. She is presently head and a leader at University of Kota, which is a state-funded leading government university in Rajasthan, an academician by heart, an administrator as well as academician by role, and a researcher by passion. And when these things combine, it's a rare combination. So when your passion becomes your profession, there is no doubt that you will have an edge over the others and you will do wonders. So does Dr. Anukriti is doing. So she leads with an example. And after this, if some amongst you, not all, are able to produce some substantial research, I think the purpose to sensitize through this session of the workshop is solved. So with these few words, I welcome Dr. Anukriti on board. And once again, apology from the center that because of the technical glitch, we got delayed. But then I'm sure that with her valuable insights, that waiting was worth, because I do remember that if I have to meet the best of the dogs in the world, there is a long waiting period. And Ajay is smiling for the reason that he had been waiting to meet Anukriti ma'am for a long, long time, and it's dream coming true for him. And many more like this. So welcome on board, Dr. Anukriti. The stage is all Thank you yours, so very much. and Thank I you, sir. leave it up to you for your session now. Thank you so much, sir. Very good afternoon to everyone. Namaskar and Hare Krishna. I'm so much thankful to Professor Bhaiya, sir, for inviting me for this faculty development program. And I must congratulate you, sir, because the title itself is so nice, so heart-touching, and it is giving, I mean, like one have to think about it from the title itself, because it is like life skills for blissful life. So you are here not only going to talk about the research work, you are going to change many lives by this FDP. So my congratulations goes to you, sir, first of all, and to the entire team who are managing this FDP very successfully, because I'm getting all the updates from the social media.
And it is an honor and absolute pleasure for me actually to be there. And for you, sir, without any doubt, sir, because it's you, for you, I can drop any of my assignments. Because to be very honest with one and all, whosoever is listening to me right now, in my life, the person who brings this turning point, he's spoken so high about me, but believe you me, the person who brings this turning point in my life is Professor Dhaya, sir, because he inspired me actually. Otherwise, he, to be very honest, without going on the topic directly, I just want to tell you, just 2 minutes I will take to tell something personal. I first time met him in 2014 in a interview for a research award project at UGC. And that time he is very strong, he's very, disciplined person, I must say. And he asked me, he fired me like anything with the questions. And one question he asked me, how many research publications you have, especially international? And I was like mum that time, because there were only very few, 5 or 6 international publications I had in my credits that time. And by that time I have no book in my credits. So there were like some research papers in some journals and few edited chapters in the books. That's all I have. Still, I don't know what spark, what he has seen, and he allotted me that research project, fortunately. And that triggered me actually. There is always a turning point in life, and that was the turning point of my life. And that triggered me like anything, that I have to do something. And from that day onwards, I have started focusing on the research work. And if anyone on this earth asks me that to whom you want to give the credit for this, so I will give it to Professor Ashish, sir. Because if he didn't poke that day strongly to me that Anukriti, you don't have any good research work, I would have never turned up as a research scholar, to be very honest with all of you. So my heartfelt thanks goes to you, sir. In fact, speaking in front of you is a big deal for me. I'm So humbled and honored with your kind words. But then yes, that way feel privileged also that they are teachers only that who keep on knocking you, and then finally you rock. So yes, sir. the kind of positivity Dr. Anukriti has taken, she could have Thank you, easily sir. cribbed also that there was an idiot sitting and he fired me with 10 questions. And she took it as a challenge and is now one of the leading Uh, authors and the researchers. No, Thank you. Thank sir, sir, you are very brilliant, and I'm like, it was by the grace of God I met that day, sir. अगर आप नहीं होते तो ये कभी नहीं होता मेरी life में. मैं जैसे चल रही थी वैसे ही चलती. लेकिन just because of you, I'm here on this platform today. So without taking much of your time and giving my all thanks to you, sir, I just want to start my presentation because I think we are already late. It's already 2:30. And if you have any questions, please feel free to ask me in the end of the session. I have prepared some slides as well. I have a video to show, although that is from Bollywood movie, but I want to relate it with some research work. So with your permission, sir, I would like to start my presentation. I would like to share my PPT with everyone here. Please, ma'am. Yeah. Is it visible to everyone? Yes, it is visible. Okay, thank you. So, although sir has given a brief introduction about me, but as we are going to talk about research, so before proceeding towards, my entire presentation, I would like to tell something about me, because in the emails I have especially mentioned that if it is possible for the speakers, please do include some case studies. So I have no case study as such with me, but I think if you will be able to learn something from my life experience, that will be an honor for me. So I just wanted to start from my this topic, which is given by sir, is research opportunities in hospitality and tourism academia, challenges and way forward. So today we are going to talk about the challenges, as well as we are going to talk about the positive sides of hospitality and tourism academia. So far, I have edited 13 books from 2019 to 2000. My first book was published in December 2019, and it is December 2021. And I have published 13 edited books, all under international publication houses. 12 books are ongoing. 3 books I have authored. One is from Malaysia, also from one of the leading publication houses in Malaysia, as well as I have a few research papers in my credential. And of course, I have edited chapters in Routledge, Cave International, and Taylor Francis.
Few of the authored books, I can say that like event management, that this is under a collaborative thing with the United Kingdom event industry and Malaysian publication house. And these are the publication which I have so far, the titles which I have on my name, that is under Apple Academy Press. And these are like the first book which I have started was on sustainable tourism development, futuristic approaches. That was the first book which I got published in year 2019. And then after, I have lots of book publication. Like I have 5 books under this a single you can say the book series. That is, all are related, maximum of them are related with event tourism, like event tourism in Asian countries, challenges and prospects, event tourism and sustainable community development, then dynamics of tourism industry. And I'm also working on rock paintings now, because it's quite a different area for me and I would really want to know more about it. Then I have one more book under CAB International, which has already been published in year 2020. And another book which is on festival and event tourism, building resilience and promoting sustainability. It is now in press. So under KEBI, I have these 2 books. And Routledge featured me as they have introduced me as their featured author on their website. And my first book was on tourism events in Asia, marketing and development with Routledge. Now I have 2 another books. One is on COVID-19 and the tourism industry, sustainability, resilience, and new directions. And the other one is crisis management, destination recovery, and sustainability, tourism at the crossroad. Why I'm telling all these I'm titles? interrupting Dr. Anukriti in between, and Sure, sir. I'm sure Sure, you'll spare sure. me for that. No You problem, see, sir. there was a candidate who came to me a few days back stating that, sir, Sure. I have an interview for a public Yeah. university. How Yeah. should I prepare for that? And the first thing that came Okay. to my mind was, I said, do you know Dr. Anukriti? He said, yes. I said, how come? He said, sir, I have was browsing through the Routledge website and I Okay. found that her name has appeared as a featured author. I said, so I would like to see that if you can follow her footsteps, and when you go for an interview and a university committee asks you that what value would you add to the university if you are selected, so you should have something to show like Dr. Anukriti that आपके Sir. आने से पहले आपकी सुगंधी पहुंच जाती है. So I told him that if you do so, there would be hardly an institution who would not like to have talented people like Dr. Anukriti. And believe My me, pleasure, sir. ladies and gentlemen, that boy came after some days and he came up with a publication also. And she has turned out to be Dronacharya and such distance learners as Eklavya, who are learning from her from a distance and doing wonders. So I must thank her enough again and compliment you all Small, that sir, you have got please. this opportunity for this fantastic topic, which none other than Dr. Anukriti could have taken to lead you, to inspire you, to help you, and to guide you. Please continue, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So this is about Routledge. Then I have worked with Aimril, and under Aimril, I have already a book published. That is actually not a book; that's a handbook, and I'll be going to talk about what is the difference between a book and a handbook. So I have published already, a handbook on information communication technology in tourism and hospitality. Then because that time when I was working on over tourism, like there was no corona and COVID-19 and something like that, and in fact there was so many cases in Shimla, Manali, as well as in Barcelona, Venice, that people, there are places overcrowded. So that's why I thought to work upon on this topic of over tourism as destination risk, and I'm really glad to let you all know that this is the first book from any Indian on the globe, and it is a 6th book on the entire globe on this theme over tourism. Then now I have worked on one of the handbook, that is on destination recovery in tourism and hospitality, and the another one is already going on. This is also connected with the same, almost same theme, that is resilient and sustainable destinations after disasters, challenges and strategies. So these are the 4 books under 2 handbooks and 2 books under Emerald. Then I have 3 books under Springer. That is one again on over tourism and technology and solutions, and one under future of tourism in Asia, titled as Future of Tourism in Asia.
And the another one, which is again now in press, that is on crisis resilience and recovery in tourism and hospitality. And these are the ongoing books. I'm first time working with Nova Science Publishers USA now. This book is titled as Strategic Tourism Planning in Communities, Restructuring and Rebranding. And I'm as well as working again with one more book. I have just submitted the proposal. And initially I got a yes on this, and it is Heritage Tourism Problems to Possibilities. So this is so far I have done. If I'll talk about the editing book, I'm like a person who is more into book editing and authored book rather than in publication of the research papers in ABCD journals, because there is always, it's up to you where you are actually, you put your where you want to go, which direction you want to select. It's absolutely up to the researcher. So I thought that I want to speed up my work, if I really want to, because to be very honest here, we all are academicians here, and I don't want to play any hide and seek. So without networking in academia, it is very difficult to survive, especially if you want to make your name on international standards. It is very much important for all of us to create a good network, and that networking you can get only by your work, through your work. And for that, making a research paper, of course, it is very time taking. After lots of reviews, you got that research paper published in any ABCD journals, and that too, it will take at least 1 to 1.5 years to get it published. So it is a long task, although it is more valuable, to be very honest, it is more valuable in academia. But for creating a network, I found it a little, not beneficial on that level, as much as the edited books are beneficial to me. So far, I've been invited in 9 countries. And all the countries, all the people whomsoever invited me, whether it is Turkey or Uzbekistan or Sri Lanka or Bhutan, Dubai, I have been invited or in all these countries just because of my books. I have really no network. I'm in a state like Rajasthan, which is already not very well known for education. That too, tourism industry. Tourism is very nice. Tourism industry is very good in Rajasthan state. But if we'll talk about the academia and the scope of tourism, because we really don't have, we have 36 universities, but only 2 universities in entire Rajasthan, 2 government universities are running the courses on tourism. In fact, in my own university where I'm working, I don't have a tourism course over there. So you can see the situation is so critical for me. And from this place to going on international standards and to work with the international authors, it takes a big deal. So, and why I have shown all these titles? Have you noticed one thing? There's 1 or 2 things which are common in my all the books. If you would see it once again, if you will see the first slide, you will see that I was always working either on event tourism or on sustainabilities. These are the 2 points these are the 2 areas which I never left from the first day to till date, and I will never leave this because I have made my mark in this area now. I'm already working in event tourism, and all the books, they are like related somehow with the sustainability or with the event tourism. These are, if you will see any of the title. And now after this COVID-19, from last year, like from 2020, I have started working more on resilience and recovery and crisis management. And my all the books now, if you will see the title of the handbook as well, that is also destination recovery. And even if you will see any of the book, this is all related with crisis management, recovery of the destination, because now this is the buzzword. This is the buzzword where we have to discuss about. I'm not talking about that we need to repeat again and again the things that we want to work on only on COVID-19. It is not like that. But the tourism industry is so much affected by this virus, and we are already in the different all the countries are in different stages this time also. And we are not sure that in future what will be going to happen next. So the documentation of the possible solutions of this sort of viruses, this sort of disasters, is very much important. Believe me, in Emerald, in Springer, in Rutledge, wherever we have sent these proposals, they have accepted it at once. Because every time we talked about the solutions, we never talked about in our books about the problems. We have always in the book proposal, I talk about the solution of the problem which we all are facing, the entire global world is facing. So this is the common thing which I just wanted to let you know what I'm exactly doing in the book process, editing process. Then when we are talking about the types of tourism research, so tourism and hospitality are the
areas, they are like academic field which has become more global now. And that's the reason, we have the increasing number of schools, and we have increasing numbers of researchers and the journals all over the world now. Because you can connect, tourism is such a subject, is such an area that you can connect it with any subject or any area. Like if you talk about the economic impact, you can talk about that. If you can talk about the imaginary things of the tourism destination, you can talk about that. You can make a research on the visitor satisfaction, the motivational factors. You can make a research in a comparative study. You can make a SWOT analysis, the strengths, weaknesses, and the opportunities and the threat of a particular tourism destination, or even of a particular tourist product. Then you can again talk about the tourist behavior. Like it will talk about dark tourism. If you must be aware about, and you have heard about dark tourism. So here, if you will go on Google and search about dark tourism, maximum of researchers, they have worked on the motivational factors and the behavioral factors, why the tourists are visiting on the dark tourist places. So it is, and again, let me tell you, in India, there is like only one or two papers in India on this particular theme. So I'm really very keen to work on dark tourism now, but unfortunately, I'm not getting any good team members for that particular theme. Then future researchers, what is like futuristic approaches. This is again very much important, and it is something like which is evergreen. And destination vision, how to create a destination, unexplored destination as a tourist destination. It is again a very buzz topic or a hot topic, I can say. Then social media impact, writing blogs, or the impact of Twitter, Instagram, what are the impacts. Even if we'll talk about the photography, what are the impact of the photography. If the tourist place is more scenic, at times that also impacts the tourist visits over there. Then your promotion and conservation studies and human research studies you can add on. Then brand studies, branding, marketing, product research, ROI you can discuss, and custom reach you can discuss. So there are immense topics, and there are lots of topics in tourism and hospitality on which we can discuss and talk about. In this particular slide, there is a person who's just standing in between a door, and there are two sides. And I have given a caption over that: so much begin and so much is still to do. And ultimately, it all depends on where you stand and in which direction you are looking. It's actually depend on the mindset, and it actually depends on researcher to researcher, because it is very common thing. Either go inside the door and go in depth in the research study and do research work, or go outside and explore the world. But if you are in tourism academia, if you are in hospitality academia, you must have to go with both the tasks. With the same door, you have to go inside, you have to jump into in the in-depth research, and from the same door, you have to come outside to explore the countries, to explore the people, to talk more about yourself, to talk more about the people, and to listen them that what exactly they are doing. Because by that only you will be able to learn more. By that only you will be able to get more ideas. Fine, we are going with this search engine, Googles and whatever, but this is very true. The person, when interaction works, when mind speaks, when you are reading something on Google and when person is interacting with you, both are gives you absolutely a different experience and a different learning. So when you talk more and when you interact more, if you will make good networking with people, and for that you need to go outside and explore more. So this is my submission, but please don't, if you really want to make a mark in research area, please don't stuck up in between the door, because it will take you nowhere. It will take you nowhere. So please mind it that we are the person, our future is actually in our hand, that how we are making it. So please, when you are going for this, if you're jumping into the research area in tourism especially, please make a balance in between both the things. At times, persons, they are not interested to attend the webinars or the conferences or the discussion platforms because they think, okay, fine, this is so monotonous. But it is not true. In fact, you will not believe I'm attending these days the webinars in which even I have not invited as a speaker, as a participant, even I am attending the free of cost webinars, whosoever is conducting it. Doesn't matter for me which country, which topic. Just 5 days back, I have attended a webinar on Buddhism tourism, and I have nowhere in that, they have just sent a link to me and I've just joined it. That's it.
It was not for a certificate, not for any recognition. It was just for a learning purpose. And you will not believe, from that particular place, I have created one more platform for me, because the director of Tourism Council of Bhutan is now in contact with me. And now we are planning to work on Buddhism tourism in India, Sri Lanka, and Bhutan. So this is what happened with me. So this is what it is, my experiences which I'm sharing with you. So don't take anything like it is no work or of no use for me. Whatever is going on, whatever is coming to you, let it come to you, and please join these things, because learning gives you lots of knowledge. Then a few mantra that just within our reach. This is very true. If it is simple. If you are out of sight, you will be out of mind also. You know, people, they make comments at times that why she's always in the newspapers, why she is so active on the social media. Because I have really, if I'll ask you, if you are a researcher and if you want to promote yourself, what will be the right media for you to promote yourself? Of course, the social media, first thing. And being in academia, if you want that you're doing something in the department or you're doing something in the research work, then to spread the knowledge in the general public, and for a different sort of recognition, you know, on you can say on the public platform, in the policy making departments, you have to come in the media, then only. Because if you're doing lots of things, but if you're not promoting it, it will take you nowhere. So this is my mantra. If I'm doing anything, I always promote it. Whatsoever people are saying, it doesn't matter for me. Secondly, the question of interest is what type of research, on what type of impact, and on whom. This is very crucial. If you want to write down a research paper, an article, even a newspaper or a magazine article, you please think about these three questions: that what type of research exactly I'm going to do, and what type of impact it will make on the society, on the scholars, and on whom I'll be going to do this research work exactly. So this is again is my rule. And then is looking outside the box and redefining the tourism research agenda. This is very much important. Like over tourism, when I worked on over tourism, I kept this particular thing in my mind, because over tourism was so new for me also. I have never heard about, there were no books available on this theme, but I have really lots of research I have done before proceeding even for the book proposal of over tourism book, because I was aware that it was a very tough nut to crack. But finally I got it, because you know, it was an out of box theme, and I wanted to select that particular theme. Like now I'm working on rock paintings. Again, it is not my cup of tea, but still I'm trying to do, because I want to learn something. So please try to look outside the box. In fact, to be honest, think like this, that there is no box. When you're doing research, don't think just outside the box. Think like there's no box at all. And risk and uncertainty is another important agenda for tourism research currently. I'm not saying that it was and it will be, but currently, if we will see the situations of entire globe, yes, risk and uncertainty is the most important agendas in tourism research. In my all the book proposals, I have always write that documentation of the solutions of these sort of crises, disasters, viruses is very much important, and we have to make a documentation for our future generations. हम history इतना पढ़ रहे हैं because someone documented it for us. That's why we are aware now about culture, about our history. Today I'm here, I'm making these books. I'm not making it only for me. They will remain there if even I'll leave this world. So documentation is very much important of few crucial issues. So that's why I think documentation is again. Then sustainable development goals. See, to be honest again with all of you, wherever I'm confused that on which theme I have to work, and because now let me tell you, I'm now preparing on book to be a book series editor, and initially I'm getting a yes also from the publication houses. So I'm making some book series now, and I'll be glad if someone will submit their book proposal, although it will take another 5-6 months. But let me tell you from this platform, because it is a very pious place where I'm speaking today. So if you are confused at which topic actually I need to opt, and because there's so many things are there, just open only sustainable development goals. Believe me,
every goal, there are like 17 goals are there, and every goal you can connect with hospitality and tourism and travel. Like the first goal, if I'm talk about no poverty, right? So no poverty is means that we are creating employment opportunities or entrepreneurship opportunities for everyone. So if you will be going to do a research, whether it is a research paper, article, or viewpoint paper, or a book, or tourism and poverty reduction, or on poverty elevation through tourism development, or maybe the contribution of tourism to poverty elevation, or pro-poor tourism, perspectives, something like that on tourism and poverty elevation. So definitely you can work on that, and it is correlated with zero hunger as well. If we'll talk about good health, the third SDC, good health and well-being. So if we'll talk about here tourism and wellness, if we'll talk about here tourism and the good life which tourism can give, and health and well-being, and we can talk about tourism and quality of life. So you can relate to the third, the goal with tourism again. Then quality education. See, there is again a lack on this particular thing. We don't have books on tourism education by Indian authors, especially. We have lack in the research papers also in tourism education as well as in education tourism. In fact, maximum of people, they doesn't know the difference between the tourism education and education tourism, and both are very much required. So if we'll talk about the fourth goal, that is quality education, we can talk about here tourism education, global issues and trends of the tourism education, educational tourism. What is educational tourism, how it is helping out, and how can it will be give a backup to any destination. And you can talk about the internet travel tourism education, because now it is a world of internet. We cannot survive without internet now, so you can connect internet and travel tourism education now. Then managing education tourism and education for sustainable tourism development. So there are n number of points which you can relate with quality education. Then gender inequality, equality, fifth point. And if I'll talk about the 10th, that is reduce inequalities. See, again, in this particular point, you can talk about the gender equality in tourism, women in travel, solo women travelers, you can talk tourism and gender bias, gender-based violence, you can talk about, because there is sex tourism as well. And the people, I mean, like girls, they are exploited for this particular reason. So you can talk about this. Although it sounds very negative, but the results will be very fruitful for the society, believe me. And then you can talk about the gender gap in tourism academia. Why not? Can't you see this? Like we all are feeling, at least I being a woman, I also felt this at times, that there is a gender gap in tourism academia. Or you can talk about the empowerment of women and girls through tourism. For the 10th point, which is reduce inequalities, we can here talk about the accessible tourism, where we are talking about the personality, PWDs, persons who are with differently abled. So we can talk about the accessible tourism. Let me know, please, if you all are here and listening to me, how many of tourism destinations in India are accessible tourism oriented? I'm in Rajasthan. There's not a single fort, there's not a single park, there is not a single museum or a zoo where I can say that yes, they are promoting accessible tourism. On the another hand, when I visited Nepal, they have invited me only for accessible tourism as a speaker. And you will not believe, it is a smaller country than us, but they are doing wonderful and inaccessible tourism. They have so many, they have all the tracks, on the mountains, they have the tracks for the wheelchairs and for everything. So definitely I can say that accessible tourism, it is very much required to work on this area in India, which we are lacking. And accessible tourism is not only for the personality with persons with the differently abled, it is for the pregnant women also, it is for the old age persons also, it is for the people who are like have a temporary illness, means like I got some fracture in my leg, but I'm sitting home at from last 2-3 months and now I want to go access. In fact, it is such an accessible tourism, because if I'll go, I'm a fit and fine person, if I'll visit a place, I'll go all alone, maybe possible as a solo traveler. But if I have some deficiency, or if I'm not able to go or travel alone, I will take one helper or one family member or a friend with me. So in every means, if we'll talk about the 10th point, that reduce inequalities. And in fact, you must be aware there are tourism themes on the World Tourism Day
for this particular point, that reduce inequalities. So I strongly believe that if someone wants to work on accessible tourism, no one can stop that paper, no one can stop that book to be approved from any of the publication houses. Then if we will talk about the sixth point, that clean water, here we can talk about tourism and water-based tourism, sports or water policies, or you can talk about tourism and recreation water bodies, something like that you can make. Affordable and clean energy, the 7 point if we'll discuss here. So if we'll talk about the tourism in green energy, green economy, yes, we can do this. Energy, climate and tourism, and strategies in sustainable tourism, clean energy, you can connect all these things. These are the untouched areas where so far Indians are at least not working. I'm not very much aware how many people from abroad are working on these things, but from India, there is dirt in these areas. Then we have another point, is that 8 point, decent work and economic growth. This is, of course, in very much demand, that tourism and economic development, rural tourism and economic development, tourism economics and policies that we have, the tourism economics of, the economics of tourism destinations we can discuss. So there are again n number of topics which you can make on decent work, even entrepreneurship. You can go ahead with this also in the eighth goal. Then the ninth is industry, innovation and infrastructure. So if we will talk about tourism and innovation, technology, creativity, and and sustainability. Again, it makes sense for us. Then innovation and entrepreneurship opportunities for the community development we can talk about. Big data, here we can discuss about the big data, because big data is actually an innovation in travel and tourism. So we can talk about this also. Tourism and technology in the age of innovation. So, again, means you cannot skip a single goal from these 17s. You can make a book, a paper on any of the goal. If you're confused and you're not getting what exactly have to pick, just go through with these goals and you will get the answers. Believe me. The 11th, sustainable cities and communities. So we have, like, if I'll talk about cycling, like bicycle tourism for sustainable cities, means it is quite new. And so far I have never read so many papers, like there are 2 or 3 papers are available, although that too not from India. But if we'll talk about cycling or bicycle tourism for sustainable cities, smart cities, or eco cities planning, eco city planning we can do. Sustainable cities and tourism, again, holy cities, like India is a country of religion, so we can talk about here about holy cities. We really don't have, we are talking about Varanasi, we are talking about Gangas, we are talking about Jamuna, out of everything we are discussing, we are talking about Vrindavan. But do we have a documentation honestly on holy cities, that how these holy cities can be we all know that people are visiting from international level to these cities, but exactly are we really working in a research way on this? Or urban tourism you can work. So these are the points for like the 11th goal. Then 12, responsible consumption and production. Here we can talk about the responsible tourism, the critical issues we can discuss here about the responsible tourism. You can connect the responsible tourism with the corporate social responsibility as well. Then we can talk about the rural tourism in Asia, responsible rural tourism in Asia, or in the globe you can do this. Ethics and responsible tourism. See now, मैं जब भी मैं वर्क करती हूँ तो मैं सबसे पहले SDCs उठाती हूँ कि which is the untouched or untapped area on which I need to work now. Then climate action, if you talk about 13 point, climate action, then tourism, climate change and sustainability, because we all are aware about these. I'm not talking about any new thing. We all are aware about global warming, the disasters we have faced in this Kedarnath. This is all because of the climate change. Then climate change and tourism, tourism and climate change, risk and opportunities, something like that. Then life below the water, again, you can talk about the sun and sea tourism. You can talk about cruise tourism. You can talk about the managing the coastal areas, or the resorts nearby the coastal areas, how to manage this, because every time we are talking about ecotourism and the environmental friendly things. So there are lots of resorts which are nearby the coastal areas. So what we are doing exactly for these resorts, what type of strategies we are adopting,
So this can be done. Then life on land, of course, it is more about wildlife tourism. You can talk about your wildlife tourism, animals and tourism. What is the relationship and that understanding between animals and tourism? So this sort of thing, or wildlife and ethics again, because we have noticed this thing, and we have read the news at times that wildlife is disturbing because of the human interference. So yes, ethics is again an area on which we can work. In fact, on the 16 point, peace, justice, and strong institutions. Will you believe, like, I'm really very much keen again to work on this topic, like tourism law, because we are lacking in the books of tourism law. It is not just I just want to copy cut paste some law and policies. I really want to do a work that why the tourism law is not being implemented in a proper way, especially in India, first thing. Secondly, what other countries are doing actually to implement the tourist law, and what the hell of a tourist police is doing. Because I don't know about all the states, but in Rajasthan, before this corona, every third day we read the news that there is some rape case, or there is an accident, or there is some theft. So there are lots, and there are lapkas. So this is actually damaging the image of the country, and that's why I think yes, it is again a very much important topic to talk about the tourism law. Then peace through tourism, we can talk about this, and tourism progress and peace, we can discuss this as well. And then partnership, the 17th and the last goal, that is partnership for the goals, where we can talk about the combination of all the 16 goals, that how we can restore that tourism destination in the crisis. This is, I think, if we will take even one or two lines from every goal, then we will be able to implement the 17th one, because it's all about a blend of all the 16 goals. So if you are honestly confused, and if you think that I have no direction from where to start my work, what will be the right topic for the research, any form of research, a paper, research paper, or whatever it is, because here we are talking about marketing, management, branding, all are very good. But if you are a beginner, please start from some innovation, some newness, and some uniqueness is always required. So if I'll talk here, because sir is from hospitality area, Ashish sir, and if I'll talk about that, I got published one of my paper, and he is aware about it. I got one of my paper on which I just talked about the traditional Rajasthani cooking style on the chula, mud stove, which we can in layman language, the chula, mitti ka chula. On that, I have got published a case study, and the vegetables like care sangri, on they have appreciated it. I have got a paper publication on on Ram Leela from Queensland University, Australia. That was on just on a Ram Leela. I have visited. I was just visiting a few places for tourism, and I just like that visited that village in between, and there was a Ram Leela was going on. I've captured a few pictures, and I had word with the full few persons, the villagers, and they told me about the importance. I have drafted the entire chapter along with the review of literature and everything, and I have sent it for the publication, and it has been published under knowledge and covered by media like anything, print media as well as the electronic media. And will you believe, after that, the villagers, they have invited me specially for a program to respect me as an honor, as a token of honor. But because of my time schedules, I was not able to visit that time. Six jeep, they all villagers visited me to the university campus just to say a thanks to me. So that day I felt that I'm doing really something good. At least I have worked for the community. At least I've tried to promote my culture. So this is what exactly we need. We just need not to go with the flow, because going with the flow is always not good. This is my personal experience. A few suggestions which I would like to give you before ending my talk, because I need to show you a video, also a small video, just to make the environment a little light. First of all, to select the right, the first and the foremost thing, please select the right book series, or the right journal, because it is very much important. What we people are doing now, we are just running towards the journals which are like from tourism.
everyone wants to get a paper published in some top journals which are related with tourism or hospitality. But it is my opinion that rather than only going for these journals, it's better if we will talk about, if we will go with the paper on agriculture tourism in a journal which is related with agriculture, because it will vast the area, it will vast your network as well, because in tourism fraternity already people, they must be aware about you, that you are in this academia and you're working in this fraternity. But in agriculture no one knows you, right? So once if you will give a book proposal, or if you will give a research paper in a journal of agriculture on agri-tourism or agro-tourism, so the people from that fraternity also start recognizing you. I have only six Scoopers index papers. I have only six, and I have no research paper so far in any A, B, C, D journal. But I'm working with not only with the tourism fraternity. I'm not working with only with the persons or the faculties who are in tourism field. I'm working with the people who are in agriculture line. I'm working with the people who are in economics department. I'm working with the persons who are actually talking about the gender sensitization issues. I'm even working with some NGOs as well. So because only publishing a paper or publishing is a book is not at all my cup of tea. It is something where I want that I should be recognized as a true researcher, not only because my publications are so, I have a long list of publications. It is when you are giving something true sense to the society, to the community, people automatically start recognizing you. At times, honestly, I'm telling you, when I accept the papers from some youngsters, like from scholars, or from the people who are not very, or not on that top-notch positions in tourism academy, especially in India, abroad वालों को कुछ नहीं कहता, but India से आप ले लोगे, तो literally I got the mails, I got the phone calls that why you have accepted his or a paper. This sort of things also I have faced, because here sir has given me a topic about the challenges also. So this is the biggest challenge, where you are saying ki, because it is my call to whom I'm giving an opportunity. And that's why if you have ever gone through with my books from India, I always give the opportunity to the youngsters, to the persons who are working now in this area. I've never run behind the top notch academicians, because being an academician, at least I have to create a platform for the youngsters. This is my personal opinion, and I never listen to anyone for this. Although I have got, in fact, one of the time, I don't want to hide the things here. I will not disclose the name, but I got an email literally that refused, reject. I have been appointed as a book reviewer by Emerald, and I got an email that reject the book proposal, because that book proposal from an Indian author, and that person is a very new person in this academia. But I send a acceptance, and of course, why should I reject the paper, and that too when it is from India? So I just don't know why we have that sick mental level still we have, and I'm actually facing it, to be honest. So please, selection of the journal and the book series and the book should be very, very proper way. Investment in the digitalization is a must, whether it is social media or whatever, but it is a must now. You cannot survive without this. Be innovative and unique with your theoretical, empirical research, and you have to be in constant communication with the researchers, as well as if there is a book series editor or the book editor or the journal editor or the commissioning editor, be with in constant communication with them. Create your own network if you really want to work in edited book area, especially. Please create your own network and spread yourself on the global level for more contribution for your book. Then go with a broader topic and or a title, because whenever I have worked, although I have 5 books on Asia, but here I want to discuss with you all. I want to tell you that whenever I have worked on, or only I have concentrated on Asia, I always face the problem of chapters, because the area is limited. So try to go on a broader area rather than just limit yourself to a particular country or to a particular reason. Then selection of the right team member is also very, very much important. At times अब भावुकता में किसी को भी team member दे देते हैं, वो बहुत risky हो जाता है on the later stage. So be very practical in selection of your team, please. This is very much important. You cannot work.
And believe me, if your team is set once, it will take you long. It will take you long. So please select the team member in a very well way with full consciousness. Never select a favorable reviewer. I have already highlighted in red. Never select a favorable reviewer. It is my experience, because in every book proposal, they always ask, name 3 reviewers. And whenever I give the name of those 3 reviewers, they never send them the proposal to review. So don't select a favorable reviewer. Never, don't mention it at all that you think that he or she is a favorable person, so you are writing their name as a reviewer. So publication houses, they play always smart, and they probably not going to send, because I have 13 books already published, and I always ask the reviewer that have you got my book proposal, and there is always a no from their end. They have never sent, not even a single publication house sent the proposal for review to the reviewers. And one more thing, because wherever you submit, of course, if I'm doing something, I always be very positive about my own work. But when reviewers give you, they have some strong comments also at times. You know, they have some comments which you cannot even accept. But please believe me, these are for the improvement. These are really for the improvement. And the commissioning editors, they initially help you out to revise the proposal before sending even it to the reviewer. And even after that, in times, you know, CAB International, they have sent my book proposal to 3 reviewers. One reviewer was like neutral. The second one was almost neutral. The third was absolutely rejected my proposal. But the commissioning editor, they accepted it, and they said it's okay, but according to these 2 reviewers, the proposal is good and we are going to float it. So, you know, at times, if the commissioning editors, they themselves, you give you the suggestions and you will implement those suggestions, they will never stop your book. In fact, they put their point in front of the board meetings, because this is again on my experiences behalf I'm saying this. And improve and modify the proposal on the suggestion of the commissioning editor. That is what I'm explaining you. That never ignore the reviewer and never ignore the commissioning editor if you really want to come up with a very good publication theme. And before ending, I have already one more almost last slide, that is on the how to make fill a book proposal form. But rather than discussing this, I would like to show you a video here, a small video. I think it will work. Let me try this, if it will work at all. Yeah, I think it will work. Doxa, while sharing the screen, you'll have to press the speech button in that. Otherwise, audio will not come. Oh, is We it are not only coming? yeah. So you'll have to unshare and then share the screen again. Okay. And Okay, while sir. sharing, on the top icon, you'll find a speaker button. When you'll click it, then and then audio will come. Okay, okay, sir. Let me do this. I'm stopping it once. And I'll be going to share again. So it is start video. Is it now audible, sir? Is it now audible, sir? No, Doxa, see, Not. when you will click the share button, Yeah. then before you select the Google Chrome or the thing which you are sharing, on the top right hand side, you will find automatically optimize, and then there is a speaker button. So when you click Okay. that, Give me 2 minutes. then audio will come. Yeah. Okay, okay, sir. Yeah, there is the speaker and microphone Yes. settings. If I So will be once talking once about. you switch it on, then and then audio will come.
Yes, sir. I'm trying. I think I have already switched it on. It's not working, but No, no. I'm trying First you it have to again, switch sir. it. First you have to switch it on. Then you have to click the icon which you want to share, and then you share it. Okay. First switch on the audio. Okay. Wait just a Then minute, sir. click. Okay, I've Then switched click. on it now. Now click the icon which you want to share. Is it your screen or Chrome or whatever? Once you select it, then you share. Just a minute, sir. I'm trying. Yeah, yeah. I think it is not working now. No, your screen is not visible now. No, Earlier the it's not screen was working. visible. Is it audible now, sir? तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनो? रफ्तार, पागलपन। Is it audible now, sir? Yes, it is. It is. मैं उड़ना चाहता हूँ ना, I'm दौड़ना feeling it from beginning. असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। जबरदस्त जिंदाबाद। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनो? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। गलती पर टोकना बहुत आसान है मिस्टर जॉर्ज, और गलती करने की हिम्मत रखना बहुत मुश्किल। खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं आता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता, तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स, लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। आज कुछ नहीं बचा, पर खुश हूं, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, फर्क तभी आता है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। जिंदगी तो हर रोज जान लेती, फॉर्म तो सिर्फ एक बार लेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। अगर हम सच के साथ हैं। So it's a small video which I wanted to. Am I audible now to everyone? Yes, it has been indeed an amazing session followed by a fantastic video. I must Thank you, sir. compliment. Thank you so much, sir. Actually, I have just prepared this video exclusively for this session. In fact, because I can relate each and every dialogue with the research. This is what exactly the researchers are facing. And this is exactly which the researchers need to follow now, because, it is very much important for us now to follow. Even if we're only going to listen this video now, it will make a drastic change in my mind at times, because it is very true, sir. When we don't have this fear in our mind that what we are going to lose,
we will definitely try to put our best in that way. Second thing, if we think that, like she said, the Nimrit Kaur dialogue, कि गलती पे टोकना बहुत इजी है, बट गलती करने के लिए एक हिम्मत दिखाना बहुत जरूरी है. तो एट टाइम्स होता क्या है, जब आपका बैक टू बैक फेलियर जाता है, तो ये हो जाता है कि नाउ अब नहीं करना आगे, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग नो वेयर. बट इट इज नॉट ट्रू सर, क्योंकि फिर इमरान हाशमी का मुझे डायलॉग याद आ जाता है कि पलट के सिक्का जो ऊपर आता है जीतता वही है. So, and things always goes in both ways. So I think this is something in the end of my session I want to tell every faculty member who are attending this session, that please don't say this, that because one thing or second thing is rejected or back to back the rejections are coming, so we cannot do wonders in the academia, in the research fraternity. So this is the last message from my side, sir. And with saying all these things, I just want to close. I think my session is over. It's already 3:30. I don't want to take much of your time. Although there was one more slide which I really wanted to discuss with the scholars, that was on how to make a edited book proposal form. But some other time I will discuss it with everyone. So thank you everyone for your patience listening. I hope I have given some good inputs to everyone, and I have justified the timing and the session and the opportunity which is given by sir to me. And I wish all the luck to everyone, and feel free to contact me if you need any sort of help and support from my side. Thank you so very much for having me. It's an absolute honor. Well, that has been a fantabulous session, and I must compliment Dr. Nukriti for taking you Thank you, across sir. the beautiful journey of research, that how, as a researcher, you should think about. The round of applauses makes it quite evident that how the participants hailing from 24 different Yeah. states of India have enjoyed and have been greatly enthused by your session. Thank I'm you, sir. sure that they would certainly look forward for exploring wonderful research opportunities in times to come, Sure, and sir. would come up with some very interesting publications. And the way you made me feel elated today by expressing gratitude would be sharing on some platform that we attended a session of Dr. Anukriti ma'am, and we got inspired out of it, and then we submitted a proposal and we came up with something fantabulous. And It will Ajay be is a pleasure, confessing sir. also, Anant ji is also giving a silent nod that yes, we agree to what Professor Ashish is saying. And believe me, the points which you have taken up have indeed helped these budding researchers to take these forward. And I'm sure that the faculty members who are involved in this program, they will rope into action base after this session, and would certainly share the details with their learners and students also. So with Sure, this, sir. we come to a formal conclusion of this session at day 4 of AICTE ATAL Faculty Development Program. For all participants, there is an announcement that tomorrow, 9 o'clock to 10 o'clock, there is a value added session, and that is a compulsory session, and your quiz will be conducted at the same time only. So tomorrow we will have a value added session from 9 to 10, followed by the session series from 10 onwards. So we look forward for meeting you all by sharp 8:55 tomorrow morning. And we'll be having a senior IS officer coming tomorrow for a value added session, who has been of rank of Chief Secretary to Haryana, and would be taking up different aspects of life skills for blissful life. And I'm sure that you would be really happy to listen to him, and then go ahead with the final day of life skills for blissful life aspect. And let me share that apart from your assessment, he would be talking about element of human touch in everything that we do, and working with emotional intelligence. Why I'm revealing and unveiling these topics now is that you could have easily understood that how Dr. Anukriti made use of her emotional intelligence, and a point which touched upon her, that what is to your credit, what publications do you have, and she added a value to her persona that people across the globe know her as a wonderful researcher. So I'm sharing my Thank you, sir. screen for a while, just for a brief, to take you that tomorrow you are going to meet a fantastic persona, Shri Krishna Mohan ji, a very senior IS officer,
and you would be. He has been a senior IS officer of Haryana cadre from 1977 batch, and has worked with various departments like rural, urban, infrastructure, housing, tourism, revenue, disaster, industry, commerce, tax, health, law, justice, social welfare, education, project, public distribution, agriculture, forest, you name a department, and he has been of that. And he is a national facilitator and trainer on ethics. And he is a national level recognized trainer on e-governance. So he is the former additional chief secretary and financial commissioner revenue government of Haryana, and he's from at Chandigarh. On our request, he has kindly consented to be there with us tomorrow for this value added session. So डॉक्टर अनुकृति ने बहुत खूबसूरत से उसके साथ एक वीडियो भी दिखाई और ये कहा कि हम हर मैदान फतेह कर सकते हैं बशर्ते लगे रहो। Yes, sir. तो उसके लिए दोस्तों आपके जैसा आशीष भी चाहिए सर। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, फटाफट कैमरा ऑन कीजिए और मैं स्क्रीन को जो है वो ग्रिड फॉर्म में डाल देता हूँ। डॉक्टर अनुकृति के साथ आज अच्छे अच्छे फोटोज बनते हैं जो आप अपने साथ अच्छे मेमोरीज जो है वो ले जा सकते हैं। और देखिए फटाफट कितने कैमरास जो है हो गए और एक क्लिक मैंने किया और ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया। इसी तरह से कुछ और फोटोज जो हैं वो मैं आपके अभी लेता हूं और शेयर करता Thank हूं you, आपके everyone. ग्रुप्स पर। एक और सुंदर सी तस्वीर, सुपर्ब। सो आई एम जस्ट पोस्टिंग इनटू योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड हियर इट इज। और एक और प्यारी सी तस्वीर, lovely, lovely seeing so many faces. Seriously. Wonderful, I was wonderful. really not aware that so many people are listening to me. Oh my God. Now I just come to know about this. So you see that as teachers you have a great power and you are powerful stars, right? So we are happy to see Dr. Meenakshi, Anup Patwal ji, Anant Verma ji, Dr. Lakhvinder ji, Dr. Kumar Satyam, Dr. Vijay ji, Ajay, Ratna Raju ji, Ajay, Alisha Chaudhary ji, Anita ji, Amit Atri ji, Amar Jadhav ji, Amandeep ji, all of you live and being such a wonderful audience. ईमानदारी की बात है, ये तो एआईसीटी ने 5 दिन का प्रोग्राम कर रखा है, लेकिन ऑडियंस के साथ तो लगता है ये 5 हफ्ते का होना चाहिए, right? But believe me friends, we thoroughly enjoyed with you, and thanks to AICTE for sanctioning AICTE ATAL Faculty Development Program to the Center for Life Skills and Soft Skills at MD University Rohtak. And do take care of yourselves, stay safe, healthy and happy. Thank you to Dr. Anukriti for joining us and embracing our request. Thank you so much. We look for having forward me. for Thank meeting you. you all tomorrow at 9 a.m. sharp. Till then, take care. Ram Ram from Rohtak, Haryana. Namaskar. Okay, bye bye, sir. Hare Krishna.